Good morning, everyone. There's one question probably regarding linked list. I'll quickly take up the question. Question, who is this? Akshay. Yeah. So the question talking about something like there was one question regarding predicate and कहाँ पर गया? Yeah. So count the number of integers matching the given predicate. I believe it is not very complicated if you at all worked onto the link. What's that? Basically the functional concept. So if you at all worked on a functional concept, then all you need is that. Obviously, I'm talking about within a class of single linked list, whatever that you have implemented earlier into the class. I'm not writing all the methods. You please go ahead, you complete that stuff, and what you need is actually the count. What is that? The count matching something, whatever, or count if kind of function that you're looking for, and you're passing a predicate. The predicate of obviously integer, because the value is like kind of it is a predicate of integer because it is a linked list of integers. So this is a linked list of integer. I want to match with all integers, and this is kind of a predicate that we have got. If this is a predicate that we have got, what all we need to do is that we need to basically traverse the linked list. And how do we traverse the linked list? Trav is equal to head, while trav is not equal to null, trav is equal to trav dot next. ये हमको already आता है. I'm assuming this. However, now I'm interested in counting the number of elements for the given condition. If you go back and check that, the predicate is a functional interface, and for the functional interface, the what is that? The method name is kind of a test. The test method, you are passing each data element of your linked list. You're passing each data element of your linked list, and each data element, if it is matching, if the test method is returning true, I'm simply saying count plus plus. I'm simply saying count plus plus, and all I need to do is that I need to simply return the count. That's it. Nothing extra is to be done. So that is what about writing the method, and then how you can probably use it somewhere into your main class, somewhere into your main method. Obviously, you have written somewhere. So public static void main, and obviously it's like a string args, whatever is there, and inside this again you write the rest of the code. I'm not writing the whole stuff for you. So you want to call it, let's say for example, list dot, I want to check, let's say count matching, and count matching, let's say I want to count for every integer, the integer which is, let's say, mod by 2 is equal to 0. Now what this will return me? Now can you guess what this will return me? You go ahead, write system.println. Anyone can guess what this will return me? Yes, it will return all those numbers. How many numbers are even numbers? It is a count of even numbers. So count of even numbers, I'm saying that this particular lambda expression, which is matching a predicate. Lambda expression predicate में वाला कौन सा होता है? Which is taking some number and returning a boolean value. Taking a number and it is returning a boolean value. So this one I will take up it over here, and then we will go ahead with this. Correct? So this condition will be actually invoked from here all the time, and then whatever condition is there, it will be actually matching. I hope Akshay, you got the answer to your question. What we can do and how we can do. Good. Okay. Next. Sure. There is one more probably request, and that request is regarding ये public chat disabled है क्या? Why people are posting me the question personally? हाँ, नहीं, people are putting me question personally. Problem क्या हो जाता है? वो जो बाकी लोग जो join होते हैं, so उनको लगता है कि नीलेश सर को बहुत पढ़ाने का शौक है, इसलिए पढ़ाते रहते हैं. They are scared. What to scare into that? उसमें scare होने वाली क्या बात है?
और अच्छी चीज है कि हम लोग ऑनलाइन डिस्टेंस के ऊपर है, तो अगर मैं चाहूँ कि आपको खा जाऊं तो वो भी नहीं खा सकता हूँ, नॉट पॉसिबल, इजंट इट? सो वी आर एट अ डिस्टेंस, और लाइक ऐसा कुछ है क्या कि लाइक यू डोंट वांट टू शो द पीपल कि आल्सो आई एम आल्सो डूइंग असाइनमेंट, आई एम आल्सो स्टडिंग, ऐसा कुछ कर रहे हो? लाइक बाकी लोगों को पता चल जाएगा मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत अजीब लगेगा उनको, इज इट लाइक दैट? सो डोंट वरी, यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इट पब्लिकली यार, दिस इज योर मोस्ट वेलकम। मैंने कहा ना, अगर मुझको आंसर नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा भाई, सॉरी मेरे को नहीं आ रहा है, मैं कल ढूंढ के बताता हूँ, तो आप चिंता मत करो, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। चलो मैं पीछे जा रहा हूँ, देयर इज वन मोर रिक्वेस्ट, एंड दैट इज रिगार्डिंग कहाँ पर गया रे, भूल गया मैं। It is regarding find the middle point of the linked list. So how do you find the middle of a linked list? Oh, that is something I need to find out. I'll just go ahead. And so there are two conditions are written, and there are two conditions written, and then people are asking, ha Pranit, so why there are two conditions written? So it is something like this. We say, let us just try it, and I'll just show you both the conditions, कि why two conditions are there and why ये दो अलग अलग क्यों कंसिडर करना पड़ता है. So let's say at this like a 10, say 20, 30, 40, 50, 60, 70. Now you find that these are kind of a these are kind of a odd number of elements in a list. And let me continue the same linked list once again, and with one more element in place, where I'm saying that we have got like a 80, where even number of elements are in place. Now you try to solve both of them. So one is fast pointer, another is slow pointer. What is the fast pointer and the slow pointer? And what you are saying is that जब fast pointer at the end पहुंच जाएगा तो slow pointer in between पहुंच जाएगा. I guess basic logic is clear to everyone. So fast pointer, we are saying that it is next to next. In that iteration, this is going one step ahead. This is going next to next, but in this particular step, this is going one step ahead. Again on the next iteration, this is going next to next, and this is going one step ahead. What is this? Now you find that if this reaches the last element, so यहाँ पर next to next, next to next, next to next. So every time you are saying fast is equal to fast dot next to next. So there is, every time you say fast is equal to fast dot next to next, I guess what is that? You are able to reach till the last node. Now it is over last node. Then it simply means that in this particular case, you find that the fast dot in this case, fast dot next is equal to null, right? But the second case, जहां पर even number of nodes है, जहां पर even number of nodes है, you can again compare, right? And then you continue further, go like a next to next, right? And then first iteration, it is going like this. Second iteration, this is going next to next, and this is going like this. Next iteration is going next to next. This is going somewhere over here. If you check it over there, in this particular case, if I say next to next, now it is actually reaching to the null. It is actually reaching to the null. So what we are checking over there is simply, what we are checking over here is simply fast is equal to null. So when you have got even number of nodes where you have got an odd number of nodes, so there are two cases I need to consider, and that is the reason these two things are available. Who is that? Pranit, I hope you got the point. Why two conditions are there? Two conditions are there because two conditions are there because we want to ensure that two are there. हाँ क्या हुआ अक्षय? In second case the output is 50 because last iteration slow points to the next. हाँ yes, that is fine. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. See कोई ना कोई तो ये मैं मूव करना भूल गया. Thank you. हाँ see anyway उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला because ultimately आपको मिडल ढूंढना है, या तो इस साइड का मिडल या तो उस साइड का मिडल, कोई ना कोई तो एक मिडल होने ही वाला है, सवाल ही पैदा नहीं होता. That is, I hope, absolutely right. So why there are two conditions are there? There are two conditions
because this. Akshay is having question, why it is and not or. See, and हम लोग कब यूज करते हैं, जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यू वांट टू कम आउट. एंड हम तब यूज करते हैं जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यू वांट टू कम आउट. सो आई एम सेइंग दैट इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, स्टिल आई वांट टू कम आउट. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, स्टिल आई वांट टू कम आउट. इजंट इट? एंड सिंस दोनों कंडीशंस आर फॉल्स, अगर कोई दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है तो आई वांट टू कम आउट. अगर आप लोग और देते हो तो और कैन बी डेंजरस. इन दैट केस कहीं ना कहीं आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकता है. सो और का मतलब होता है लाइक दिस. लेकिन मैं चेक, लेकिन मेरे से वैसे मैंने क्या लिखा है मेरे को भी एक बार देखने दो, क्योंकि आप लोगों ने इक्वल टू लिखा है या नॉट इक्वल टू लिखा है. इवन नाउ सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन, इवन आई फाउंड दैट मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है. लेट मी चेक, कोई बात नहीं, विल फाइंड आउट. यस, इट विल गिव यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन समवेयर. कंडीशन क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने इक्वल टू लिखा है. बाय द वे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है. मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, नॉट इक्वल टू लिखा है. सो इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल and this is not equal to null, in that particular case you just want to come out. आपको अगर करना है, आप लोग उल्टा कर सकते हो. उल्टा क्या कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो फर्स्ट इज इक्वल टू null और fast dot next is equal to null. What I'm saying is that the same condition could be written something like this. और आप लोग लिख सकते हो, but in that particular case, you can say that either this is equal to null or its next is equal to null. आई होप अक्षय दैट इज क्लियर नाउ. तो वो लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप लोगों ने कंडीशन क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें एंड के लिए जाना है या अपने और के लिए जाना है. हमने नॉट इक्वल टू लिखा है या फिर हम लोगों ने इक्वल टू लिखा है. एनीवे, चलो दैट इज डन. सो दिस इज ऑल्सो ऑल राइट. फिलहाल के लिए मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है, तो जो लिखा है मैं उसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ. एनीवे, द प्रेडिकेट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आई एक्चुअली आंसर्ड दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर क्वेश्चन. Yes, we will do. So there was some question regarding Sarang, can you be specific to your question? Yesterday we talked about two reverse functions. It was not one. We talked about two. हाँ, रिवर्स वी लर्न टू टाइम्स. देर आर एक्चुअली थ्री रिवर्स फंक्शन थे. एक हम लोगों ने नॉर्मल रिवर्स किया था, एक हम लोग रिकर्शन से रिवर्स किया था, एक हम लोग रिवर्स डिस्प्ले किया था. सो ऐसे टोटल तीन फंक्शंस हमारे लिस्ट में थे कल, इफ यू कुड रिकॉल दैट. या रिकर्शन वाला, हाँ. सो बी स्पेसिफिक, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम. हम लोग कहाँ पर थे? सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. All right. So in this particular question, like a reverse using recursion, the reverse using recursion, I said that you need to follow the logic. You need to follow the logic where, see, there was actually two steps that I was trying to explain you. One step, I first explain you how you can build your logic, how you can build your logic. And step number two, probably I try to explain you how this logic works. Correct? So I'm just going back and talking about it once again. So if my linked list is beginning from this, so the logic, recursive logic in the sense divide and conquer logic. What divide and conquer logic says? The divide and conquer logic simply says that you try to put it in such a way, so that you can explain the process in terms of itself. Explaining process in terms of itself is pretty simple in this case. What I'm saying is that you can, अगर मुझको ये linked list reverse करनी है, I'm saying that first reverse the rest of the linked list, and then try to add this node at the end. So as you reverse this linked list, the output will be something like this, like a 40, 30, 20, and then this particular node, obviously in this particular case, this node
is a last node. So this node should be added at the end over here. At the end over here, that is something that you can do it, nothing much, right? You continued further, you continue further. The next, but sir, what about how this much of part will be, ये part कैसे होगा? अच्छा, ये part कैसे होगा? So I was trying to tell you that you consider internal recursion will go something like this. For 20, 30 and 40, the linked list is like this. Obviously this is h, this is the head of this. And now again follow the same procedure, that you reverse the rest of the list and then append this at the end of the last node. Okay, you are saying that reverse of this, तो इसका reverse कैसे होगा? इसका reverse simply हो जाएगा 40 and 30. इसका reverse होगा 40 and 30, and then this 20 is something I want to add at the end. I want to add at the end, which is obviously after the tail pointer. Tail pointer, अभी ऐसा कोई tail pointer हम लोगों ने maintain नहीं किया है. It is kind of a local variable that we are used. But again, the question is that how this much of part will be reverse? How this much of part will be reverse? So 30, 40, that is in front of you. You go ahead, you put this as, let's say, this is head node. In this particular case, ये आपका head node है, ये आपका head node है. How do you really do this? Again, recursive logic still remains same. The recursive logic says that go ahead, deal with the rest of the linked list, and then add this at the end. But as you start dealing with the rest of the linked list, as you start dealing with the rest of the linked list, अब आपका linked list जो है वो linked list है इतना सा, एक ही नोड है. Now since linked list एक ही नोड है, there is a single node, so I'm saying that this itself will be kind of my tail pointer. यही मेरा tail pointer होगा, और यही this node itself is kind of will be head. हेड, तो जब लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड मतलब क्या, जिसका नेक्स्ट नल होता है, सो अगर वो वाला नोड होगा तो उसको मैं ग्लोबल हेड करके ट्रीट करूंगा, नंबर वन. और यही मेरा लास्ट नोड होगा विच आई एम रिटर्निंग. इफ आई एम रिटर्निंग दैट, इफ आई एम रिटर्निंग दैट, उसके एंड में ये 30 को ऐड करना है, दैट्स इट. सो व्हाट विल हैपन, what will happen? So every time I'm just putting a very simple logic कि हमको logic divide कैसे करना है. So it is something over here. You first try to do in a reverse order. You try to reverse the rest of the linked list. You reverse the rest of the linked list. Continued further. T dot next is equal to h. T dot next is equal to h. So वो recursive reverse मुझको क्या return कर रहा है? It is returning with the last node. और जो भी last node आपको return कर रहा है, you see in any step what you are doing, जो भी लास्ट नोड आपको रिटर्न कर रहा है, उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम लोग जो करंट हेड है उसको हम लोग कर रहे थे. सो उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड. बट हेड के नेक्स्ट में अभी क्या है, यू सी दैट हेड के नेक्स्ट में अभी अगले नोड का एड्रेस है. आई डू नॉट वांट टू डू दैट, क्योंकि वैसे भी वो लिंक लिस्ट हमारा लास्ट नोड बनने वाला है. अगर वो हमारा लास्ट नोड बनने वाला है और वैसे भी ये सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में तो नल होना चाहिए. And that is the reason the next line of code saying that it is head dot next is equal to null. And then now since you added that node at the end, now that node becomes the last node which you want to return it, which you want to return it, so that that part can be used in a previous call. That part can be used in a previous call, क्योंकि जो कुछ भी आप लोग यहाँ से रिटर्न करने वाले हो, that will be collected in a previous part over here, and then t dot next is equal to h. It should work like this, correct? And the base condition, as the paperwork we had done, we found that जब नोड अकेला होता है तो उसको रिवर्स नहीं किया जाता. अकेला मतलब क्या, उसके नेक्स्ट में अगर नल होता है तो उसको रिवर्स करने का कोई मतलब नहीं है. एंड देन आई वाज सेइंग दैट अगर वो अकेला नोड है, वो अगर अकेला नोड है, just go ahead, simply say head is equal to h, and then simply say return h. I hope this is how the whole code was built as such. And not only this code was built like this, but again, the next question on the top of it, the next question on the top of it, how it is getting executed. So I was trying to tell you that इसको हम लोगों ने recursively call दिया है from a wrapper function. You must have seen that हमने एक wrapper function लिखा था, और उस wrapper function के ऊपर से हम लोगों ने इसको call दिया था. The wrapper function recursive reverse whatever the function was there, और बाद में उस function के अंदर से we have given a call with the head. As we have given a call with the head, so you have seen that recursive reverse, and then we are passing the address of the first node. We are passing the address of the first node.
which is the head itself. कोड शायद आपके सामने है, कहाँ पर था? I'm talking about this part. Yeah. So this reverse display, no, not reverse display, this recursive reverse is basically making call to the recursive reverse of head. I'm talking about this. So you will be actually calling this. You'll be calling this. You check that. कहाँ पर था हमें? हाँ, now you check that. Now your h is basically pointing to this. As h is pointing to this, you check inside your code, is h dot next is equal to null? Sorry, h dot next is not equal to null. This is not the last node. This is not the last node. You are making a recursive call. You are making a recursive call for the h dot next. Obviously, h dot next, you see it over here. It is basically 20. It is basically 20. So ultimately, your linked list something like this. Let me write it over here once again. 10, 20, 30, 40, and h, which was over here, you are making a now recursive call, making a recursive call. So you are going from here to here and making call to the recursive reverse and making this as a 20. Okay, that is good. That is good. But जब आप लोग recursive call करोगे तो आपका जो h है, जो अगले कॉल का जो h है, next call h will be somewhere over here. Next call is h is over here, and again you check the story. Is it really the last node? Oh no, that is not also the last node. If that is not also the last node, what do you need to do? You again continue further and again you make a recursive call. Again you make a recursive call. अब recursive call किसके लिए होगा? 20 के next के लिए होगा. ये 20 के next का call is nothing but 30 है. ये 30 है. So in that particular call, what will happen? The h, उसका जो local h है, that h will point to this. हम लोग रिकर्शन पढ़ा है. लोकल वेरिएबल्स आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑनटू द स्टैक और आर्गुमेंट्स आर आल्सो क्रिएटेड ऑनटू द स्टैक. सो हर एक फंक्शन कॉल का खुद का एच होने वाला है, हर एक फंक्शन कॉल का खुद का टी होने वाला है. ये हमको ऑलरेडी पता है. उतना रिकर्शन मैंने आपको पढ़ाया, फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाया. सो इवन दो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, हम लोगों ने बाइनरी रिसर्च से पहले मैंने आपको पूरा रिकर्शन पढ़ाया था. आपको याद है ना? हेलो, हमने पूरा फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग प्रोबब्ली वी हैड ड्रॉन एंड एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि रिकर्शन कैसे काम करता है, कि कितने फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न. सो वेदर यू पीपल नो और नॉट, तो मैंने वापस से एक बार पढ़ाया था. रीजन वाज दैट कि जब हम लोग ऐसे ट्रिकी कोड लिखेंगे, पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज. दैट वाज द पर्पस. अगेन यू कंटिन्यू फर्दर. again you continue further. Again we have like a recursive reverse. ये क्योंकि 30 का नेक्स्ट, ये 30 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, इसका नेक्स्ट भी नल नहीं है क्योंकि वो भी लास्ट नोड नहीं है. सो व्हाट विल हैपन? अगेन यू आर मेकिंग द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल. द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल, ए नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल. तो ऑब्वियसली वो 40, 30 के नेक्स्ट में 40 है, तो दैट वो जो रिकर्सिव कॉल है उसका एच इसको पॉइंट कर रहा है. सो आई एम सेइंग दैट दिस एच इज नाउ पॉइंटिंग. अल्टीमेटली वी रीच टू अ प्लेस जहां पर ये कंडीशन ट्रू होने वाली है. नाउ दिस वाला कंडीशन इज ट्रू, दिस वाला कंडीशन इज ट्रू. सो यू आर सेइंग दैट इसको अभी हेड कर दो, कोई बात नहीं. तो हम लोगों ने इसको हेड कर दिया. ये वैसे भी लास्ट नोड शुड बिकम नाउ हेड एंड देन यू वांट टू रिटर्न एच. सो ये जो एच है, हाई लुक एट दिस, यहां से जो आप लोगों ने रिटर्न किया है, ये रिटर्न कहां पर जाने वाला है? ये रिटर्न अल्टीमेटली उसके प्रीवियस कॉल में जाने वाला है. डोंट फॉरगेट दैट. अल्टीमेटली उसके प्रीवियस कॉल में जाने वाला है. तो उसका प्रीवियस कॉल क्या है? गो एंड चेक. इसका प्रीवियस कॉल है, इसका प्रीवियस कॉल है 30 वाला कॉल. ओ यस, इसका प्रीवियस कॉल है. हम लोग यहां से यहां पर आए थे, यहां से यहां पर आए थे. अब नाउ आई एम गोइंग रिवर्स, यहां से यहां पर जा रहा है. तो जो प्रीवियस कॉल है, जो प्रीवियस कॉल है, इन दैट केस दिस विल बी टी. अब वहां पर जो कलेक्ट किया है, वहां पर आपने उसको टी करके कलेक्ट किया है. सो डोंट फॉरगेट. सो नाउ दिस इज बिकमिंग अ टी. This is becoming a T for the earlier call where the H itself is 30. H itself is a 30. You can take a look at this diagram. So this was T and this is H. And then now what you are doing, you are following next three lines of code, which is saying that T dot next is equal to head. T dot next is equal to head. So इसके नेक्स्ट में you are adding head. Okay, done. And then h dot next, h is 30, you are making it null. That is all right. So now it is no more pointing to this. And now again you are saying that return h. And now where you are returning h, where you are returning h, I'm returning it
ये जो h यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये जो h यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये कहाँ पर रिटर्न हो रहा है? प्लीज नोट दैट it is again getting returned to the previous call. And what is the previous call over there? The previous call over there, you find it, it is a 20s call. In 20s call, your h is pointing to 20, and ये जो लास्ट नोड था, जो पहले वाला जो h था, जो रिटर्न हुआ है, so that you are taken like a t. So again, I'm talking about a scenario. Now we are at this scenario. This is h and this is t. Now what is to be done? Now what is to be done? Again, follow the practice. We t dot next is equal to h. So t dot next is equal to h. So ये जो t है, उसका next है, उसके अंदर में h आना चाहिए. ये आ गया है. What is next? You continue further. H dot next is equal to null. So h dot next is equal to null. That is also gone well. And then return h. Return h. Again, this is the last node which I am returning. And if I am returning that, again, where it will be taken up? It will be taken in an earlier call. Oh, it is taken in an earlier call. You continued further. So earlier call means you are going from here to here. So ये वाला function teacher record destroy होगा. And in that earlier call, the h is over here, and that the old h is collected as a t. It is collected as a t. You again continue further, and again you repeat the part of that process. Next three lines. T dot next is equal to h. T dot next is equal to h. I see that. Now this is no more pointing to the next node. H dot next is equal to null. H dot next is equal to null. Okay, it is there. And further, you simply say return h. Return h. Now this h you are again returning back, which will be which we have not really collected into the earlier call. That's it. And now my new linked list is where head is like 40, 40 is next was like 30, 30 is next is pointing to the 20, and 20 is next pointing to the 10. That's it. I hope, Sarang, this is fine. Good. Wait, to be frank, for this purpose, you could have always watched the video once again. Anyway, you have any other questions? Let me know. I'm just saying so because we may not, waste time of like learning the core points. नहीं तो otherwise ऐसे हो जाता है कि फिर basic points spend too much of time, and then the advanced topics they didn't get enough of time. It usually happens. So ideally, or these questions can be definitely taken again. What is that of this? Like a big questions are there. Repeating the whole stuff, it takes too long time. So I really what is that? क्या कहते हैं इसको? Appreciate if you could ask a pinpointed question. So you are like most welcome. चलो और भी कुछ पूछना है? Go ahead. जरा जल्दी जल्दी पूछो. भाव मत खाओ. Should we get started with today's session? Okay, that is great. Chalo. So today's session, by the way, the last session that we were talking about was nothing but stack, and we were talking about अरे कहाँ पर गया? हाँ, postfix evaluation. Like a postfix evaluation code. So the code has done. It was like very simple. आई एम वेरी श्योर कल 1 बजे के बाद में बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो गए थे लेक्चर में से. तो जो लोग बाद में ड्रॉप आउट हो गए थे फॉर एनी गुड रीजन, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने बाद में वो वीडियो देख के वो कवर कर लिया होगा. सो आई एम होपिंग सो, राइट. वैसे मुझको कभी कभी लगता है कि लोग ऐसे डिसाइड करके आते हैं कि हमारा लेक्चर 9 से 1 होगा, 9 से 1 बजे तक ही हम लोग सुनेंगे जितना सुनना है. अब 1 बज गया, अभी हमारा टाइम हो गया है. नाउ टाटा बाय बाय. अब तुझको जो पढ़ाना है तू पढ़ाते रहे, हम तो जा रहे हैं करके. तो इफ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी, आई एम वेरी श्योर यू आर टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर ट्राइंग टू कवर अप द टॉपिक्स बाय योर ओन वेज. when people always keep asking us, तो सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट यू कैन ऑलवेज क्या कहते हैं उसको, यू कैन ऑलवेज स्किप, करेक्ट. एंड देन when you always skip, you will also get the results in the same way. प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट. सो नाउ पीपल बाद में ये ब्लेम मत करना कि सर वो हम लोगों ने ऑनलाइन बैच किया इसलिए हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ.
सी इट इज नॉट अबाउट आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया, आपने कैसे किया, दैट विल मैटर अ लॉट गाइज, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो वैसे ऑफलाइन बैच में भी सबका प्लेसमेंट नहीं होता है, कुछ लोग वैसे भी छूट ही जाते हैं। अगेन वापस से उन्होंने ऑफलाइन किया था इसलिए वो लोग प्लेस नहीं हो रहे थे, जिन्होंने जैसे किया है वो लोग वैसे भरेंगे। वो हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी वगैरह काइंड ऑफ स्टफ। सो यू पीपल नो दैट। तो वो फाइनली आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू गेट प्लेस और नॉट। इट इज नॉट अबाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट इज ऑल अबाउट हाउ you are studying, it is how you are studying. So it is again like individuals, it is an individual skill. So you will always find that. तो सर हमारा प्लेसमेंट होगा क्या? आई वुड से दैट जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अभी सीरियसली ले रहे हैं, जो लोग अभी शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, जो लोग अभी खुद को पुश कर रहे हैं, आई नो दैट द थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड। 4 घंटे हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो सर बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, बट दैट इज व्हाट व्हाई वी आर हियर, दैट इज व्हाई वी आर हेयर, दैट इज व्हाई वी आर हेयर टू लर्न। अगर हम लोग खुद से पढ़ सकते थे, ट्रस्ट मी, अगर आप लोग कहते नहीं सर मैं काम करता हूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर मैं खुद से पढ़ता हूँ, मुझको आपके साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली यू कैन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। सो आई टेक अ 10 बुक, आई रीड इट बाय माई सेल्फ, स्टार्ट डूइंग इट, आई एम वेरी श्योर only one data structure book that will take more than 6 months, even though you are studious, even though you are studious, and if you are the one who are likely to skip the lectures, I am very sure it will not even complete in 6 years. Why? We are paying for the course, so don't forget that. तो पुश योर सेल्फ, दिस इज ऑलवेज नीडेड, इट इज ऑलवेज नीडेड। ऐसा नहीं होने वाला है कि वो सर वो आसानी से पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा। अब अभी तो आपके 2-3 मॉड्यूल हुए हैं, स्लोली स्लोली कोर्स विल प्रोग्रेस, स्लोली स्लोली मोर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज विल कम अप। सो यू नीड टू मेक योर माइंड सेट कि ये पढ़ने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वेर एवर यू फाइंड दैट नहीं यार ये सर बहुत हेवी जा रहा है, आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, व्हाई यू ज्वाइन दिस कोर्स? अच्छा प्लेसमेंट होना था इसीलिए ज्वाइन करा ना, तो प्लेसमेंट होना है तो आपको पढ़ना नहीं है? Please ask question to yourself, push yourself. You know, your willpower is probably more important than how good your teachers are. So हम लोग कहते हैं नो ब्रह्मदेव भी ऊपर से आके अगर पढ़ाते हैं, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, then it is impossible. We are like very, ordinary people, ordinary teachers. No, no way. Anyway, it is up to you. I'm just leaving it for you people to think and go ahead. Anytime you have questions, you can always ask. You are always welcome. चलो, सो प्रीफिक्स का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? ए पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, आई एम वेरी श्योर जो लोग लास्ट तक थे उन्होंने पढ़ लिया, जो लोगों ने कल 1 बजे के बाद में गायब हो गए थे उन्होंने वीडियो देख लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। तो आप लोगों ने देख लिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। एंड देन व्हाट इज प्रीफिक्स इवैल्यूएशन? अगेन इट फॉलोज अ सिमिलर टेक्निक, सिमिलर लॉजिक। सो व्हाट इज सिमिलर टेक्निक एंड सिमिलर लॉजिक? इट सेज दैट you go in like a reverse order, you go in reverse order. लास्ट टाइम में हम लोग कह रहे थे वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, in a prefix we are going from right to left, in a prefix we are going from right to left, ये पहली चीज, we are going right to left. And what is the algorithm? Algorithm is similar. If you find the operand, put it onto the stack. If you find it operand, put it onto the stack. If you find it operator, pop to operands, pop to operands, do the operation, whatever is the result, push it back to the stack. Again you continue, again get the next operand, again if it is operand, put it onto the stack, put it onto the stack. If it is operator, pop to, do the calculation, whatever is the result, push the result back to the stack, and you continue doing this, and you continue doing this. That is what all you need to do. Let us just continue further and we start doing it on paper. So 3 is operand, you put it onto the stack. 7 is operand, you put it onto the stack. Minus is operator. Now if the minus is the operator, all I need to do is that pop the operand, pop second operand, do the subtraction. Subtraction is probably 4. Put that subtraction result back to the stack. Okay, you continue further. You continue further. Next, you have got like a 1. 1 is operand, put it onto the stack. One next is probably dollar. Dollar. How it is solved? The dollar, you get 1 over here, you pop 4, 1 raised to 4 is basically 4. The result is 4, that you are again putting it onto the stack. Okay, that is good. You continue further. You continue further. We have, let's say, 2.
that is good. We have got, let's say 6, that is good. We have got, let's say division. All right, division is there. If you have a division, you continue further. You pop 6, you pop 2. 6 divided by 2 is 3. The result is 3. That result 3, you want to push it back to the stack. Okay, you continue further. You continue further. 8. 8 is a operand. I want to push it onto the stack. Then next, minus. Minus is a operator. Operator, प्लीज नोट, जो हम लोग पहला पॉप कर रहे हैं वो हमारा पहला ऑपरेंड है, जो हम लोग दूसरा पॉप कर रहे हैं वो हमारा दूसरा ऑपरेंड है. 8 minus 3 comes out to be 5. The result 5, I want to put it back to the stack. Okay, that is done. You continue further. You have, let's say 4 operand, put it onto the stack. 9, oh sorry, multiplication. Multiplication, so you pop 4, you pop 5. 5 4 is 20. The 20 result, we want to put it onto the stack. Okay, that is great. You continue further. What is the next part? Like a 9, put it onto the stack. 5, put it onto the stack. You continue further. Plus, plus, okay. So 5 is out. नहीं sorry, जो पहला पॉप किया था वो पहला ऑपरेंड, जो दूसरा पॉप किया था वो दूसरा ऑपरेंड. 5 plus 9 comes out to be 14. 14, I have to put it onto the stack once again. Okay, done. You continue further. We will say minus sign. The minus sign again. 14 minus 20, result comes out to be minus 6. मैंने कुछ तो गड़बड़ किया ऐसे मेरे को बहुत लग रहा है. Yes, correct. $1.04. A $1.04 was 1. Yes, thank you. Okay, no problem. And then minus 6, you put it onto the stack. Minus 6, the result you put it onto the stack, and again you continue further, and then you are into the plus sign. You're into the plus sign, so you get say minus 6 over there. और वो जो $1.04 था, it was a 1:4, so that was a mistake. So no problem. हम लोग we have just rectified it. So minus 6 plus 1 comes out to be minus 5, and that minus 5 you want to put it onto the stack, into the stack, and again you continue. You continue, but you found that everything is done. If everything is done, whatever is the topmost, that is nothing but our final result. That's it. So sir, that is all about algorithm. Yes, that is all about algorithm. Is it exactly same as what we had seen yesterday? So जो हम लोगों ने postfix evaluation का जो algorithm किया था, वो algorithm और ये algorithm, is it quite similar? Yes, it is quite similar. So all I will do is that let us not waste too much of time onto this. Let us quickly go ahead. Let us quickly go ahead and let us copy paste the code. Not only copy paste the code, let us update the code. I hope code sharing is working for all. It is solve postfix and now solve prefix. We have got small prefix. ऐसा postfix भी आपके पास है. अब ये prefix का function. तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हमें यहाँ पर उल्टा जाना है. A traverse postfix from left to right, नहीं, not left to right, then it should be right to left. और हम लोग postfix की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग prefix की बात कर रहे हैं. So this is like a prefix expression and I want to traverse in like a reverse order. चलो अच्छी बात है. It's a prefix operation. I want to traverse in reverse order. How do I traverse in reverse order? Probably I can start it with this length minus 1. A length minus 1. I can say I is greater than or equal to 0 and I minus minus. I guess that would be the easiest way. I can go in like a reverse order. Okay, now you want to take each symbol or each character from this. This is going to remain same. If the symbol is going to be the operand, you want to push it onto the stack. That is also all right. All I need to do is that I need to just convert it from the character to corresponding integer. तो हम लोगों ने पहले इसको character to string convert किया और बाद में string to integer convert किया है. यहाँ पर मैंने explanation भी लिखा हुआ है. The character to string, it is converting into the double quotes, and that double quoted stuff I pass it to the parseInt function, which is converted to the plain integer 5. I hope people understand that this is ASCII value of 5. This is not 5. This is double quoted 5. That is nothing but string 5, and this is nothing but the actual integer numerical value 5.
Anyway, you continue further. You want to pop two operand from the stack. But now यहाँ पर हमने B और A उल्टा किया था. अब हमें उल्टा नहीं करना है. अब हमें सीधा करना है. Now it is a int A, int B. It is all right. Then you go ahead. Calculate the result. You continue further. एक calculate का कल हम लोगों ने एक helper function लिखा था. तो वो helper function आपको सामने ऊपर दिख ही रहा है. लेकिन helper function that is available. नॉर्मल जो कुछ भी ए बी आपने पास किया, ऑपरेटर पास किया है, उसके डिवीजन पास किया तो डिवीजन करो, प्लस पास किया तो प्लस करो, मल्टीप्लिकेशन पास किया तो मल्टीप्लिकेशन करो, ये डॉलर पास किया है तो डॉलर करो, व्हाटएवर. सो ऑल दैट ऑपरेशन वी आर डूइंग, whatever is the result you are again putting it onto the stack, and this will continue all the time. When all symbols are completed from this expression, pop the final result and return it. So will it give me the same result? Ideally it should give you the same result. Let us just check it whether it is true or not. Is it really giving me the same result or it is not giving? Let me try to write plus minus plus 59 multiplication 4 minus 8 divided by 6 to $1 minus 7 3. Okay, this looks good. And if it is good, let us try to call the same function once again. Not same function, the prefix function once again. Solve postfix, ये तो चल ही रहा था, वो कल ही चल रहा था. Now solve prefix is another one that we have got. Right click, run as Java application. Oh, acha, sorry, we need to pass the prefix to that. Copy paste is very dangerous tool, so there are likely chances that you will be committing the mistakes. Now you find that आप लोग उसको postfix से solve करो चाहे prefix से solve करो, choice is yours, and then it is working well. Why don't you copy paste? Try it once again quickly. Nikhil, I guess you were also not there into the last till the end of yesterday's session. Someone asked me the question and I even given an answer of this the same question, isn't it? In evaluation we use a single digit number, but if 2-digit number, then how to take that number? I guess I had answered that. Or that is one of the assignment, Nikhil. Can you check? और उस assignment में hint भी है कि if you are having an expression like that, please take it kind of a space separated, and then you can use string dot split to split this separate one, and once you have splitted that, then you can do the further operations, right? असाइनमेंट पढ़ लो, और दूसरा जो आगे वाला हिंट जो मैंने कल दिया था, इट वाज स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट. I'll just go back. हाँ, line number 55. Yes, I'm repeating. What I need to do is that I need to go from right to left. Right to left मतलब क्या? Last character to first character. How do you go from last character to first character? A string is like a character array. If string is like a character array, what is the last element? The last element is nothing but length minus 1. जो भी अगर आपका लेंथ अगर n है, then n minus 1 will be the last index. So n minus 1 will be the last index. So हमने वहां से शुरू किया है. I is greater than or equal to 0, और हम लोगों ने I माइनस माइनस किया है, तो हम लोग उल्टा जा रहे हैं. सो जो सबसे पहले हमारा लास्ट वाला इंडेक्स था, उसके बाद में सेकंड लास्ट इंडेक्स, थर्ड लास्ट इंडेक्स, फोर्थ लास्ट इंडेक्स, ऐसे करते 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 वी आर गोइंग टिल द 0th इंडेक्स. सो वी आर जस्ट गोइंग इन लाइक अ रिवर्स ऑर्डर. आई होप पूजा दैट इज फाइन. इट इज एज गुड एज लाइक द वे वी आर ट्रेवर्सिंग द एरे इन रिवर्स ऑर्डर. वैसे ही कुछ किया है, बाकी कुछ नहीं किया है. सिर्फ यहाँ पर हम लोग लेंथ -1 कर रहे हैं कि वहां से शुरू करो, 0 तक जाओ और I माइनस माइनस उल्टा जाओ, और बाद में हर एक कैरेक्टर को रिट्राइव करो एंड देन फॉलो द रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑन द टॉप ऑफ इट. चलो ग्रेट. सो द थिंग्स आर डन वेल, थिंग्स आर अंडरस्टूड वेल. वैसे पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन एंड प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, दे आर लाइक प्रीटी सिंपल एल्गोरिथम्स. हाँ, व्हाट इज लाइक बेटर एल्गोरिथम्स? I will go ahead. Infix to postfix conversion or infix to prefix conversion, this usually takes bit more time than the postfix evaluation or prefix evaluation. They are bit tricky to digest. Don't worry, we will go ahead. And once again, I will only focus on a postfix part. जो आप लोग अगर postfix आपको ठीक से समझ में आ गया है,
Prefix, you people can do it by yourself. Prefix, you people can do it by yourself. So let me just focus on a postfix part. How do I convert infix to postfix? कल कैसे किया, अपने पास टाइम कम था इसलिए मैंने शॉर्टकट मारा, तो मैंने डायरेक्टली पोस्टफिक्स ले लिया और इसको इवेल्युएट किया. बट इन रियल वर्ल्ड आप लोग एंड यूजर को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई पोस्टफिक्स एंटर करके दे दे. सो एंड यूजर को आप लोग क्या बोलने वाले हो? एंड यूजर को आप लोग बोलने वाले हो, प्लीज गिव मी द प्रीफिक्स वन, please give me the, sorry, give me the infix one. So end user is going to give you the infix, end user is going to give you the infix, and then it will be your responsibility to convert infix to, it will be your responsibility to convert infix to postfix and infix to prefix. तो अपना जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो था वो कुछ ऐसा था, infix is equal to 5 plus 9 minus 4 इनटू, आप लोग नोट किया यहाँ पर पैरेंथेसिस भी है, वेरी गुड, 8 minus 6 by 2 plus 1 dollar, and then 7 minus 3, 7 minus 3. Okay, I guess it was there, correct, I believe it is correct, मैंने टाइपिंग में कोई गड़बड़ नहीं किया है तो. And then somehow I want to write a function, listen carefully, I want to write a function which will convert infix to postfix. So infix टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने के लिए मुझको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द पोस्टफिक्स, I will be taking the infix expression from the user, and then whatever infix expression I have taken from the user, that infix expression I will convert it into the postfix, and then that postfix further I can solve it. I guess that is like idea behind it. तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला फंक्शन बनाना है. And what that function input is, you can make a note. The function input is a string, let's say it is a postfix, you can say, and then this postfix is something that I want to return. In this postfix, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करेंगे, इस इनफिक्स को हम लोग पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में उसको रिटर्न करेंगे. दैट इज बेसिकली द आइडिया. आई होप द पिक्चर इज क्लियर. हमें क्या करना है? Obviously we will not write a code, we will first understand the algorithm on paper, how the things are going. We will do that whole algorithm step by step. Once you are comfortable, let me know, then and only then we will go and try to complete the code. So कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे. But as I told you, I'll be explaining only one part. I'll be explaining only infix to postfix. Infix to prefix will be your homework. So please pay attention on the first part. So infix to postfix, what do you need? I again need a stack, but this time there's a small change in the story. I need a stack of operators. What I need? Now I need a stack of operators. I don't need a stack of operands. Okay, that is good. And if it is a stack of operators, how does it go? Let us just begin with, and you understand that you need to also create the postfix string. Let's say that this is my postfix string that I want to prepare. The postfix string that I want to prepare, and let us get started. The rule is very simple. The rule is very simple. And don't worry, मैंने कहा ना एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, हम लोग उसको एक दो बार रिपीट करेंगे. सो हैव पेशेंस, जितना भी समझ में आएगा, every time you build onto the next one. So there are 3, 4, 5 points are there that you need to take care. The very first point you need to understand, यहाँ पर ये क्या है? It is like 5. A 5 is an operand. If it is an operand, append it to the postfix. If it is operand, append it to the postfix. If it is operator, put it onto the stack. If it is an operator, append it to the postfix. If it is operator, put it onto the stack. You continue further. If it is a if it is a operand, append it to the postfix. If it is operator, put it onto the stack. But now remember the rule. Remember the rule. You can put this onto the stack if and only if its priority is greater than the topmost element over here. You can put this onto the stack if and only if its priority
is greater than, I said greater than the priority of this. उल्टा कहते हैं, if the priority of this, listen carefully, if priority of this is greater, priority of this is greater or equal, priority of this is greater or equal, the topmost one, greater or equal, you should be popping it and you need to append it to the postfix. Then you need to append it to the postfix. Now there is nothing to compare. Feel free to put it over here. And then again you continue further, like a 4. 4 is operand, you want to append it. You continue further, multiplication. Multiplication, now you find that इसकी प्रायोरिटी ग्रेटर या इक्वल नहीं है, इसकी प्रायोरिटी ग्रेटर या इक्वल नहीं है, तो इसको आप लोग आराम से इसके ऊपर डाल सकते हो, देयर इज नो ट्रबल. And then you continue further like a parenthesis. What about parenthesis? You always say that the parenthesis is like always highest priority. So it is like always highest priority, उसकी priority check करने की जरूरत ही नहीं है, because parenthesis is as good as a kind of a inner expression that you are trying. If it is like an inner expression that you are trying, blindly put it onto the stack. उसको compare भी मत करो, just put it onto the stack. Then you continue further. You go, let's say 8. 8 is a 8 is a operand. Operand, you append it to the stack, append it to the postfix. You continue, you go like minus. Now minus. Take a look at this. As I said that, what I was trying to tell you is that this is a kind of a mini expression. Expression within expression. Have a look at this. This is a kind of mini expression. This is like an expression within expression. So as good as this one, you are starting with kind of a new stack. It is like as good as you're starting with like a new stack. You are not supposed to really bother about what is parenthesis below, क्योंकि आपको ये expression अलग से solve करना है और उसका जो result आएगा वो बाद में आपको आगे calculation में use करना है. And that is the reason this minus should go on the top of it. This minus should go on the top of it. You continue further. We have got like a 6. You put it there. You continue further. It's a division. A division, priority of this is not greater, not equal to the priority of this. Since it is not greater, not equal, so just put it onto the stack. You continue further. A we have got, let's say 2. You append it. Again, we have got a closing parenthesis. Now, moment you find a closing parenthesis, now you are saying that जो आपका sub expression था, the sub expression is completed. And if your sub expression is completed, ये जो अंदर के जितने सारे आप लोगों ने push किए हुए हैं, you pop them, append them. You pop them, append them. You pop them, and now what I found, a sub expression का matching वाला मिल गया, matching वाला मिल गया, pop that also and discard it. Pop that also and discard it. And you continue further. If you got now plus, but now if it is a plus, I say that the priority of this is greater or equal to this. Pop that and append it. Priority of this greater to nahi hai lekin equal to this. Just pop and append that. Continue further. You put it onto the stack. Now you continue further. We have got like a 1. You put it there. Next, we have got like a, sorry, the next one we got dollar. Dollar, put it onto the stack, right? You continue further. Parenthesis sub expression begins. Put it directly, not to worry. You continue further. We have, let's say 7, 7, 7, 7, 7. You continue once again. Let's say minus, minus. A minus, it is like a sub expression, so you can put it onto the stack. Program के बारे में मत सोचो, अभी algorithm के बारे में मत सोचो. Like a 3, it is all right. Again, the parenthesis is completed. Parenthesis completed. So you go ahead. Parenthesis completed. तो जब तक opening नहीं मिलता तब तक एक एक pop करो और इसको append करो. Opening मिल गया है, उसको ले लो और इसको kind of discard करो. That is also done. You continue further. You have got, let's say dollar. अब बाकी by the way और कुछ बचा ही नहीं है. Now everything is finished. जो कुछ भी बचा है उसको stack से निकालो और उसको append करते जाओ. Stack से निकालो और उसको append करते जाओ. That is what all we have taken up.
and this is nothing but our postfix. This is nothing but our postfix. क्या कल हम लोगों ने यही postfix निकाला था? कल का हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था 59 प्लस 4862 59 प्लस 4862 डिवीजन माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस डिवीजन माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस 173 माइनस डॉलर प्लस. यस, इट लुक लाइक इट वाज एग्जैक्टली सेम वन. डोंट वरी, मैं फिर से पूरा रिपीट करता हूँ, फिर से उसका एल्गोरिथम लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और उसके बाद में भी क्लियर नहीं होगा, देन लेट मी नो, देन लेट मी नो. आप उसकी चिंता मत करो. सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट पे अटेंशन. आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. तो कुछ बेसिक रूल्स जो हमको यहां से समझ में आए, जो बेसिक रूल्स आपको समझ में आए, ट्राई टू रिवाइज, ट्राई टू रिकॉल द रूल्स. द रूल्स वेर समथिंग लाइक दिस. अगर ऑपरेंड मिला तो क्या करना है? ऑपरेंड मिला तो क्या करना है? अगर ऑपरेंड मिला तो क्या करना है? तो उसको अपेंड करना है, पोस्टफिक्स में अपेंड करना है. यस, आई अंडरस्टूड. द सेकंड, अगर ऑपरेटर मिला तो क्या करना है? ऑपरेटर मिला तो बेसिकली स्टैक के ऊपर डालना है. बट बट डायरेक्टली स्टैक के ऊपर नहीं डालना है. अगर स्टैक का जो टॉप मोस्ट है, अगर उसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है या इक्वल है, स्टैक में अगर जो है उसकी प्रायोरिटी अगर ग्रेटर है या इक्वल है, स्टैक का जो टॉप मोस्ट है उसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है या इक्वल है, वहां से उसको पॉप करना है. वहां से उसको पॉप करना है और उसको पोस्टफिक्स में अपेंड करना है. उसको पोस्टफिक्स में अपेंड करना है. दैट वी नीड टू टेक केयर. एंड देन अगर ऐसा कोई नहीं रहेगा, ऐसा कोई नहीं रहेगा, तो फिर आप लोग करंट वाले को उसके अंदर पुश कर सकते हो. दैट इज व्हाट वी डू. सो वन थिंग इज श्योर, लिसन केयरफुली. अगर ऑपरेंड होगा तो अपेंड करना है, और अगर ऑपरेटर होगा तो पुश करना है विद द कंडीशन, विद द प्रेसिडेंस कंडीशन. अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, तो ज्यादा सोचना नहीं है, उसको सीधा सीधा स्टैक के ऊपर पुश कर देना है. क्योंकि अब एक हमारा मिनी एक्सप्रेशन चालू हो रहा है, एक्सप्रेशन के अंदर का सब एक्सप्रेशन चालू हो रहा है. इसलिए फॉर दैट सब एक्सप्रेशन, जो पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा उसको एज इट इज स्टैक के ऊपर डालना है. और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब आएगा तो हमें क्या करना है? फॉर द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जितने सारे स्टैक के ऊपर है उनको वन बाय वन पॉप करना है. जितने सारे स्टैक के ऊपर है उनको वन बाय वन पॉप करना है, जब तक ओपनिंग वापस से नहीं मिलता तब तक. जब तक ओपनिंग वापस से नहीं मिलता तब तक ये सब कुछ पॉप करना है. इट इज डन. एंड फाइनली व्हेन दैट इज आल्सो डन, व्हाट इज नेक्स्ट जॉब? व्हेन दैट इज आल्सो डन, व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब? इज फाइनली नेक्स्ट जॉब. अच्छा, ऑब्वियसली उसको डिस्कार्ड तो करना ही है, नो डाउट ऑन दैट. जब सारे एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे तो जितने बचे हैं उतने सारे के सारे पॉप करने हैं और सारे के सारे अपेंड करने हैं. आई होप नाउ दिस इज ओके. चलो फिर से एक बार करके देखते हैं. आई गेस नाउ यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन. लेट्स सी. 5 5 is a operand. If it is operand, append it to the stack. Okay, that is sorry, append it to the postfix. Continue further. Plus is operator. प्लस इज ऑपरेटर. यहाँ पर चेक करने लायक कुछ नहीं है तो इसको स्टैक के ऊपर डाल सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कंटिन्यू फर्दर. लाइक वी हैव गॉट 9 over there, you append it over there. Continue next. We have got, let's say, minus there, minus there. What I said, अगर टॉप मोस्ट का प्रायोरिटी ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, टॉप मोस्ट का प्रायोरिटी ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, अभी हमारे केस में इक्वल है, उसको यहां से निकालो और इसको अपेंड कर दो. Okay, it is done, not a problem. Next one is 4. 4 is a operand, just append it. By the way, इसको पुश करना रह गया. It is to be push ना, उसको निकाल दिया तो इसको पुश करना चाहिए. No problem. You continue further. You continue further. Next, we have like a multiplication. As we have got a multiplication, what multiplication does? Multiplication क्या करना है? You find that the priority of this, a priority of this is a priority of this is not greater nor equal. तो इसको आराम से हम लोग स्टैक के ऊपर डाल सकते हैं. There is no trouble. We started with the opening parenthesis. Opening parenthesis आया, कुछ सोचना नहीं है, इसको चुपचाप से स्टैक के ऊपर डालना है, उसको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है. Just put it onto the stack. Then you continue further. We have got, let's say, 8. We have got 8. It is the operand. You just append it. Then you have got like a minus.
नो माइनस ऐसे सब एक्सप्रेशन ये उसके अंदर का है, तो इसको माइनस को भी पुश कर दिया। नेक्स्ट वी हैव लाइक अ 6, वी नीड टू अपेंड, वी हैव लाइक division sign. Again, the priority of the topmost, a priority of the topmost is greater नहीं है, equal भी नहीं है, तो division can go safely onto this. Okay, that is absolutely fine. You continue further. Next is what, say 2. It is operand, so append it. We have got closing parenthesis. If you have got a closing parenthesis, what is to be done? Pop 1, append it. Pop 2, append it. Keep on doing it until you find the opening. Please note, वो जो ओपनिंग है, ओपनिंग आपको मैच भी करना है और ओपनिंग को स्टैक से निकालना भी है, उसको स्टैक से निकालना भी है और उसको कहीं पर अपेंड नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, वी से डिस्कार्ड, हमें उसको डिस्कार्ड करना है। डन। You continue further. Now it is like a plus, but again what do we say, the priority of this is greater, तो topmost का priority greater है, उसको append करो. Don't do only one comparison, do the next comparison also. Priority of this is equal, वो equal है उसको भी निकालो, तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी एक बार नहीं चेक करनी है, हमें लूप में चेक करनी है, तो हम लोग उसको वहां पर भी निकालते हैं। एंड नाउ देयर इज नथिंग टू कंपेयर, सो प्लस कैन गो सेफली देयर। यू कंटिन्यू फर्दर। वी हैव लेटर 1 append dollar, the priority of plus is not greater than, a priority of plus is not greater than this, so dollar will sit on the top of this, no problem. Sub expression started, continue further. We have got 7, we have got minus goes inside this, 3 operand closing parenthesis. So जब तक वापस से ओपनिंग नहीं आता तब तक 1 by 1 पॉप कर लो और इसको भी पॉप कर लो और उसको डिस्कार्ड कर लो। Now you find that everything from this is completed. If everything is completed, जितना भी बच गया है उसको 1 by 1 निकालो और अपेंड करो, जितना भी बच गया है उसको 1 by 1 निकालो और अपेंड करो। That's it. This is what infix to postfix algorithm is all about. तो infix को to postfix में क्या करते हैं, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं करते। Now just if you want the points to highlight, I'll just mention somewhere. You see, अगेन मैं अल्गोरिदम नहीं लिख रहा हूं, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। अल्गोरिदम स्टेप वाइज होता है, मैं स्टेप वाइज नहीं जा रहा हूं, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। अब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और बाद में हमें पूरा अल्गोरिदम लिखना है, ये याद रखना। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट आई एम सेइंग, द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई अंडरस्टैंड दैट ये जो इनफिक्स था, इनफिक्स व्हाट इज दैट, अरे traverse infix from left to right, a traverse infix from left to right, it is done, it's not a problem. The second one, what is second one? अब हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। अब हमें सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट अबाउट ऑपरेंड्स, कैन यू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट? इफ ऑपरेंड फाउंड, कैन यू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट? yes, append to postfix, okay, that is good. Next, if operator is found, yes, definitely I want to push to the stack, but remember conditions applied, this is the conditions applied. What is the condition? The condition over there is if priority of topmost operator on stack, a topmost operator मतलब हम लोग peak operation की बात कर रहे हैं, so priority of the topmost operator on the stack is greater or equal to priority of current operator, क्या करना है,
क्या करना है? अगर टॉप मोस्ट की प्रायोरिटी ग्रेटर होती है या इक्वल होती है तो क्या करना है? हाँ, yes, we need to first, yes, pop it from stack, pop it from stack and append to postfix, append to postfix. ऑब्वियसली हमें इसको स्टैक के ऊपर डालना ही है, लेकिन उसके पहले कंडीशन है कि अगर प्रायोरिटी ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑन टू द स्टैक is greater or equal to the priority of the current operator, pop it from the stack and append it to the postfix. Okay, chalo, I understood this as well. What about fourth point that I need to remember is that if opening parenthesis is found, if opening parenthesis is found, what you are saying? If opening parenthesis is found, what is to be done, guys? Yes, अभी कुछ नहीं करना है, चेक भी नहीं करना है, कंपेयर भी नहीं करना है. Push it on stack. Push it on stack. That we will take care. What about next? If closing parenthesis is found, if closing parenthesis is found, what is to be done? I'm saying pop operators from stack and append to postfix and append to postfix until opening is found, until opening is found. But wait, what about that opening? Also pop and discard. मैं discard क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसको आपको append नहीं करना है. Opening from stack, like a point number 5. Point number 6, probably the last point. A last point. What is the last point? If all symbols from, if all symbols from infix are done, are completed, what is to be done? Yes, pop one by one and append to postfix, append to postfix, and this is nothing but the whole algorithm is. आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट इसका मार के रखना, so that you can hand it, take up this in background. वैसे मैं इसको कमेंट में लिखने ही वाला हूँ, but still I would suggest that एक screenshot मार के रखना, so that immediately if you get confused somewhere, you can always take a look at this and then you can understand it, right? So I'm just going back. I hope this is still comfortable. Still not comfortable, I'll do it once again for you. I'll do once again for you, and then let me know if it is okay, not okay for you, whatever. Let's just go ahead. If brackets are like 8 divided by 2 minus 6, what is the problem? कोई problem नहीं है in that case. Janvi, I guess there should not be any problem. In that case, what will happen? The division will go first. The division will go first, and if the division goes first, it will also come out first, no? क्योंकि minus तो उसके ऊपर नहीं जाएगा. It's clear? Understood? Okay, that is great. तो एक काम करते हैं, let us just go back and then we will write a code for that. We'll write a code for that, and again not code for that, first comments for that. ये जो 5 पॉइंट अभी मैंने यहाँ पर कहे थे, let me write all 5 points over here, 6 points over here, and then we will see how we can convert it into the code as such. I'm going it one by one. क्या करना है? Traverse infix expression from left to right. That is all. That was my first point. Yes, I want to traverse from left to right. What is second point? Second point, if operand found, if operand is found, push it on the stack, on the stack. That is great. If operator is found, if operator is found, if operator is found, I'm saying that
पुट इट, मैंने कुछ उल्टा किया क्या, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा किया उल्टा हो गया, वो फ्लो में मैं भूल गया. अपेंड टू पोस्टफिक्स, append to postfix. I hope now this is okay. So now it is append to postfix, and if the operator is found, push it onto the stack. By the way, but push it onto the stack not straight away. उसमें terms and conditions applied है. If the priority of, if the priority of topmost element, topmost operator from stack is greater than or equal to priority of current operator, what is to be done? I say that pop operator from stack and append to postfix. All right, append to postfix, and this is something we need to do. कोई बात नहीं, you continue further. Point number 4, what is saying that if opening parenthesis is found, then push it on stack without thinking of anything, push it onto the stack. 5th, if closing parenthesis is found, what is to be done? Pop all operators from stack one by one and append to postfix, until opening is found. Also pop and discard opening. All right, you continue further. The point number 6, when all symbols, you can say, from infix are completed, are done, what is to be done? Pop all operator from the stack and append them to the postfix one after another. That's it. Are the same 6 points that we are supposed to write it? Okay, good. ए बाय द वे, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग में बार बार अपेंड करने की जरूरत पड़ रही है. अगर हमें एफिशिएंटली स्ट्रिंग को अगर बार बार अपेंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए जावा एक्सपर्ट्स? अगर हमें स्ट्रिंग को बार बार अपेंड करना है तो विच वन इज बेटर ऑप्शन? यस, आइडियली वी शुड हैव गॉन फॉर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर. सो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दैट विल स्पीड अप, अदरवाइज हमको बार बार प्लस करना पड़ेगा. दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. वैसे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग बफर is usually used in a threaded environment, multi-threaded environment. अभी हम लोग सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में, अगर हम लोग सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में है, देन वी शुड प्रिफर अ स्ट्रिंग बिल्डर. सो आई विल सिंपली से लाइक अ पोस्टफिक्स एंड आई एम मेकिंग इट काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग बिल्डर, सो दैट हम लोग उसके अंदर अपेंड, तो वहां पर भी हम लोग सीधा सीधा अपेंड का मेथड कॉल कर सकते हैं, एंड द कोड विल इवन बिकम मोर रीडेबल एज वेल एज मोर एफिशिएंट. So as we see that, let us just begin one by one. For integer I is equal to 0, I is less than infix dot length, I plus plus. So yes, we are traversing from left to right. So जो हमने पहला point कहा था, let us just try to follow that first point. All right, I am following the first point. Let us continue further. The second one, if operand is found, I want to put it onto the stack. Oh, you want to put it on a stack, but to put it on a stack, you need to first have a stack of this. Let me just go ahead. Let me have a stack of characters. Stack of character is equal to new stack. ये हमको character stack के ऊपर push करने हैं, हमें operator stack के ऊपर push करने हैं. Don't forget that. So if operand is found, then we need to what is that? Append it to the postfix, and if the operator is found, then we need to push it onto the stack. Let us do it one by one. If character dot is digit, if it is a digit, current symbol, let me access the symbol one by one.
मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर सिंबल करके डिक्लेयर करता हूँ सो दैट इट विल हेल्प मी रीडिंग इट इन अ easier way. Okay, and if it is a symbol is a digit, what do you want to say? You want to append it. So s dot add, and let me add it. What is that symbol? I guess this part is done, so we have taken care of it. What is next? If it is an operator is found, if the operator is found, how do I know that it is operator? If it is operator, I'll just say that if it is operator, कैसे ढूंढना है मैं बाद में बताता हूँ. If it is operator, क्या करना है? Put it onto the stack. So let me push it onto the stack. S dot push. S dot push, and I want to push it onto the stack. So what we are saying is that if operator is found, push it onto the stack. So हम लोग उसको stack के ऊपर push कर रहे हैं. That is fine. But what we need to check extra, if the priority of the topmost operator from the stack, okay, if priority of, see it carefully, the priority of topmost element of the stack is greater than or equal to priority of the current operator. Priority of the current operator, what is to be done? You are saying that pop it and append it. Okay, you are saying that pop it and append it. So post dot append and s dot pop. So आप उसको pop कर रहे हो, आप उसको pop कर रहे हो, और pop करने के बाद में आप उसको append कर रहे हो. So that is good. But the question is that सर ये जो प्रायोरिटी है इसके लिए कोई रेडीमेड फंक्शन है? Unfortunately, there is no ready-made function. We need to go ahead and we need to build a function by ourselves. जैसे कल एक कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने एक टेम्पररी फंक्शन बनाया था, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर के लिए एक टेम्पररी फंक्शन बनाया था, ऑन द पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ पर एक प्रायोरिटी चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, एंड दैट इज जस्ट अ डमी फंक्शन. तो इट इज अप टू यू. सो कैरेक्टर, आई कैन से ऑपरेटर, और कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी कितनी है उसके हिसाब से हमें कोड लिखना है. तो लिखो फटाफट से. इफ द ऑपरेटर प्रायोरिटी इज डॉलर, ये ऑपरेटर प्रायोरिटी इज डॉलर, तो आई गेस इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. यू रिटर्न सम नंबर विच इज इंडिकेटिंग विच शुड बी हाईएस्ट नंबर. ओके, दैट इज गुड. सर वो 10 क्यों लिखा? कुछ भी लिखो, चॉइस इज योर्स. नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट मल्टीप्लीकेशन प्रायोरिटी इज स्मॉलर देन दैट. What is important? Multiplication priority is smaller than that, but the division and modulus priority is same as multiplication. I repeat once again, these numbers are not important. The numbers comparison is important. So I'm saying that 10 is greater and 7 is smaller. Okay, that is good. Then you continue further. Then you write it. If it is plus, then you need to understand that it should be even smaller than that. Oh, it has to be even smaller than that. Again, you return some number which is even smaller than that. Even smaller than that. We have just taken care. If nothing is matching, I'm just returning 0. Now you ask the question, सर ये 10 7 3 क्यों लिखे? To be frank, आप लोग चाहो तो यहाँ पर 3 2 1 भी लिख सकते हो. There is absolutely no problem. Choice is yours. The numbers are not important. मैं फिर से बता रहा हूँ. Numbers are not important. Do not consider the numbers. Consider their क्या कहते हैं उसको, relative precedence. So I'm saying that dollar is highest. ये important है. Star, division and modulus should be equal but lower than the dollar. Plus and minus should be lower than the multiplication division, and they plus and minus should be equal. I hope you are getting the point. Parenthesis I am not checking. So Mallika, at any moment the parenthesis compare नहीं हो रहा है, then it will be 0. पैरेंथेसिस अगर कंपैरिजन के लिए आएगा तो भी वो 0 कंसीडर होने वाला है. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पैरेंथेसिस को अलग से यहाँ पर प्रेसिडेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी हम उसको ब्लाइंडली पुश कर रहे हैं. सो हम लोग ने ये डिसाइड किया हुआ है. सो दैट इज गोइंग वेल. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. सो ये प्रायोरिटी वाला फंक्शन काम करेगा. बट बाय द वे, ये आपको एक बार करना है या बार बार करना है? ये आपको एक बार करना है या बार बार करना है? Yes, larger the return value, larger is the precedence. Correct, Shubham? Whatever you are saying is correct. जितना larger return value हम लोग कर रहे हैं, उतना larger हम लोग precedence consider कर रहे हैं. So ये हमको एक बार नहीं करना है, ये हमें बार बार करना है. While and एक और चीज, ये आप लोग topmost element कब ले सकते हो?
जब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट होगा तब। अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो लार्जेस्ट एलिमेंट कहां से आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो यू जस्ट कंटिन्यू फर्दर, स्टैक इज एम्प्टी व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, when stack is not empty, then and only then, if the stack is not empty, then and only then check the topmost element. Otherwise what will happen, अगर आपने not empty का condition check नहीं किया, this will probably directly throw stack empty exception. I hope you are getting the point. तो पहले आप लोग ये check कर लो, if the stack is not empty, if the stack is not empty, then and only then the priority of the topmost element is greater than equal to priority of the symbol, current symbol. So that is also done if you have taken care. What is the next part? The next part, if opening parenthesis is found, push it onto the stack. Okay, that is good. If opening is found, if symbol is equal to opening, मुझको कुछ नहीं सोचना है, मुझको चुपचाप से उसको stack के ऊपर डाल देना है. So I'm just pushing it onto the stack. Okay, that is good. What is next? If closing is found, that is also good. If symbol is equal to closing. If it is closing, what is to be done? If it is closing, what is to be done? What you are saying is that until opening is found, until opening is found, what do you need to do? You need to pop all. Okay, कह रहे हो तो लिखो उसको. While what is that, s dot peak is not equal to opening, until opening is found, what is to be done? Pop one by one and append it to the postfix. Okay, pop one by one and append it to the postfix. Okay, understand that. If closing is found, pop all operator from this and etc etc etc. So what you are writing over there, let me complete it over here. Chalo, done. And at the same time you need to also pop, अभी जो topmost है, topmost कौन सा होगा, opening वाला होगा. topmost अगर opening वाला होगा तो उसको भी skip कर दो. टॉपमोस्ट अगर ओपनिंग वाला होगा तो उसको भी स्किप कर दो, उसको भी पॉप कर लो, और उसकी रिटर्न वैल्यू कहीं पर कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको अपेंड करने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दो. चलो वो भी डिस्कार्ड कर दिया. व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट आई गेस वी कंटिन्यू फर्दर. द लास्ट वन, द लास्ट वन, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक सब कुछ पॉप करो एंड अपेंड करो, कोई बात नहीं. सो पोस्ट डॉट अपेंड s post dot append और that s dot pop करो और append करो, खत्म होगा, डन. तो सर इज इट कंप्लीटेड? ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. ये स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर हमें रिटर्न नहीं करना है, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है. सो यू कैन ऑलवेज कॉल इट टू स्ट्रिंग मेथड. सो माय कोड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बट देयर इज समथिंग स्टिल पेंडिंग. इफ ऑपरेटर इज फाउंड, इफ ऑपरेटर इज फाउंड, अरे वो तो हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, तो ऑपरेटर है ये हमें कैसे पता चलेगा? एक तरीका ये है कि आप लोग मैन्युअली जितने ऑपरेटर आप लोग चेक करने वाले हो उनको कहीं पर तो लिस्ट में डाल के रखो, प्लस माइनस वगैरह वगैरह, और उसके साथ मैच कर लो इफ इट इज मैचिंग विद दिस. ऑप्शन नंबर वन. ऑप्शन नंबर टू, आई कैन रीअरेंज दिस कोड, आई कैन रीअरेंज दिस कोड. एक ऑपरेंड का कोड हो गया, वेरी गुड. उसके बाद में हैव अ लुक एट दिस. उसके बाद में आई एम गोइंग अहेड and checking else part. I'm checking for if it is opening is found, let me write that code. Opening वाला code हो गया. else I'm again continuing with this. I'm again continuing with this, and now with this else, let me go ahead with the code of closing as well. Code of closing as well. So we are managing the code of closing. This is also done. This is also done. So what I'm saying is that we are just going one by one and we are checking it. अच्छा ये condition है तो ये करो, ये condition है तो ये करो, ये condition है तो ये करो. So we are just trying to rearrange our code. 2 मिनट दे दो मुझको, थोड़ा सा opening और closing parenthesis टिक करने दो, so that we can make it bit more readable. और वो comments जो आपके हैं, comments भी वहीं पर रहने चाहिए. ये रहा comment उसके सामने. That is good. And finally ये जो last वाला else है, that is nothing but my operator. That is nothing but my operator. अभी और कुछ बचेगा ही नहीं ना. हम लोगों ने ओपनिंग कंसीडर कर लिया, क्लोजिंग कंसीडर कर लिया, हम लोगों ने डिजिट भी कंसीडर कर लिया.
अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा. So that I am considering that as an operator. So अगर वो ओपनिंग भी नहीं है, अगर वो क्लोजिंग भी नहीं है, तो फाइनली वो ऑपरेटर है. ये बताने की अभी अलग से जरूरत नहीं है. So that we have taken care. So that is done. That is done. That is done. Let me check if it is everything is okay. Look like okay. So ये कोड चलेगा. Let's see whether it works, whether it don't work. Infix to postfix, and let me try to print the postfix. Done. Click run as, and if spelling mistake is not done, this should work. Is it working? Final result -5 आया है, मतलब आई एम वेरी श्योर दिस मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने हार्ड कोडेड नहीं लिया था, राइट? Don't worry, I'll explain everything once again. No problem. So I was trying to tell you again. I want you people to go through this first. Please read this. Take a little time. Take a little time. Just read it once, and then I'll again go through the whole code once again. Please read this once again. Go through, and I'll go through the whole code once again. You don't worry. And still any problem is there in algorithm, I'll go through that as well. Okay, so let us go step by step. The very first step saying that traverse infix from left to right. अब मैं code level पे जा रहा हूँ. Traverse infix from left to right. So you start with like a 0th index. Start with the 0th index, and you reach till the last index I plus plus. And every time I am fetching one current symbol. Now symbol can be operand. Listen, possibilities क्या क्या है? Over here, अगर हम लोग हर एक symbol fetch कर रहे हैं, तो symbol क्या क्या हो सकता है? A symbol can be operand. Symbol can be opening parenthesis. Symbol can be closing parenthesis, और symbol can be operator. I hope you agree. जो हम लोगों ने जो string लिया है, इस string में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं. या तो वो operand है, या तो operand है, या तो वो operator है, या तो opening parenthesis है, या तो closing parenthesis है. Do you agree with this? करेक्ट. सो अल्टीमेटली हर एक सिंबल में इन चार के अलावा और कोई केस नहीं होने वाला. अवर इट इज वेरी सिंपल दैट इट इज आइदर ऑपरेंड, और इट इज ओपनिंग, और इट इज क्लोजिंग, और इट इज ऑपरेटर. नो प्रॉब्लम. आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. इफ ऑपरेंड इज फाउंड, इफ ऑपरेंड इज फाउंड, तो सबसे पहले चारों में से हम लोग पहला चेक कर रहे हैं ऑपरेंड. if it is operand, if it is operand, I'm just checking that if it is a digit, if it is a digit, I can say that yes, it is operand. If it is operand, append it to the postfix. So जो ऊपर हम लोग एक postfix बनाया हुआ है, उस postfix को हम लोग append कर रहे हैं. That is the first part. If it is if it is closing, sorry, if it is opening parenthesis, if it is opening parenthesis, if it is opening parenthesis, our logic says that हमें इसको stack के ऊपर push करना है. So we simply written a code s dot push symbol. तो जो भी symbol था, opening वाला symbol था, उसको चुपचाप से हम लोगों ने stack के ऊपर push कर दिया. Nothing extra that we have done. You continue further. You continue further. अब बचा क्या? एक मिनट, दो कंडीशन तो हमने चेक कर ली. ऑपरेंड हो गया, ओपनिंग हो गया. सर अगर वो क्लोजिंग होगा तो क्या करना है? ओके, क्लोजिंग होगा तो क्या करना है? इफ इट इज क्लोजिंग, else if it is closing, if it is closing, we are saying that pop all operator from the stack one by one and append to the postfix until opening is found. तो I'm saying that जब तक stack के top के ऊपर opening नहीं आ जाता, तब तक एक एक को पॉप करो, हर एक को पॉप करो, और उसको अपेंड करो. ए पॉप करो और अपेंड करो, पॉप करो और अपेंड करो. कीप ऑन डूइंग इट. लेकिन ये याद रखना, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो स्टैक के टॉप पे कौन सा रहने वाला है? इस स्टैक के टॉप के ऊपर ओपनिंग रहने वाला है. मुझको उसको स्टैक के ऊपर नहीं रखना है, और मुझको उसको पोस्टफिक्स में भी नहीं डालना है. तो ये जो पॉप है, दिस पॉप विल टेक केयर ऑफ पॉपिंग दैट ओपनिंग विच इज ऑन द टॉप. उसको हम लोग निकाल रहे हैं, और उसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो स्टैक में कलेक्ट कर रहे हैं, ना तो पोस्टफिक्स में कलेक्ट कर रहे हैं. हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं. ओके, दैट इज फाइन. By the way, you finish with the operand, you finish with the opening, you finish with the closing.
Now what is left? अब एक ही तो बचा है, operator. So if it is operator, what is to be done? Oh, put it onto the stack. If it is operator, what do you want to do? Yes, I want to put it onto the stack. But if you want to put it onto the stack, when you want to put it onto the stack, you want to put it onto the stack, usse pehle you want to check if the priority of the topmost element, a priority of the topmost element s dot peak will give me the topmost element. If the priority of the topmost element is greater than or equal to priority of the current element, is greater than or equal to priority of the current element, then I want to pop it and I want to append it. I want to pop it and I want to append it. I want to pop it and I want to append it. Again, but the problem over is that हम लोग topmost element कब check करेंगे? Topmost element कब check करेंगे? जब stack के अंदर element होगा तब. अगर stack के अंदर element ही नहीं है, अगर stack के अंदर element ही नहीं है, तो आप pop किसको कर रहे हो? I hope you are getting my point. तो you go over here while stack is not empty. So आप लोग पहले ये condition check कर रहे हो कि stack is not empty, then and only then check the priority of the topmost. Then and only then they check the priority of the topmost. If stack is empty, तो चुपचाप से बाहर आ जाओ और डायरेक्टली इसको पुश कर दो. So दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. I want to come out. So I'm saying that if at all I found that stack is empty, if at all I found that stack is empty, then I will just come out and I will append it. I will push it onto the stack. लेकिन if stack is not empty, if stack is not empty, if stack is not empty, then I need to get the priority of the topmost. And to get the priority of the topmost, if it is greater than equal to priority of the current symbol, greater than equal to priority of the current symbol, then pop that particular symbol from the stack and append it into the postfix. Append it to the postfix. I hope this is clear. So operator condition. So Mohan, I guess I have explained you operator condition. This is what a condition that we had written there. Correct? And Saurabh, this is like a line number 110. No problem. And then, by the way, you just continue further. When all symbols from infix are completed, तो please note, ये जो for का loop लिखा था, ये for का loop हमारा यहाँ पर close हो रहा है. Please note, this is end of for loop. जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है. और उसके बाद में what you are doing, while stack is not empty, जितने भी है एक पॉप करो और उसको अपेंड करो, पॉप करो और अपेंड करो. फाइनली ये पोस्ट जो है वो आपका क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर है. हमें स्ट्रिंग बिल्डर नहीं रिटर्न करना था, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना था. तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग बिल्डर का डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो एंड देन यू आर डन विथ. और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है. दैट्स इट. नाउ इज इट वर्किंग? Is it working? It is in front of you. Run a Java application. So ये रहा आपका postfix and it is working well. Naneshwar का question है, can you repeat why we have taken string builder because of network issue? I didn't get it. No problem. I am repeating. मैं कहाँ पर था? भूल गया. हाँ, नैनेश्वर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. तो why we have used string builder? वैसे आप लोग नॉर्मल स्ट्रिंग लेते तो काम हो जाता क्या? टू बी फ्रैंक, नॉर्मल स्ट्रिंग लेते तो काम हो जाता, देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम. आप लोग नॉर्मल स्ट्रिंग लेते तो भी काम हो जाता, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता? हर बार अपेंड करने के लिए आपको ऐसे कुछ करना पड़ता. पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट प्लस सिंबल, ए पोस्ट प्लस सिंबल. आपको ऐसा कुछ लॉजिक लिखना पड़ता हर बार उसको अपेंड करने के लिए. अब आप लोगों ने जावा में पढ़ा है कि जावा के स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. And since strings are immutable, every time you are doing plus, every time you are doing some operation, what is going to happen? A new string object is going to be created. अब unnecessary आप लोग more and more string object create करोगे तो उसने memory भी जाएगी, उतना time भी जाएगा. And that is the reason, what is the better option over there? The better option is that we can use either string builder or we can use string buffer. जब हमें पता है हमें बार बार mutability करना है, बार बार modification करना है, तो instead of string, string builder is preferred in Java. And since string builder is preferred in Java, so I am using string builder. वैसे string buffer भी कर सकते थे, लेकिन string buffer हम लोग mainly synchronized environment में या multi-threaded environment में use करते हैं.
यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हैं ताकि हमें हमें पता है हम लोग सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रिंग बफर की कोई जरूरत नहीं है. आई होप ज्ञानेश्वर दैट इज क्लियर, राइट? तो इट इज देयर. अक्षय, मैं फिर से पूछ रहा हूँ यार, प्लीज पोस्ट क्वेश्चन पब्लिकली. इफ ऑपरेटर इज फाउंड, व्हाट यू वांट टू डू? अक्षय, कैन यू चेक? आपको बेसिकली करना क्या है? इफ ऑपरेटर इज फाउंड, पुश इट ऑन टू द स्टैक. सो यू वांट टू पुश इट ऑन टू द स्टैक. तो दिस कोड pushing onto the stack, this is written on line number 114. So line number 114, ultimately this is just a completion of this part. This is just completion of this part. If operator is found, वैसे तो उसको स्टैक के ऊपर पुश करना है, लेकिन बीच में जो कंडीशंस अप्लाइड थे उतना पार्ट मुझको अलग से चेक करना था, तो मैंने चेक कर लिया. इज दैट ओके? अक्षय पवार, डन? चलो, एनी अदर पार्ट? Why don't you people try it, compile it, run it at your place, check it if is it working for you? I'll wait a little. And as I said that अगर आपको infix to postfix समझ में आता है, infix to prefix is the same algorithm. It is same algorithm with little tricks here and there. With little tricks here and there. बाकी आपको अलग से कुछ नहीं करना है. I'm waiting for the people to complete it. Good. Algorithm was clear to everyone. If it is need to be revised, let me know. मैंने कोड 2 बार एक्सप्लेन किया, मैंने algorithm भी 2 बार एक्सप्लेन किया. ऑब्वियसली आपको 100% कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उसको 2-4 बार करोगे. एनीवन सेइंग दैट सर आपने पूरा पढ़ाया, आपने 2 बार पढ़ाया, लेकिन सर आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. यू कैन नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन इट 4-5 टाइम्स. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. डेटा स्ट्रक्चर में कॉन्फिडेंस दूसरे के बताने से कभी नहीं आता है, वो खुद के करने से आता है. तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई एम वेरी श्योर एज यू गो टू द लैब, आप लोग वापस से ये सारा पेपर वर्क खुद से करोगे, वापस से एक बार कोड खुद से टाइप करोगे, एंड देन आइडियली यू शुड बी कॉन्फिडेंट, एंड देन यू विल बी, नॉट अ प्रॉब्लम. चलो, अब सर infix to prefix, I'm not going to explain the paperwork, but let me write a code for you. मैं आपको कोड लिख के देता हूं, मैं आपको कोड के चेंजेस बताता हूं, पेपर वर्क आप लोग कर लेना, राइट? सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डोंट वरी. जो मुश्किल वाला काम था वो मैं खत्म कर रहा हूँ. और मुश्किल वाला काम क्या था? सर कोड लिखने नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोड मैं लिख के देता हूँ, आप चिंता मत करना. सो यू स्टार्ट विथ infix to prefix. Pay attention. Infix to prefix. Let us go ahead. And in an infix to prefix, what we are doing? The very first thing, you need to traverse the infix expression from right to left. You need to traverse infix expression from right to left. We will quickly see this and then we will take a break. Right to left मतलब कैसे करना है? It's like a infix dot length -1, I is greater than or equal to 0. Okay, that is good. And then you say I minus minus. All right, first part is done. Then you get the symbol one by one, that is okay, good. What you are saying, character is a digit, append it into the this prefix, absolutely fine. There is nothing much to be done into that. That is still correct. अब एक बात बताओ, आप लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हो, आप लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हो. कॉमन सेंस सोचो, अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो आपको पहले ओपनिंग आएगा या पहले क्लोजिंग आएगा? अगर आप लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो पहले आपको ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा? कॉमन सेंस है, पहले हमें क्लोजिंग आएगा क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं. नाउ जस्ट रिवर्स द एल्गोरिथम. सो इफ क्लोजिंग इज फाउंड,
क्योंकि हमें पहले क्लोजिंग आने वाला है. If closing is found, push it onto the stack. Okay, that is good. And if opening is found, if opening is found, if opening is found, if opening is found, all operator from the stack one by one and until closing is found, until closing is found. All right. तो जब तक क्लोजिंग नहीं आता है, जब तक क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक वन बाय वन पॉप करो और उनको अपेंड करो. फाइनली वो जो क्लोजिंग स्टैक के ऊपर मिला था, उस क्लोजिंग को भी पॉप करो, डिस्कार्ड करो. मैंने कहा ना, इट इज एग्जैक्टली सेम. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पहले क्लोजिंग आएगा, और अगर पहले क्लोजिंग आएगा तो पहले क्लोजिंग को स्टैक के ऊपर डाल दो, और फिर जब ओपनिंग आएगा तो सारे वन बाय वन पॉप करो, अपेंड करो, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक. और जैसे ही क्लोजिंग मिल गया तो रुक जाओ और बाद में उस क्लोजिंग को भी डिस्कार्ड कर दो. इट इज एग्जैक्टली सेम वी आर डूइंग. Now, finally, if it is operator is found, if it is operator found, what I'm saying, push it onto the stack. Oh, that is still true with one small change. Pay attention. One very small change. Pay attention. If priority of the topmost element, topmost operator from the stack is greater than or equal to nahi hai. It is greater than. It is not greater than equal to. It is only greater than. It is only greater than equal to only greater than the priority of the current operator. That's it. You do that, you append that. This is also done. Over. और कुछ बच गया है जहां पर मैंने पोस्टफिक्स वर्ड लिखा है, शायद वहां पर मुझको प्रीफिक्स वर्ड लिखना चाहिए. प्रीफिक्स वर्ड लिखना चाहिए कमेंट में. जहां पर पोस्टफिक्स वर्ड लिखा है वहां पर मुझको प्रीफिक्स वर्ड लिखना चाहिए. डन. End of for loop. When all symbols for infix are done, pop all one by one and then put it to the prefix. Okay, is it so? Yes, all that we need to do is that if stack is not empty, we need to pop all and we need to append it. So is it done? Yes, it is done. Only last change, point number 7, जो पहले इसमें नहीं था. Point number 7 to be added. Reverse the prefix string, prefix and return. What I'm saying that पहले रिवर्स करो और बाद में रिटर्न करो. तो ये जो आपका प्रीफिक्स है उसको रिवर्स करो और बाद में रिटर्न करना. डोंट फॉरगेट दैट. सो फर्स्ट रिवर्स इट एंड देन रिटर्न इट. ओके. हाँ, कुछ अभी कमेंट में उल्टा सीधा हो गया होगा. लेट मी जस्ट फाइंड आउट क्विकली. सो लाइन नंबर 136, someone is saying line number 136, if pop all operator from the stack append to prefix until closing is found. I guess it is clear, correct, no? 134. If opening is found, yes, that is correct. उसका parenthesis उल्टा हो गया, that is okay. वो मैंने word change कर दिया, parenthesis change करना रह गया. That's it. By the way, यहाँ पर point number 7 extra है. What is point number 7 extra है? Reverse the prefix and then return it. Okay, that is also done. And if it is also done, तो सर ये काम करेगा? I don't know. Let's see. ये काम करता है, नहीं काम करता है, whatever. So again, I'm saying that prefix is equal to infix to prefix. Infix to prefix. We pass infix to this, and we want to print that prefix as well. Okay. We want to print that prefix as well. Prefix as well. Right click, run as Java application. Oh yes, this is prefix. Is it correct? Is it correct? Yes, it is also correct. So as I said that the algorithm is pretty simple. It is just copy paste algorithm. There are a couple of changes. Let me quickly repeat the changes for you. आपको right to left जाना है. पहली चीज, यहाँ पर right to left जाओगे तो पहले closing आएगा, उसको stack के ऊपर push करेंगे. Opening आएगा, अगर opening आया तो जब तक closing नहीं आते तब तक सारे pop करेंगे और उनको append करेंगे. Finally वो जो closing था उसको भी discard करेंगे. As far as the priorities are concerned, ऑपरेटर आया तो उसको स्टैक के ऊपर पुश करेंगे, ऑपरेटर को पुश करेंगे, बट बिफोर दैट इफ द प्रायोरिटी ऑफ द टॉप मोस्ट इज ग्रेटर देन द प्रायोरिटी ऑफ द करंट, if it is greater than the priority of the current, if it is priority of the topmost is greater than the priority of the current, then append that.
take care of that. This is also done, and rest is everything is okay. Last another point, जो कुछ भी आपका prefix है उसको reverse करना और बाद में return करना, that is what all we need to take care. Nothing special we are doing over here. This is nothing but infix to prefix algorithm. Paperwork I'm leaving it as a homework for you. Algorithm मैंने लिख के दे दिया है, कमेंट में पूरा algorithm में लिखा हुआ है. Sarthak is asking the question, why do we have to reverse? Because if you do not reverse, you get the answer which is wrong answer. You can just check it if you are not sure. इसलिए तो मैंने पेपर वर्क, इसलिए तो मैंने आपको बताया था, you should be doing a paper work for that, so that you appreciate what exactly you get. Have a look at this, Sarthak. Sorry, अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करूंगा, अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करूंगा, you see the output that you get it. I hope Sarthak you check that. Ultimately the output that you are getting is ulta. सो पेपर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि यार ये प्रीफिक्स नहीं हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये एक्चुअली रिवर्स ऑफ इट है, एंड दैट इज द रीजन you need to reverse it and then you need to return it. Do it. I'm very sure you'll be able to get it. Nothing great. So infix to prefix, infix to postfix, and etc. That is done. I believe if it is done, it is absolutely fine. Let us take a break logically, and after the break, we can move on to the cues. Meanwhile, you have any questions? Feel free to post them. Welcome back. So I think stack and some of the functions of stack, it is like clear to you. Is it so? Good. To be frank, stack can also be used for one more, functionality. One more functionality, you already know that the basic applications of stack, you are well aware that basic applications of stack is used for the function activation records. That is the built-in stack. Another stack, just now we seen that infix to prefix or postfix conversion, it is used. Prefix or postfix evaluation, yes, stack is used. That is also okay. Apart from that, if you are looking for this one more actually purpose where the stack can be used, stack can also be used. Yes, undo redo kind of functionality is there. So for the undo redo functionality, control Z, control R, जो हम लोग usually करते हैं into the most of the editors, so that undo redo functionality that is also implemented using stack. Yes, any collection reversing, let it be string reverse, array reverse, linked list reverse, that can be always done using stack. But one more functionality we can also do, so like a parenthesis balancing. Parenthesis balancing मतलब आपने कभी नोट किया होगा, आपका जो कंपाइलर होता है, कभी कभी हम लोग कोई तो ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस हम लोग कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं, और जब हम लोग को ये कुछ तो पैरेंथेसिस में गड़बड़ कर देते हैं, करली ब्रैकेट ओपनिंग करली ब्रैकेट क्लोजिंग, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपको ढूंढ के बता देता है कि यू हैव मिस समथिंग लाइक दिस, आपने या तो करली ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट यू हैव मिस समवेयर. तो सर उसको किससे पता चलता है? या फिर अगर हम लोग कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन ले रहे हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस होते हैं, लाइक पैरेंथेसिस, अगर आपने कोई पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा डाल दिया है या आपने कोई पैरेंथेसिस कम डाल दिया है, तो सर वो भी उसको पता चल जाता है. इस एब्सोल्युटली उसको पता चल जाता है. तो उसको वो पता कैसे चलता है, और दैट कुड बी द क्वेश्चन. तो ये चेक करने के लिए भी इंटरनली स्टैक यूज होता है. उसका एल्गोरिथम आपको बताना चाहिए क्या, हाउ द स्टैक इज गेटिंग यूज्ड फॉर चेकिंग इनफिक्स, नॉट इनफिक्स, द पैरेंथेसिस बैलेंसिंग के लिए स्टैक कैसे यूज करते हैं. सो यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एल्गोरिथम? If you are interested in knowing the algorithm, then I need to go back and I need to first of all tell you that algorithm, and then we can come down to the queue, because otherwise it will be the mixture. So parenthesis balancing, I'm talking about this. So if my expression is something like this, and into the expression
if there are the parentheses of the different types. वैसे normally हम लोग normal parentheses लगाते हैं, but this is just for sake of example that there can be like opening, there can be closing. अब common sense है, जितने opening होंगे corresponding उतने closing होने चाहिए. You understand that? हर एक opening के लिए corresponding closing होना चाहिए. That is very much required. अगर opening के लिए corresponding closing नहीं होगा, then you can say that there is something going wrong. तो सर इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यस, 100% इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो अगर इसको हमको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करना है, तो प्रोग्रामेटिकली हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? आई सेड दैट नाउ दिस इज क्वाइट इजी, क्योंकि इसके लिए आपको दो शायद स्ट्रिंग्स मेंटेन करने पड़ेंगे. एक स्ट्रिंग ओपनिंग वाला स्ट्रिंग, आपको दो स्ट्रिंग मेंटेन करने पड़ेंगे, एक ओपन का स्ट्रिंग और एक क्लोजिंग का स्ट्रिंग. आई एम सेइंग दैट दो स्ट्रिंग मेंटेन करने पड़ेंगे. आप लोग दो एरे मेंटेन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो एरे या स्ट्रिंग वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओपनिंग और क्लोजिंग जहां पर उनके इंडेक्सेस रिलेटिव रहेंगे. रिलेटिव इन द सेंस आई एम सेइंग दैट अगर ये ओपनिंग है एट इंडेक्स 0, तो क्लोजिंग भी इंडेक्स 0 पे होना चाहिए. अगर ये ओपनिंग है एट इंडेक्स 1, तो क्लोजिंग भी इंडेक्स 1 पे होना चाहिए. और अगर ये इंडेक्स है, ओपनिंग का इंडेक्स है 2, तो क्लोजिंग का भी इंडेक्स होना चाहिए 2. एंड दिस वे यू कैन ट्राई टू अरेंज. अगर आपके पास और भी किसी टाइप के ओपनिंग क्लोजिंग है, तो आप लोग उनको भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो. इवन यू से दैट देयर इज ओपनिंग कमेंट एंड देयर इज अ क्लोजिंग कमेंट. जो सी के स्टाइल के कमेंट होते हैं, स्लैश स्टार इज लाइक अ ओपनिंग कमेंट, स्टार स्लैश इज लाइक अ क्लोजिंग कमेंट. तो आप लोग ऐसे केसेस में भी इसको कंसिडर कर सकते हो. आई एम सेइंग दैट अभी मैं सिंपल वाला कर रहा हूँ. लेट अस नॉट गो इनटू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पार्सिंग. सो कंपाइलर का लेक्सिकल एनालिसिस कैसे होता है, दैट इज नॉट अवर टॉपिक. हमारा टॉपिक है कि स्टैक का वहां पर यूसेज कैसे होता है. आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट पार्ट. तो व्हाट algorithm says? Algorithm says that you start accessing the string or the whatever expression is given, you go step by step. और अभी यहाँ पर आपको ऑपरेंड हमें कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है. only thing we need to understand that we are only talking about opening and closing. So if you find opening, see it carefully. If you find opening, put it onto the stack. If you find opening, put it onto the stack. If you find opening, put it onto the stack. If you find closing, listen carefully. If you find closing, see it carefully. If you find closing, just get the one opening from the stack. One opening from the stack. It's the closing. You get the opening from the stack. Find out the index of this. इसका index कितना है? 1 into the closing. Find out the index of this. इसका index कितना है? 1. If it is matching, it only means that इस opening के corresponding ये closing सही आया हुआ है. अगर ये सही आया हुआ है, तो इन दोनों को discard कर दो and continue further. You continue further. Again you find opening, you put it there. Again you continue further. Again you find opening, you put it onto the stack. So जहां जहां पर opening मिलता है, put it onto the stack. जहां पर closing मिले, तो क्या करना है? तो closing मिले, तो जो टॉप मोस्ट है उसको स्टैक से लेना है. इसका इंडेक्स ढूंढना है. अगर दोनों का इंडेक्स सही है, इसका मतलब वॉट एवर दैट दे आर मैचिंग टू ईच अदर. इफ दे आर मैचिंग टू ईच अदर, just discard them and you continue further. Again you get the closing. Again you get the opening corresponding over here. And again, if it is matching, yes it is matching, again discard them. Again you continue further. Again you get the closing. Very good. Again you get the opening. And again, if their indexes are matching, so this is again valid. That is good. At the end, ये भी at the end, so ये खत्म हो गया. Corresponding ये भी empty होना चाहिए. It is expected. ये भी empty होना चाहिए. तो जब आपका expression खत्म हो जाएगा, तभी empty होना चाहिए. अगर यहाँ पर कुछ extra अगर अभी भी pending है, इसका मतलब there are extra parentheses are there. और अगर किसी opening के corresponding क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, उसके पहले अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, इसका मतलब कुछ तो क्लोजिंग इज मिसिंग.
सो ऐसे करके हम लोग ये लॉजिक बना सकते हैं। यू गॉट द आइडिया? आई होप इट इज इजी लॉजिक। लॉजिक क्या है? जब जब ओपनिंग मिलेगा स्टैक के ऊपर डालो, जब जब क्लोजिंग मिलेगा, जब जब क्लोजिंग मिलेगा तब उसको पॉप करो, कंपेयर करो। इफ इट इज मैचिंग, इफ इट इज मैचिंग सिमिलर है तो आगे जाओ। अगर सिमिलर नहीं है, अगर सिमिलर नहीं है, या फिर अगर आपको कोई स्टैक के ऊपर स्टैक एम्प्टी मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो यू वांट टू प्रोबेबली थ्रो द एक्सेप्शन कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, काइंड ऑफ स्टफ। तो प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो हाउ डू यू राइट इट लाइक अ प्रोग्रामेटिकली? अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं एक्सप्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ, यही चीज आप लोग फाइल के लिए भी कर सकते हो। मैं एक स्ट्रिंग के लिए दिखा रहा हूँ, आप लोग फाइल के लिए कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीड द फाइल। आप लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर लो या फिर फाइल रीडर यूज कर लो, बेटर। सो फाइल रीडर यूज कर लो। यूजिंग फाइल रीडर यू कैन रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम। आई होप यू नो दैट रीड मेथड इज देयर। यू कैन रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम। सो एक एक कैरेक्टर रीड करो, एक एक कैरेक्टर रीड करो और उसको स्टैक के ऊपर डालते जाओ। तो अगर आपका कोई जावा के कोड का फाइल होगा, आपके कोई जावा के कोड का फाइल होगा, आपके पास कोई सीसी प्लस प्लस के कोड का फाइल होगा, अगर उसके ब्रैकेट्स ओपनिंग क्लोजिंग मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप आराम से वहां पर चेक कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्टैटिक boolean is balanced, is balanced, and I'm saying that there is some expression that I'm sending it over here, some expression that I'm sending it over here. And what is the logic? The logic is that traverse expression from left to right, left to right. Very good. If opening is found, if opening is found, push on stack. Okay, that is good. If closing is found, क्या करना है? Any type of closing is found, then what is to be done? Pop, pop one from stack. Compare, compare if they are matching, matching, correct? And if not, if what is that? If yes, if yes, continue, continue on to the next one, continue with the further expression. If not matching, if not matching, it means that यहाँ पर कुछ तो mismatch है. I can say that what is that? Return false. You can simply say that return false. It is possible. Go ahead. When whole expression is completed, when whole expression is done, if stack is not empty, if stack is not empty, simply say return false. Else, और इधर उल्टा लिखते हैं, if stack is empty, if stack is empty, return true, or else return false. Now that is what all we can do. So it is such a simple straightforward algorithm to implement. अब सिर्फ उसके अंदर आपको क्या आना चाहिए, ये जो इंडेक्सेस कंपैरिजन है उतना आपको सिर्फ स्ट्रिंग आना चाहिए, बाकी और कुछ भी स्पेशल नहीं है. So you can just quickly go there and we can think of writing it. So for integer I is equal to 0, I is less than, I is less than expression dot length. Expression dot length, I'm saying I plus plus. Okay, that is going good. All right, all right, all right, done. So the first part is done. Huh. The second part, if opening is found, okay, let me just check the character. जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही ले रहे हैं. Symbol is equal to expression dot character at the given index. Okay, and if symbol is equal to opening, ये opening तो लेकिन हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास अलग अलग टाइप के opening हो सकते हैं. Okay, तो let us just mention it. ये opening हमारे पास कौन कौन से possibilities है? हमारे possibilities of opening है parenthesis, rectangular bracket, curly bracket. मुझको ये तीन वाले में इंटरेस्ट है. और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग है वो भी कुछ ऐसे है. लेट्स से एग्जैक्टली यहाँ पर सिंटैक्स व्हाट इज दैट, ऑर्डर मैटर करेगा. जिस ऑर्डर में ओपनिंग लिखे उसके एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में आप लोग क्लोजिंग लिख दो.
अब मुझको सबसे पहले ढूंढना है ये जो सिंबल है, दैट सिंबल इज नॉट नेसेसरी ओनली दिस। सो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो, इफ इट इज ओपनिंग और इफ इट इज ओपनिंग और इफ इट इज ओपनिंग, ये आप लोग ऐसी उठपटांग हरकतें जरूर कर सकते हो। सो आप लोग मल्टीपल चेक्स करने हैं, इज इट पॉसिबल? इट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन उससे कोई आसान तरीका है? इज देयर एनीथिंग बेटर वे? आई कैन सिंपली से दैट यहाँ पर ओपन डॉट, इसके अंदर कोई सर्च या ऐसा कोई ऑप्शन है? Yes, you actually find that it is a function available called as a contents. एक contents से हमें पता चल सकता है, contents से हमें ये पता चल सकता है whether it is opening or not. Whether it is opening or not, ये हमें यहाँ से पता चल सकता है. So we can simply say that if it is opening, you can search directly over there. So ये function है. वैसे और कोई function है क्या? Let me just check it. जो आपको opening check करवाएगा. So regular expression भी है. Starts with characters, okay, that is all right. Compare to is there, get bytes is there, index of is also there. So using index of also we can have a check there कि whether it is matching or not matching. अगर वो match हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, अगर match नहीं होता है तो probably it is returning you -1. I'll prefer the index of क्योंकि मेरे को सीधा सीधा character देना है, so I'll prefer that. So index of symbol, if it is index of symbol, if it is if it is not equal to -1, if the symbol is not equal to -1, what is the meaning of this? इसका मतलब ये है कि ये मिल चुका है, opening is found. If opening is found, what is to be done? Push it onto the stack. Okay, you are saying that you push it onto the stack, then let me go ahead and let me push it onto the stack. Let me push it onto the stack. S dot push, S dot push. Oh, I pushed it onto the stack. But what is next? If closing is found, if closing is found, how do I check there? Else, else, if closing is found. So closing is found, how do you check that? I want to just again take an index of that. Again, I want to take an index of that, and I'm simply saying that if it is not equal to, inside closing we are checking, inside closing, if it is not equal to -1, what is to be done? Okay, I want to see whether we want to pop one from the stack. If closing is found, pop one from the stack. Let me just take it there and let me write it over here. If it is found, pop one from the stack. How do I pop one from the stack? Oh, that is very easy. So let me write it one more character over here. Character, let's say, what is that? Popped is equal to s dot pop. I got the popped one. अब ये जो popped one है उसका index क्या है ये मुझको ढूंढना है. Let us go ahead, compare if they are matching, if they are matching. So how do I compare if they are matching? Let me just go ahead and check it. अब ये जो pop किया हुआ उसका index और ये जो है इसका index. So I'm simply checking it. If open dot open dot index of जो पॉप किया है उसका इंडेक्स, सीड केयरफुली, पॉप किया है उसका इंडेक्स और जो करंट है उसका इंडेक्स, और जो करंट है उसका इंडेक्स, इफ इट इज नॉट इक्वल, इफ इट इज नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग आपके मैच नहीं हो रहे हैं, और अगर ओपनिंग और मैचिंग नहीं हो रहे, सिंपली से रिटर्न फॉल्स, सिंपली से रिटर्न फॉल्स. अदरवाइज इफ इट इज मैचिंग, देन वैसे भी वो कंटिन्यू होने वाला है. इट विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, इट विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ अ लूप. नथिंग एक्स्ट्रा दैट यू नीड टू डू इट ओवर हियर. दिस इज आल्सो डन एट द एंड. जब हमारा पूरा ये खत्म हो जाएगा, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है. सो आई कैन सिंपली से दैट एस डॉट इज एम्प्टी. सो अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है. एक और चेक शायद रह गया. देयर आर क्वाइट गुड चांसेस देयर कैन बी द वन एक्स्ट्रा वन. हम लोग यहाँ पर पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इफ नथिंग इज अवेलेबल देन, हम लोग पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो इसका मतलब ये है शायद आपका कोई तो ओपनिंग मिसिंग था. अगर आपका कोई तो ओपनिंग मिसिंग था, सो यू फाइंड दैट इफ stack is empty, if the stack is empty, इसका मतलब है कि some opening is less, some opening parenthesis is less, and in that particular case, so you can again checking over here if
stack is empty in this particular case, again you can say return false. खत्म हो गया. This code will ensure that कि आपका parenthesis इसका balance, is it a balanced one, is it parenthesis balanced, मतलब सारे opening के लिए corresponding सारे closing दिए हैं क्या, कोई अगर extra है कोई नहीं है, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा. I'll take up example. I'll take up example. इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं, so that we can quickly check. We can quickly check boolean and you simply say balanced is equal to infix is balanced. You pass the expression. Let's say I'm passing like a infix expression and I want to check whether it is balanced or not. I say that balanced is true or false. True or false. Let's go ahead, right click, run as Java application. And it is saying that yes, it is balanced. What if, if there is a kind of extra parenthesis, take a look at this. If there is an extra parenthesis, probably it is saying that no, it is not balanced. What if there is extra opening parenthesis, there's an extra opening parenthesis, again it is saying that no, it is not balanced. And what if the it is balanced, but for the opening there is not corresponding closing, ये opening है और corresponding closing उल्टा है. In this particular case, again it is saying that sorry, it is not still balanced. तो जो possibilities थे वो सारे possibilities मैंने आपको यहाँ पर check करके दिखाया. So you find that the basic algorithm is very simple. I know that आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे होता होगा और it is very common कि जब तक algorithm on paper चल रहा है, so that looks very good sir, it is very simple, but moment you start writing code हमको कुछ होता है, right? So there is a possibility. और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, then nothing to worry, it is normal. It is all about, yes, a lot of people are immediately like that, sir ये सही बात है, so we agree with this. See, now it is all about like practice कि आप लोग कितना कोड लिखते हो, कितना कोड आप लोग खुद से टाइप करते हो, सो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ like more and more code that you have typed by yourself, you are like more and more comfortable. इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और इसके लिए आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, यू टाइप मोर एंड मोर कोड. वर्स्ट केस आई ऑलवेज से दैट इवन दूसरे का कोड पढ़ो, समझो, उसको बाजू में रखो और खुद से कोड टाइप करो. I guess so people keep asking me, sir, how do we improve the coding? How do we improve the coding? My answer is very simple. पहले तो पेपर वर्क करो, 10 बार करो, 15 बार करो. जब तक पेपर के ऊपर आपको एल्गोरिथम पूरा क्लियर नहीं होता, तब तक कोड लिखने की कोशिश मत करना. तब तक कोड लिखने की कोशिश मत करना. So once your whole algorithm is clear, then you write that code in an English language. वैसे टू बी फ्रैंक यही स्टेप्स तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ. यू राइट योर कोड इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉट एवर, एंड वंस यूर रिटर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू ट्राई टू कम अप जो इंग्लिश में आपने लिखा है उसको करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करते जाओ. तो सर अगर हम लोग ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं सर, लेकिन हमारा गलत हो जाता है, कोई बात नहीं. अगर आपका गलत हो जाता है, इफ इट इज नॉट वर्किंग, देन गो बैक, रेफर माई कोड. अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, क्या आपने इंग्लिश में कोई गड़बड़ कर दी या फिर कोड में कोई गड़बड़ कर दी? जो आपने गड़बड़ कर दी है, गो बैक एंड देन कंटिन्यू फर्दर. सो आई गेस दैट इज सिंपल. अमित का कुछ क्वेश्चन है. इट विल फाइन if we get the logic but write code as it is, if we get the logic but write code as it is, see you can always copy paste my code will always work, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सी, एज फार एज डेटा स्ट्रक्चर मॉड्यूल इज कंसर्न, मॉड्यूल तो आपका क्लियर हो जाएगा भाई. इवन यू नो आपने मेरा कोड एज इट इज छाप दिया तो भी आपका मॉड्यूल तो क्लियर हो जाएगा. लेकिन जो आप लोग कहते हो, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्फिडेंस आइडियली तब बनता है जब आप लोग खुद के कोड लिखते हो, खुद समझ के खुद से बिल्ड करते हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग डायरेक्टली इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का कोड खुद से लिखो, कोई जरूरत नहीं है. पहले छोटे छोटे जो लिंक लिस्ट इज आइडियल इन दैट केस. आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट लिंक लिस्ट को ले लो, वो जो दो लाइन के कोड होते हैं, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, रिवर्स के पीछे भी मत जाओ, वो दैट इज फैंसी. जिन लोगों का हालत बहुत खराब है, उन लोगों ने वो जो छोटे छोटे कोड है उसके डायग्राम ड्रॉ करके उससे खुद के कोड बनाने चाहिए. एज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, मुझको पता है, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी ये टाइम इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, सो दैट यू गेन अ कॉन्फिडेंस. और वैसे वी आर प्लानिंग फॉर द होल करियर इनटू द आईटी इंडस्ट्री.
तो आप लोग, आई एम वेरी श्योर यू पीपल आर प्लानिंग, नहीं सर जिंदगी भर बैठ के कोड लिखना है, जिंदगी भर बैठ के अगर कोड लिखना है तो देयर इज नो हार्म, जस्ट फाइंडिंग लिटिल टाइम, करेक्ट, फाइंडिंग लिटिल टाइम एंड मेकिंग योरसेल्फ कंफर्टेबल, मेकिंग योरसेल्फ कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं कोड कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। हम लोग ऐसे, एक मैंने कहीं पर तो सुना था, ऐसी कहावत है कि अगर आपको पेड़ काटने अगर आपको पेड़ काटने हैं, it is always good idea to invest little time sharpening your axe. So first sharpen your axe, make it ready, and then invest your time in the cutting. So you'll find that your cutting time will be reduced. That is the same story. Abraham Lincoln. Yes, thank you. और कोई तो क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वरी सिंह दैट आपने फर्स्ट टाइम किया था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस भी वैसा ही था। आई एम नॉट एनीवे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, आई एम लाइक अ, इनफैक्ट आई एम अ स्लो लर्नर, आई नो दैट, आई एम अ स्लो लर्नर। यूजुअली कोई भी टेक्नोलॉजी में पहली बार पढ़ता हूँ, आई टेक माई ओन टाइम, और मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कहाँ पर जाना है, कहीं नहीं जाना है, सो आराम से पढ़ता हूँ। But obviously, I just spend time. I still recall that there are like certain programs that I had done earlier, and some stupid program I spent more than 6-7 days working on a same program. एक एक प्रोग्राम के लिए 6-6 7-7 दिन आई हैव इन्वेस्टेड इट। आई एम वेरी श्योर ओनली प्रॉब्लम सिर्फ आप में और मेरे में एक ही प्रॉब्लम, एक ही डिफरेंस है कि आपको, यू पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब इन 6 months एंड आई वाज नॉट रियली लुकिंग फॉर अ जॉब। ये मैंने तब पढ़ना चालू कर दिया था जब मेरे को जॉब की जरूरत नहीं थी, तो मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोई इंटरेस्ट इन द सेंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करियर करना है ये भी डिसाइड नहीं किया था। हाँ, यस यू हैव लेस टाइम, दैट इज द रीजन, दैट इज द ओनली थिंग आई एम टेलिंग यू। आप में और मेरे में एक ही डिफरेंस है कि यू पीपल आर लाइक हेवीली प्रेशराइज्ड कि अभी यार ये खत्म करना है, 2 महीने में खत्म करना है, और उसके बाद में जॉब के लिए भी जाना है वगैरह वगैरह। बट स्टिल, सो आई एम नॉट अगेन एक्सपेक्टिंग यू कि यू बिकम लाइक एज एक्सपर्ट एज मी, but still to gain even the minimal confidence, the basic efforts has to be done in place. इसलिए तो हमको अब बड़े बड़े प्रोग्राम मत लिखो, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखो। तो वो आपका प्रॉब्लम क्या है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, वो आपको लगता है यार ये तो मेरे को आता है, इसमें मैं क्यों लिखूं? सो यू, समवन इज एक्सप्लेनिंग यू ये एड फर्स्ट, तो आप उसको ए चुप रहे, एड फर्स्ट मेरे को आता है, यू डोंट वेस्ट माय टाइम, तू रिवर्स वाला बता मेरे को। अरे एड फर्स्ट तेरे को आता है, वो तूने मेमोराइज कर लिया है। आई एम नॉट मेमोराइजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट गो अहेड, draw the diagram, come up with your own code, type your own code, see if it is working. सो आपको आता है नहीं आता ये बात नहीं है, लेकिन आर यू एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड टू एंड, राइट फ्रॉम ड्राइंग डायग्राम till coming up with the code and then compiling it, executing it, getting correct output. So I'm saying that जो कोड आपको आते हैं, not by memorizing, सर ने कोड लिखा था, सर ने while loop लिखा था इसलिए हमने while loop लिखा, सर ने कंडीशन लिखा था ट्रैविस नॉट इक्वल टू नल इसलिए हमने लिखा ट्रैविस नॉट इक्वल टू नल। दैट वे अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो। डू नॉट मेमोराइज, डू नॉट मेमोराइज। सी दिस इज अ ट्रिक एंड आई एम सेइंग दैट अगर आप लोग आधे, क्या कहते हैं इसको, जितने प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसमें से अगर आधे प्रोग्राम भी आप लोग कर लेते हो, यू कैन डू अ लॉट, यू कैन डू अ लॉट, यू विल बी गेनिंग अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस। उसके आगे वाला जर्नी ज्यादा आसान है। एनीवे, बिल्डिंग ओन कोड अलग ही खुशी देता है। यस एग्जैक्टली, तो जिसको, सी आई ऑलवेज सी दैट प्रोग्रामिंग इज एडिक्शन, programming is addiction and it is very dangerous addiction. So once you are addicted, then probably you find that अरे अब मुश्किल है। मैं आपको सिर्फ किस्सा बताता हूँ, यूजुअली ऐसे मेरे साथ होता है। आई डोंट नो व्हाट यू पीपल डू व्हेन यू आर वेरी मच डिप्रेस्ड। वैसे जिंदगी में ऐसा टाइम आता है व्हेन यू आर वेरी मच डिप्रेस्ड, व्हाट डू यू यूजुअली डू? आई एम वेरी श्योर यू आर लाइक लिसनिंग म्यूजिक, you are like just going out, spending bike ride, okay, that is great, so it is fantastic, or go to bed and sleep, oh this is also a very good thing that you do. Play the games, oh that is again, that is great. Watch a movie, that is again a great idea. Usually मैं उल्टा होता हूँ, so like when I'm too much depressed, I take a new data structure and I start learning that data structure. सर उससे क्या होता है, that your brain get engaged into those algorithms, and your brain get engaged in algorithm, you generate the code, and then you find that oh the things are like going good. Trust me, मैंने ऐसे बहुत बार किया है। आज तक मेरा एक भी मैंने कोड में कहीं पर स्टोर करके नहीं रखता हूँ। सो जो भी कोड है वो है। अभी कभी मेरे को ऑफिस से आज बहुत बोर हो रहा है या बहुत परेशान है, क्या करो,
ऐसा कोई तो डेटा स्ट्रक्चर ले लो जो आपका वीक डेटा स्ट्रक्चर है, जो आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एट। सर लिंक लिस्ट तो भी मेरे को ऑलमोस्ट बाहर हो गया है इतनी बार पढ़ा पढ़ा के, लेकिन जिसमें लाइक कोई तो भी अजीबोगरीब, लेट्स से सर डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम है, वो ऐसे भी याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, फिर से एक बार निकालो, फिर से डायग्राम ड्रॉ करो और फिर से एक बार कोड बिल्ड करने की कोशिश करो। फॉर सम टाइम योर ब्रेन गेट एंगेज्ड, उतना काफी होता है। एनीवे, सो यू शुड नॉट बी इंटेलिजेंट, यू शुड बी पैशनेट, दैट मेक्स ट्रिक। एनीवे, जाने दो, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं। लेट अस गेट बैक एंड वी विल टॉक अबाउट समथिंग लाइक अ क्यूज। हम लोगों ने स्टैक के बारे में बात की, वी विल गो ऑन टू द क्यूज एंड विल टॉक अबाउट क्यूज 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 क्यूज। ये रहे आपकी क्यूज। वाह, सो stack is an abstract data type, even queue is an abstract data type. Okay, that is good. Stack is an abstract data type, the queue is also abstract data type. So we have got like a push or entering the value into the queue, pop removing the value from the queue, peek checking the topmost element into the queue, is empty, so checking whether the queue is empty or not. और अगर आप लोग array से implement कर रहे हो, अगर आप लोग array से implement कर रहे हो, then there is a full condition also. So let us just go ahead and let us see how we can implement a queue. How we can implement a queue that is in front of you. Let us consider that I have got an array. I have got an array, और हम लोगों ने शायद लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? क्यू में जब भी ऑपरेशन होते हैं तो दो एंड से होते हैं, एक एंड से ऐड होता है और एक एंड से डिलीट होता है। तो जिस एंड से ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? समवन रिकॉल? जिस एंड से ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? जिस एंड से एलिमेंट पुश होता है यू कैन कॉल इट द रेयर एंड, और जिस एंड से एलिमेंट डिलीट होता है यू कैन कॉल इट द फ्रंट एंड. If we have got rear end and we have like a front end. Okay, good. So we have got rear end, we have got front end. You take time. Let's say 2 मिनट रुको, यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ, and so that I can start with the -1. Initially I can call, let's say this is a front end and rear end, both are -1 both are -1 you want to add the element, ये दोनों -1 है, और जो एडिशन करना है वो हमेशा रेयर एंड से ऐड करना है। अगर आपको रेयर एंड से एलिमेंट ऐड करना है, हाउ डू ऐड इट? यू गो अहेड, रेयर एंड को प्लस प्लस करो एंड यू कैन ऐड अ एलिमेंट देयर. ओके, दैट इज गुड. And you want to add one more element, you again say rare plus plus, you can element there. और अगर आपको और एक एलिमेंट ऐड करना है, go ahead, you can simply say rare plus plus and you can add an element there. It's pretty simple. So I'm saying that you can begin with the initialization, where for the array you can have some allocation. You can make front is equal to -1, and you can also make rear is equal to -1. But while pushing the element, logic is pretty simple. You need to simply say rare plus plus, and then ARR of rare is going to be the new value that you want to add it. But that looks good. So you want to add one more element. You go ahead. I want to add one more element. 30 is 40. I want to add one more element. Continue further. 30, 40, 50. Okay, that is also good. I want to add one more element. 60, rare plus plus 60. I want to add one more element. Take a look at the diagram. I want to add one more element. I want to add one more element. What is to be done? Or not possible, because my queue is full. When the queue is full, when that queue is full, where rare is equal to max -1, yes, or size -1 you can say. So when rare is equal to max -1, I can say that queue is full. Queue is full. Okay, let us just go ahead. Let us say that currently I am over here, or currently I am over here, and let's say that I have added the element 10, 20, 30, 40. Let us go ahead. I want to delete element. अब अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो, मेरा इफेक्टिव क्यू कहां से कहां तक है? इफेक्टिवली क्यू इज फ्रॉम फ्रंट प्लस 1 टू रेयर. Effectively my queue is from front plus 1 to rear. Effectively queue is from front plus 1 to rear. Take a look at this. So if you want to delete element, what you need to do? Go ahead, just say front plus plus. If you just say front plus plus, as good as this element is deleted,
and then your q left with this, left with this. Please note that आपने insert करते वक्त कैसे insert किया था, 10 20 30 40. डिलीट करते वक्त पहला कौन सा डिलीट हुआ, डिलीट करते वक्त पहला कौन सा डिलीट हुआ, ओ पहला तो 10 डिलीट हो गया. दैट इज वेरी सिंपल. तो जो पहले अंदर आया था वो पहले बाहर जा रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं लाइक अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ओ दैट इज ग्रेट. चलो एक और डिलीट करना है. Again say front plus plus. As you say front plus plus, this is as good as deleted, and your queue left is only 30 40. So जिस order में in किया था exactly उसी order में out हो रहा है. So the pop logic is as simple as front plus plus. Let me pop one more. Let me pop one more. So I just deleted this one as well. I deleted this one as well. So this is gone. And I want to delete one more. I want to delete one more. So I deleted this one as well. I deleted this one as well. And then I want to delete one more. I want to delete one more. Oh, queue is empty. Can you please tell me when queue is empty? When your queue is empty, yes, I understand that the front is equal to rear makes my queue as an empty queue. Okay, that is good. And what about peak logic? What about peak logic? Peak का logic क्या है? Just go back. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, it was something scenario like this. At this moment हम लोग किसको डिलीट कर रहे हैं, हम लोग फ्रंट के आगे वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं. द करंट फ्रंट इज ऑलरेडी डिलीटेड. सो करंट फ्रंट जहां पर है वो ऑलरेडी डिलीटेड है, उसके आगे वाला जो है वो हमको डिलीट करना है, वो आगे वाला जो है वो हमको डिलीट करना है. सो एब्सोल्युटली इट कुड बी एज इजी लॉजिक एज रिटर्न ARR ऑफ फ्रंट प्लस वन, ARR ऑफ फ्रंट प्लस वन. दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. और कुछ करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली कुछ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो we have got init method, we have got push method, pop method, pick method, is full method, is empty method. So sir, this is going fantastic. Yes, it is going fantastic, but it also has got some problems. It also has got some problems, and let me show you the problems. मैं आपको इसके प्रॉब्लम भी बताने की कोशिश कर रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन नाउ. Pay attention. Let's say that we have got this is front and this is rear. See it carefully. See the problem now. Now I'm trying to tell you what are the issues with this. This is like a front, this is rear. Again, I want to add the element. How do you add the element? बोलो फिर से एक बार. कोड आपके सामने ही है. क्विक रिवीजन चल रहा है. I want to add the element. How do you add the element? Go ahead. Rear को plus plus करो. Rear को plus plus करो. You add the element. Very good. I want to add one more element. Go ahead. You want to add one more element. Again rear को plus plus करो. You add the element there. आपको और एक एलिमेंट ऐड करना है. यू कंटिन्यू फर्दर. रेयर प्लस प्लस यू ऐड द एलिमेंट. और एक एलिमेंट ऐड करना है, रेयर प्लस प्लस एंड बस, बहुत हो गए. सो आई हैव एडेड 4 एलिमेंट्स. टेक अ लुक एट दिस. माय क्यू इज लुकिंग गुड फ्रॉम फ्रंट प्लस 1 टू रेयर. द नेक्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड इज ओवर हेयर. जो फ्रंट के आगे वाला एलिमेंट है ये मैं डिलीट कर सकता हूं. आई अंडरस्टैंड दैट. एंड इफ आई अंडरस्टैंड दैट, सी इट केयरफुली. लेट अस गो अहेड एंड पॉप द एलिमेंट. How do I pop the element? Or to pop the element, yes, it is hardly front plus plus, nothing else is to be done. You continue further. Again say front plus plus, nothing much to be done. Is that all right? Just say front plus plus, nothing much to be done. So it is good. How many elements I have deleted so far? 2. I have added 4 elements. I deleted 2 elements. Okay, that is good. Let me add few more elements. Let me add few more elements. Please help. एलिमेंट और ऐड करना है. आई वांट टू ऐड 50 60. हाउ डू ऐड 50 60? अगेन रेयर is to be set plus plus. You add the element into this. Again rear has to be set plus plus. Again you add the element into this. But wait, I want to add one more element into this. I want to add one more element into this. You say that your rear it is, you find that it is full. So why it is full? The condition says that it is full. Please pay attention. Your condition says that it is full, but my diagram is able to tell me that there is very well
there are two places available over here. There are two places available over here, and that two places are not getting utilized properly. That two places are not getting utilized properly, and this is a kind of a drawback of this type of queue, what you call it, the linear queue. So what is the linear queue? The linear queue is one, I say that the memory improper proper memory memory यूटिलाइजेशन, आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और ये सबसे काइंड ऑफ यू कैन से इट्स अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज द रीजन टेल लेट मी टेल यू टेक्निकली, लीनियर क्यू ये प्रैक्टिकली कहीं पर भी यूज नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, ये बुक में होता है इसलिए मुझको पढ़ाना पड़ता है। अगर मेरे को चॉइस दिया जाता तो मैं लीनियर क्यू कभी नहीं पढ़ाता, करेक्ट? तो लीनियर क्यू इज नॉट समथिंग, सर हम लोग कौन सी कंपनी में यूज करेंगे, किसी कंपनी में नहीं यूज करेंगे, किसी एल्गोरिथम में नहीं यूज करेंगे। डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू यूज लीनियर क्यू एनी टाइम इनटू द एनी रियल लाइफ कोड, एनी रियल लाइफ कोड, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो, अभी हमारे बुक में है, हमें लीनियर क्यू पढ़ना है, तो गो अहेड एंड लेट अस हैव अ वेरी क्विक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ लीनियर क्यू। Pallavi saying that we have to shift every element to the left while popping, or not necessary. अगर आप लोग उसको पॉप करते वक्त अगर आप उसको शिफ्ट करोगे, अगर आप लोग शिफ्ट करोगे, then you can definitely say that it's like a better utilization. But moment you do that shifting, Pallavi, I hope you realize that the time complexity will hamper. I hope you agree. अगर आप लोग हर बार उसको शिफ्ट करने लगोगे, then your time complexity will be hampering, and always you look for ideal time complexity to be O of 1, and that is the reason shifting is not considered to be a good solution, even though you will be able to manage the memory with that. So let's go back, file, new new java project. चलो आप लोग भी क्रिएट कर लो प्रोजेक्ट। अरे कहाँ पर गया, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, and what we are talking about like a linear queue. Okay, linear queue, finish. We have a linear queue. Inside linear queue, let's go ahead, let me create a class linear queue main. Okay, that is good. आप लोगों ने ऑलरेडी स्टैक बनाया है खुद का, तो जो आप लोगों ने स्टैक ऑफ खुद का बनाया हुआ है, यू फॉलो द सिमिलर कोड ओवर हियर। क्लास लीनियर क्यू, वहां पर हमने सिर्फ स्टैक कहा था, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं क्लास लीनियर क्यू। इन अ क्लास लीनियर क्यू, व्हाट आई नीड वन एरे, ये रहा आपका एरे, and you need two members, another rear and front member. All right, in a constructor, what do you want to do? In a constructor, what do you want to do? Definitely I want to initialize the memory, तो memory तो हम लोग initialize कर ही लेंगे, that is not a problem. But after that rear और front को क्या करना? Initially you can make rear is equal to -1 and even front is equal to -1, so that is -1, that is all right. So things are going well, it's not a problem. You continue further. Now you want to push the element. Okay, एक काम करते हैं, सबसे पहले empty और full का condition लिख लेते हैं. So boolean is full. I can simply check if the rear is equal to max -1. What is max -1? Length -1. If it is equal to -1, if this condition is true, it will return true. If this condition is false, it will return false. All we have done. You continue further. What about is empty? Is empty, आई गेस हम लोगों ने पेपर वर्क किया था, और वो पेपर वर्क से हमें पता चल गया था कि empty तब होता है when rear and front both are same. When both are same, then it is a condition of empty. Okay, that is good. अब बचे तीन फंक्शन, push pop pick. Let's go ahead. Public void push, and I want to push the element. I want to push the value. To push the value, logic was very simple. Rear plus plus a rear plus plus, and ARR of rear is equal to value. Oh, finish.
But what is a good idea? A good idea would be, I'll check it. If it is already full, if it is already full, please go ahead and throw the exception. Throw the exception. Please note this code is going quite parallel to the code that we have learned earlier, isn't it? So I'm simply saying that queue is full. ऐसे ही कोड हम लोगों ने स्टैक के अंदर भी लिखा था. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज गो बैक एंड टेक अ लुक एट दिस. So push, it is going well. You continue further. What about pop? A pop code is also very easy. The pop code, all I need to do is that simply say front plus plus or front plus plus. But again, pop tab karte hain when your queue is not empty. So is empty. If it is not empty, if it is not empty, just go ahead and throw that exception saying that queue is empty. All right. And what about how do you get the topmost element? You get the topmost element, you got a pick operation, you got a little pick operation, and is empty. Again, if it is not empty, then I can, and I'm just want to return the next element. मुझको फ्रंट को चेंज नहीं करना है, मुझको फ्रंट को चेंज नहीं करना है, मुझको सिर्फ उसका अगला जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न करना है. So I can simply say ARR of front plus one, that should be more than sufficient. Nothing extra need to be done. I hope this is pretty clear, pretty simple, pretty straightforward. And wait. अब मेन का प्रोग्राम जो है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं फिर से एक बार वो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फिर से लिखूं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट वो मेनू ड्रिवन वाला पार्ट मैं कॉपी पेस्ट करने की सोच रहा हूँ. पुश एंड पॉप एंड दिस एंड दैट. शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ लोग इसका नाम क्या कहते हैं, कुछ लोग इसका नाम ये लगते हैं, व्हाट इज दैट, एम क्यू डी क्यू. चॉइस इज योर्स. सो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है नाम में क्या रखा है. आर्किमिडीज एक बार कह के गए थे, राइट? सो वी हैव गॉट स्कैनर java.util. That is good. You continue further. I want to create a queue. Oh, by the way, sorry, linear queue. Linear queue. Creating object of a linear queue. Vishal, which line you have got problem? Feel free to tell. Why it is not empty? Common sense है. अगर empty है तो pop किसको करोगे? अगर क्यू के अंदर कुछ नहीं है तो फिर पॉप किसको करोगे? पॉप करने के लिए कुछ तो पहले क्यू में होना चाहिए. पिक करने के लिए, पिक मतलब क्या है? चेक द टॉपमोस्ट एलिमेंट. अगर टॉपमोस्ट एलिमेंट नहीं है, इफ इट इज, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, इफ इट इज एम्प्टी, सॉरी, if it is empty, if it is empty, then we want to throw the exception. If it is empty, then we want to throw the exception. Correct? If it is not empty, then we want to pop it, right? So that not is my mistake. Yes, Vishal. Thank you for letting me know. So I'm saying that if it is empty, just I want to throw the exception. I just want to throw the exception. If it is not empty, then I want to delete the element. If it is empty, I want to throw the exception. If it is not empty, then I want to see the topmost element. I hope Mega, you want to say the same, right? Right? Okay, no problem. ए by the way, बन गया है क्या? हाँ लग तो रहा है बन ही गया है. Let's see. ऐसे Q को S नाम देना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इसका नाम भी बदल रहा हूँ. Q को मैं Q नाम दे रहा हूँ. All right, this is done. And then you right click, you run as Java application. Let's see. Let us try to push the element. Let's say 10, second element 20, 30, और जिस ऑर्डर में हम लोग पुश कर रहे हैं उस ऑर्डर में पॉप होना एक्सपेक्टेड है. सो लेट मी से पॉप. अब क्या पॉप होगा? मैंने पुश करते वक्त 10, 20, 30, 40 ये पुश किया, तो अगर मैं पॉप करूंगा तो क्या आएगा? 10. यस आ रहा है. और एक बार पॉप करूंगा तो, और एक बार पॉप करूंगा तो यस इट इज 20. आई अंडरस्टैंड दैट. ओके, दैट इज गुड. लेट मी पुश फ्यू मोर. लेट मी पुश फ्यू मोर. लेट मी पुश 50. लेट मी पुश 60. अब क्या होगा? इफ आई ट्राई टू पुश वन मोर, will it work? If I try to push one more, will it work? Not really, क्योंकि 6 का array full हो गया है and now it is saying that oh queue is full. 10, 20 हमने already remove कर लिया था. 10, 20 हमने already remove कर लिया था. 30, 40 already queue में था. हमने 50 और 60 ऐड कर लिया और 6 का जो queue है वो already आपका full हो गया. It is exactly same diagram जो मैंने आपको draw करके दिखाया था, मैं भी यही follow कर रहा हूँ. बाकी मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ. Correct? And then you continue further. हाँ अशरफ,
take a look at this. Let me pop one more. If I'm popping one more, take a look at this. Currently scenario is like this कि front यहाँ पर है और this is the queue at the moment available. If I delete one more, can you please tell me what will get popped? अगर मैं एक और पॉप करूंगा तो क्या होगा? What will get popped? Which value will be popped? Yes, 30. Absolutely. Go ahead. 30 is popped. One more. One more. 40. One more. 50. अच्छा peak हो गया. Sorry, pop. And then this is pop 40, pop 50. Yes, good. One more. One more 60. Wait for a minute. If one more 60, right now, what happened? Even this is deleted, this is deleted, this is deleted, this is deleted, and somewhere front is reaching over here. If front is reaching over here, rear is already there. If I try to pop one more, if I try to pop one more, oh yes, queue is empty. And since queue is empty, I will get the exception. You find that saying that queue is empty. But wait for a minute. If I try to push one more, then if I try to push one more, then you take a look at the diagram, and then I'm saying that even rear is already at the end. So it is saying that, oh, queue is full also. So queue is empty also, and queue is full also. I'm saying that this is really stupid implementation of the memory, stupid utilization of the memory, and that is something you never want to look at. Something that you never want to look at. I guess Ashraf, you got the point. Ashraf, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? If your front is all at the end, then your rear is equal to front, so it will show you the empty. And that is the reason I'm saying that linear queue is not something that you ever want to use it into your actual production level code. तो सर ये प्रॉब्लम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? How do we rectify this problem? Rectify this problem, what I'm saying is that, take a look at this. Please take a look at this. What I'm saying is that to rectify the problem, अभी rear हमारा end में, a rear हमारा end में, and we cannot add the element further. We cannot add the element further, but I understand that there is the place available over here. यहाँ पर तो कुछ जगह बाकी है. अगर यहाँ पर कुछ जगह बाकी है तो मुझको क्या करना चाहिए? Ideally ये rear अगर at the end है, I should take it at the start. I should take it at the start, and then somewhere I'll be able to see that, oh, this is where I can add the element. तो मैंने क्या किया? I can definitely do like that कि rear जो end में था उसको हम लोग वापस से start में लेके यहाँ पर element add कर सकते हैं. But in this case, what I done? How I incremented my rear? I incremented rear from -1 to 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and after 5, I incremented back to 0. I incremented rear from this back to 0. And whenever you are doing this sort of increment, this is called as a circular queue. It's called a circular queue. What is circular queue? Circular queue वो होता है जहां पर आपका front and rear is allowed to be allowed to be incremented in a circular fashion. ये सर्कुलर क्यू को सर्कुलर क्यू कहते हैं. सर्कुलर क्यू को सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका फ्रंट और रेयर जो इंक्रीमेंट होते हैं वो सर्कुलर ऑर्डर में होते हैं. सो आई एम सेइंग दैट लाइक अ -1 एंड देन 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट रेयर का इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? रेयर का इंक्रीमेंट ऐसे हो रहा है, -1 to 0 जा रहा है, 0 to 1 जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, 2 to 3 जा रहा है, 3 to 4 जा रहा है, 4 to 5 जा रहा है, और 5 से वापस से 0 जा रहा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटिंग अ सर्कल. प्लीज नोट और याद रखना, इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, तो कुछ कुछ लोग कहते हैं सर वो सर्कुलर एरे, सर्कुलर क्यू जो होता है उसमें एरे ऐसे गोल होता है. एरे कभी भी गोल नहीं होता है. एरे हमेशा एरे हमेशा लीनियर ही होता है. एरे हमेशा कंटीन्यूअस लोकेशन ही होते हैं. आपकी रैम ऐसे कुछ क्या कहते हैं बेंड करके नहीं लगाई होती है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो योर रैम इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, योर एरे इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट एरे स्ट्रेट ही होता है. हम लोग उसको सर्कुलर क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि रेयर और फ्रंट
they can be incremented in a circular fashion. मैं फिर से बता रहा हूं, उसको सर्कुलर क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि रेयर एंड फ्रंट दे कैन बी इंक्रीमेंटेड इन अ सर्कुलर फैशन. नाउ यू आस्क द क्वेश्चन, तो सर इसको सर्कुलर फैशन में अगर इंक्रीमेंट करना है तो लॉजिक कैसे लगा सकते हैं? देयर आर टू वेज दैट यू कैन पुट अ लॉजिक. देयर आर टू वेज दैट यू कैन पुट अ लॉजिक. वे नंबर वन यू कैन ऑलवेज, अगर आपको रेयर प्लस प्लस करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो. इफ if rare is less than max, or rather if rare is equal to max minus 1, then you can make it rare is equal to 0, else you can say rare is equal to rare plus 1. तो आई एम सेइंग दैट जो आपका सर्कुलर इंक्रीमेंट है, सर्कुलर इंक्रीमेंट का कोड कोई बहुत फैंसी कोड लिखना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है. यू कैन ऑलवेज राइट सच अ सिंपल कोड whenever it come down to increment of the rare. तो जब भी रेयर को, नॉट ओनली रेयर, मैं इवन फ्रंट की भी बात कर रहा हूँ, तो जब रेयर को इंक्रीमेंट करना है, हाउ डू यू इंक्रीमेंट? नॉर्मल केस यू से रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1. सो मतलब क्या है, अगर वो -1 है तो +1 होके 0 होना चाहिए, 0 है तो +1 होके 1 होना चाहिए, 1 है तो +1 होके 2 होना चाहिए, 2 है तो +1 होके 3 होना चाहिए, 3 है तो +1 होके 4 होना चाहिए, 4 है तो +1 होके 5 होना चाहिए. आई एम सेइंग दैट ऑल द वे वी आर जस्ट फॉलोइंग द नॉर्मल केसेस. बट वेट, if if it is reaching max minus 1, ए max minus 1 मतलब मेरा अगर q 6 का है, मेरा q अगर 6 का है तो ये पांचवा एलिमेंट, ये मेरा लास्ट एलिमेंट है. और अगर ये मेरा पांचवा एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है, then what I need to do? After 5, I want to make it equal to 0. After 5, I want to make it equal to 0. That's it. That's it. So this is a way you can do the circular increment. बट यू नो, ये अप्रोच बिगिनर्स को शोभा देता है, और हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स दे आर मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स. यू आपको पता होगा, वो लोग M1 M2 M3 पढ़ के आते हैं, तो इतने बड़े मैथमेटिशियंस को ऐसा क्या कहते हैं, इफेल्स वाला कोड लिखना बहुत बार शोभा नहीं देता. तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि व्हाई नॉट टू पुट इन लाइक अ मोर मैथमेटिकल फैशन, more mathematical fashion. And the mathematical fashion, as you write the code, see it carefully, you can go ahead with like a more mathematical fashion, and I'm writing the same code something like this: rare is equal to rare plus 1 mod by max. A rare is equal to rare plus 1 mod by max. That's it. So sir, does it work in exactly same way? I said yes, even this is working in exactly same way. ये भी ऐसे ही काम करता है. सर ये ऐसे कैसे काम करेगा? You take a look at this. Suppose that max is equal to 6. A mathematicians, M1, M2, M3 experts, please pay attention. बाद में ये मत पूछना सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है. ये फॉर्मूला नहीं है. मैंने कहा ना, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं तो उनको ये ऐसे अच्छा नहीं लगता. इफ एल्स लिखो, बोले एक लाइन में लिखो सर, एक लाइन में लिखो, एक लाइन में लिख के दिखा रहा हूँ. पे अटेंशन, पे अटेंशन, बाद में कंफ्यूज मत होना. सो सिंपल मैथमेटिक्स. इफ योर आर इफ योर आर इज -1, व्हाट विल बी इट्स नेक्स्ट वैल्यू? वो हमको ढूंढना है. इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? ए पुट इन अ फॉर्मूला, -1 + 1 is 0, 0 mod by 6, 0 mod by 6 is 0. Do you know that? Very good. ए mod मतलब रिमाइंडर होता है. कंटिन्यू फर्दर. नेक्स्ट वन, इफ इट इज 0, ए 0 + 1, 0 + 1 is 1, 1 mod by 6 is 1, 1, 1 + 1 is 2, 2 mod by 6 is 2. Continue further. You is 2, 2, 2 + 1, 3, 3 mod by 6 is again 3. Continue further. Like you have got 3, 3, 3 + 1 is 4, 4 mod by 6 is 4. You continue further. 4 + 1, a 4 + 1, 4 + 1 is 5, 5 mod by 6, 5 mod by 6 is 5. Here comes the last line, 5. Have a look at this. It is a 5, 5 + 1, 5 + 1 is 6, 6 mod by 6, 6 mod by 6, 6 mod by 6, remainder is 0, and then again it becomes 0. I hope now it becomes circular. So from here, you again continue back and you complete the circle. If from here, now you again continue back and you complete the circle.
that is something that you can check it. Correct? तो सर विच वन इज बेटर कोड? ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है? मैं कहूंगा आपको जो समझ में आए वो अच्छा है, वॉट एवर दैट यू फाइंड इट कंफर्टेबल। जब आप लोग खुद से लॉजिक बिल्ड करते हो, खुद से लॉजिक बिल्ड करते हो, सर मेरे को यही क्या कहते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, गो अहेड एंड डू इट। सर मुझको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज यू नो आई एम इंजीनियर विद M1 M2 M3, गो विद दिस, चॉइस इज योर, जो समझ में आए जो अच्छा लगे टेक अप एंड फॉलो दैट। फिर से एक बार, व्हाई सर्कुलर क्यू इज कॉल्ड ए सर्कुलर क्यू? Why circular queue is called a circular queue? Why circular queue is called a circular queue? मैंने सर्कुलर क्यू का कोडिंग नहीं बताया, मैं आपको कंसेप्ट ही बता रहा हूं। इसको हम लोग सर्कुलर क्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारा रेयर और फ्रंट वो सिर्फ आगे आगे नहीं जा रहा है, इट कैन बी इंक्रीमेंटेड इन अ सर्कुलर फैशन। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दैट। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दैट। सो जब पूछा जाएगा कि सर्कुलर क्यू को सर्कुलर क्यू क्यों कहते हैं, सो एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू टेल इट वेरी क्लियरली कि वहां पर एरे सर्कुलर नहीं है, एरे तो नॉर्मली है, लेकिन उसके जो रेयर और फ्रंट ये जो है इसको हम लोग सर्कुलर फैशन में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नाउ जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है, लेट अस जस्ट रीड इट, लेट अस जस्ट रीड इट। ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं सिर्फ बता रहा हूं अभी आपको। इन लीनियर क्यू, when rare reaches last index, further elements cannot be added, even if space is available due to deletion of the elements from front. Thus, space utilization is poor. This is a problem of the linear queue. You continue further. Circular queue allows adding elements at the start of array if rare reaches last index and space is free at the start of array, and space is free at the start of array. So what I'm saying is that it reaches last index and space is free at the start of the array. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, करेक्ट? ये कैसे कर सकते हैं? Thus rear and front are incremented in a circular fashion. Circular fashion मतलब जीरो से लेके n-1 तक जाओ, and after n-1 you go back to zero. After n-1 you again go back to zero. That is something you do, and that is the reason it is called a circular queue. However, moment you do that, there is one small problem that you will face. What is that? The problem over is that queue full and empty conditions become tricky. So what do you mean by conditions become tricky? वो तो करने के बाद में, पेपर वर्क करने के बाद में क्लियर हो जाएगा, करेक्ट? सो कुलदीप, डोंट वरी, लेट अस डू द पेपर वर्क एंड लेट अस अंडरस्टैंड। प्लीज नोट, अभी तक मैं आपको सर्कुलर क्यू नहीं पढ़ा रहा था, अभी तक सिर्फ मैं आपको यही पढ़ा रहा था कि सर्कुलर क्यू को सर्कुलर क्यू कहते हैं। Now since you understood that circular queue को circular queue कहते हैं, let us go ahead and let us do bit of paperwork and try to visualize how exactly the circular queue can become, how it can work. Let us take a look at this and we will try to find out कि ये full कब होता है, let us try to find out ये empty कब होता है, ये जो possible permutation combinations है, ये सारे permutation combinations हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। Please pay attention. तो let's get started. तो सर ये नीचे आपने सर्कल वाला क्यों ड्रॉ किया है? ये कुछ-कुछ लोगों को विजुअलाइज करने के लिए सर्कल अच्छा लगता है, कुछ-कुछ लोगों को एरे अच्छा लगता है। आपको जो करना है वो करो, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, एरे गोल नहीं होता है, एरे हमेशा स्ट्रेट ही होता है, करेक्ट? नहीं तो सर आपने उसको बेंड कर दिया, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया है, अंडरस्टैंड दैट। तो लेट्स जस्ट गो अहेड, वी हैव गॉट रेयर एंड वी हैव गॉट फ्रंट। ए रेयर भी है, फ्रंट भी है। लेट अस कंटिन्यू फर्दर एंड लेट अस स्टार्ट एडिंग द एलिमेंट्स। लेट अस स्टार्ट एडिंग द एलिमेंट। मैं आपको पहले प्रॉब्लम बताऊंगा और बाद में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग से डिस्कस करेंगे। डू नॉट मिक्स अप एवरीथिंग, हम लोग आराम से जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। बहुत आगे आगे भागने की कोशिश प्लीज मत करना, आराम से पढ़ते हैं। हाँ, सो इंक्रीमेंट रेयर, you add the element. Increment rare, you add the element. Increment rare, okay, you add the element. Increment rare, you add the element. Okay, that is great. जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हाउ डू यू डिलीट द एलिमेंट? वो डिलीटिंग एलिमेंट इज वेरी सिंपल, इंक्रीमेंट फ्रंट as good as this is gone, increment front, and again this element is deleted. I want to still want to add the elements, or continue further. You want to still add the element, take a look at this, still add the element, increment rare, add the element, increment rare, add the element. I want to add one more element.
May I want to add one more element. May I? क्या ऐड हो सकता है यहाँ पर? एब्सोल्युटली, क्या करो, गो अहेड. अभी ये सर्कुलर क्यों है? सो लास्ट के बाद में, A5 के बाद में, make it once again 0 and try to add the element there. Okay, that is great. You continue further. Again you say rare plus plus and you can add even one more element. Take a look at this and tell me, can I add one more element? Can I add one more element? Not really. I see that the queue is full. A queue is full. When queue is full, you are able to see the diagram. When queue is full, you are able to see the diagram. The queue is full when the rear is equal to front. इसको सिर्फ याद रखना. मैं वापस से इसके ऊपर आऊंगा, कोड में अलग से लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां पर होता है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. जिसने प्रॉब्लम ही नहीं देखा है उसको सॉल्यूशन बता के क्या फायदा है. सो मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा रहा हूं. Let us continue further. Let's say delete the element. Let me delete the element. Let me delete the element. You increment this. This get deleted. You increment this. Oh, 44 is now deleted. Gone. You increment this. 55 is deleted. That is fantastic. You want to delete the element. Increment it. 66 get deleted. Okay, that is great. You want to again increment front. Look at this. Increment front. Even 77 get deleted. Let me delete one more. 88 get deleted. I want to delete one more. I want to delete one more. One more. I want to delete one more. What do you see? Oh, queue is empty. By the way, when queue is empty, see the condition? What is when queue is empty? Oh, again you are saying that front is equal to rear. अब राडा हो गया. सर फ्रंट इज इक्वल टू रेयर में क्यू एम्प्टी होता है या फुल होता है? Both are actually same condition, and this is something makes. Now this is the meaning of this line. This is the meaning of this line. However, q full and empty conditions become tricky. क्योंकि अब आप लोग कोड में कैसे लिखोगे? क्योंकि अगर आपने फ्रंट इज इक्वल टू रेयर लिखा, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर लिखा, तो उसको क्या लगेगा, यार ये तो फुल हो गया. और फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, वो उसको लगेगा ये एम्प्टी भी हो गया. अब थोड़ा सा राडा है. अब थोड़ा सा राडा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शायद मल्टीपल पॉसिबिलिटीज या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे. कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूं. हम लोग सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करके देखेंगे एंड वी विल डू इट वन बाय वन. Let me first talk about full condition. Let us talk about one thing at a time. Let us talk about one thing at a time. Let us not mix up everything together. Give me a minute. पहले मैं क्यू फुल की बात करता हूं. मैं क्यू फुल की बात करता हूं. और क्यू फुल we will discuss probably in two different ways. Pay attention. So मैं बात कर रहा हूं क्यू फुल की, क्यू फुल कंडीशन की. See it carefully. I want to add the element. How do you add the element? It is a very easy job. You people know that. A rare को प्लस प्लस करो, you add the element. Rare को प्लस प्लस करो, you add the element. Rare को प्लस प्लस करो, you add the element. Rare plus plus, you add the element. So you know adding logic is pretty simple. Rare plus plus, add the element. Rare plus plus, add the element. Now can I add one more element? Can I add one more element? Or not really possible? So not really possible. I can simply say that the queue is empty. Sorry, queue is full. It is a condition where I see queue is full. Yes, I am able to see that queue is full. Let us just continue further. Let us continue further and let us talk in this context. ये जो अगला वाला डायग्राम दिख रहा है, let us focus on to that. यही डायग्राम मैं यहाँ पर फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ. And let me tell you the second scenario. A 10, 20, 30, 40, 50, 60 and front यहाँ पर है, rear यहाँ पर है. Let's say that I have deleted 2-3 elements. ये 2-3 element delete करने हैं. How do you delete the element? How do you delete the element? Yes, you say front plus plus, front plus plus, this is gone. And you want to delete one more, front plus plus, and this is gone. And if you want one more, you can, like a this is deleted. Hey, wait for a minute.
अब let me add the element. Let me add the element. Let me add the element rare plus plus, a rare plus plus, I added 70, rare plus plus, I added 80, rare plus plus, I added, wait for a minute, something went wrong. 2 minute, 2 minute, 2 minute. Rare plus plus, and then you added even 90. Yeah, all right. And then again I see that the queue is full. I hope I am able to see that the queue is full. Are you able to see that? तो मुझको क्यू फुल यहां पर दो सिनारियोज में मिल रहा है. आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा है. सो क्यू फुल आई एम एबल टू सी इन टू डिफरेंट सिनारियोज. द सिनारियो नंबर 1, विल यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज सिनारियो नंबर 1 जहां पर क्यू फुल हो रहा है. आई कैन से दैट फ्रंट is equal to -1 and rear is equal to max -1. Am I correct? Is it valid? Front is equal to -1 and rear is equal to max -1. So this is a scenario which is telling me that the queue is full. The second one, take a look at this. What about this? The second condition. The second condition which is very clearly telling me that front is equal to rear. Second condition very clearly telling me that front is equal to rear. Front is equal to rear, and that is telling me that the queue is full. But wait for a minute. Wait for a minute. Just give me a minute. Give me a minute, and let me tell you. Tell me in this particular condition. In this particular condition, whether queue is full, whether queue is empty. In this condition, whether queue is full, whether queue is empty. Queue is empty. Have you noted something? Have you noted something? Have you noted something? Oh, front is equal to rear. एक बार अभी अभी आपने बोला था front is equal to rear का मतलब it is full. No, please understand that when both are at -1, both are at -1, we can say that it is empty. Both are at -1, we can say that it is empty. So what I'm saying is that if front is equal to rear and it is not equal to -1 and it is not equal to -1, तो वो इक्वल है लेकिन इक्वल -1 पे इक्वल नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों इक्वल है लेकिन -1 के ऊपर इक्वल नहीं है. देन आई कैन से दैट इट इज फुल कंडीशन. आर यू गेटिंग दिस? दोनों इक्वल है, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर है लेकिन वो -1 पे इक्वल नहीं है. देन आई कैन से दैट इट इज फुल. तो फुल होने के दो पॉसिबिलिटीज है. फुल होने की दो पॉसिबिलिटीज है. Possibility number 1, possibility number 1 that you see it there. Possibility number 1, left side वाला condition. Possibility number 2, ये right side वाला condition. This is a condition for Q full. And what is the condition for Q empty? So can you please tell me what could be your condition for Q empty? चलो बोलो फटाफट, अभी आपके सामने condition दिख रहा है. Oh yes, absolutely correct. You simply say that again rear is equal to front, rear is equal to front, but it is at -1. But this is at -1. आप फ्रंट को -1 लिखो, रेयर को -1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं कह रहा हूं कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन वो -1 के ऊपर जब दोनों सेम है, then I can say that my queue is empty. My queue is empty. That is good enough? Absolutely. Now, can you just quickly tell me the logic of push also? फटाफट अभी पुश का लॉजिक बता दो, अब भाव मत खाओ. What is the logic for push? What is the logic for push? Increment rear and add the element. It was very easy. But increment rear in a circular fashion. Don't forget that. So I can simply say rear is equal to rear plus 1 mod by max. हम लोग engineers हैं. Rear is equal to rear plus 1 mod by max, and simply say ARR of rear is equal to value. Do you believe that this is correct logic? Is it a correct logic? Yes,
पुश के लॉजिक में हमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, कोई भी बड़ा तीर नहीं मारना है। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉप के लॉजिक में एक छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व है, छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व है, प्लीज पे अटेंशन। पॉप के लॉजिक में एक छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व है। हाँ, यस, डेफिनेटली बेसिक पॉप लॉजिक इज स्टिल सेम। ए बेसिक पॉप लॉजिक हैज टू बी फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन मॉड बाय मैक्स। ए इसका भी तो सर्कुलर इंक्रीमेंट होना चाहिए। डेफिनेटली यू डू द सर्कुलर इंक्रीमेंट, दिस इज ऑलवेज देयर, ये तो होने ही वाला है। लेट अस टेक सम एग्जांपल, पे अटेंशन। लेट अस टेक सम एग्जांपल जहां पर मैं इसको करके देखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि व्हाट प्रोबेबली गोज रॉन्ग, or goes wrong in the sense not really wrong, but what you need to take care. This is front, this is rear, and let's say that I have added some elements. I've added some elements, let's say it's 10, 20, 30, 40. See it carefully, please pay attention. I'm deleting an element. How do I delete the element? How do I delete the element? Yes, front plus plus in a circular fashion. So front plus plus, and this element is gone. Okay, this is gone. Again, front plus plus, pay attention. Front plus plus, and this element is gone. Pay attention. Front plus plus, and this element is gone. Wait, फ्रंट प्लस प्लस, ये चौथा वाला मैं फ्रंट कर रहा हूं, सो वापस से फ्रंट प्लस प्लस एंड देन दिस एलिमेंट इज गॉन, and moment I deleted this element, I find that front becomes rare. Moment I deleted this element, I find that front becomes rare. But front becomes rare equal to rare, what is the meaning of this? अरे ये तो अपना कंफ्यूजन वाला कंडीशन है। कंफ्यूजन वाला कंडीशन कौन सा था? ये फुल है या एम्प्टी है? यस, ये वाला कंफ्यूजन वाला कंडीशन है। लेकिन हम लोगों ने एम्प्टी का कंडीशन क्या डिसाइड किया है? What is our empty condition? Our empty condition simply says that कि it is दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन -1 पे अगर इक्वल होंगे then and only then it is going to work. तो let us play a trick. Let us play a trick. When this is becoming equal, when this is becoming equal, make both of them again back to the -1. Make both of them again back to the -1. Make front is equal to -1 and make rear is equal to -1. This is something that you can do it. This is something that you can do it. The end, nothing extra should be done. So this is a trick to be played. क्योंकि अगर हम लोगों ने ये ट्रिक यहाँ पर नहीं प्ले किया तो वापस से कंफ्यूजन वो हो ही जाएगा, सर फुल कब होगा, एम्प्टी कब होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन आई एम डिलीटिंग एलिमेंट, आफ्टर डिलीटिंग ईच एलिमेंट आई एम चेकिंग कि जो डिलीट किया था वाज दैट द लास्ट एलिमेंट। अब जो डिलीट किया था इन अवर केस दैट 40 वाले केस में, if that was the last element, then I understand, oh, it was the last element, so immediately just make front and rear is equal to -1. And if you make that front and rear equal to -1, I can simply say that अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एम्प्टी का कंडीशन हम लोगों ने फ्रोजन कर दिया, इट इज फ्रंट इज इक्वल टू रेयर एट -1, और फुल का कंडीशन फ्रंट इज इक्वल टू रेयर बट नॉट इन -1। Is this clear to everyone? So all permutation combinations that we have talked about, now it's only time to go back and type the code quickly. Go back and type the code quickly, and it can be simply even a kind of copy paste kind of code. It should be, let me just go back and let me create a new project. File, new, Java project, good, next, and you are calling it as circular queue. Next, finish. All right, yes, we have got circular queue, and inside circular queue, let me create a new package, and inside package ये जो linear queue का कोड था मैं literally copy paste कर रहा हूँ, not to waste time in typing each and every line once again. I just call it as a circular queue. All right, now it is circular queue. Let us go back and do the necessary changes in a circular queue. Let us do the changes in a necessary changes in a circular queue. It is not linear queue. You are calling it as like a circular queue. Okay, you call it a circular queue. So linear queue को मैंने circular queue में convert कर दिया, and let us go there
and start writing a code one by one. How you're talking about condition. So what is your condition? Condition of full. जो सबसे मुश्किल वाला था वही से शुरुआत करते हैं. What is the condition? The front is equal to front equal to minus 1 and rear is equal to max minus 1. Max minus 1. This is like one condition in which you are saying that Q is full, or the second possible condition जहां पर हम लोग कह रहे हैं front is equal to rear but not at minus 1, not equal to minus 1, like another one कि this space I can say that yes, Q is full. Okay, that is good. Second thing, what about empty condition? Empty condition is again same. The front is equal to rear. A front is equal to rear, but the front is equal to rear at equal to minus 1. A front is equal to rear at minus 1. This is nothing but the empty condition. चलो ये भी अपनी जगह पे आ गया है, not a problem. You continue further. What is the logic of push? Well, logic of push was very simple. Rear, you want to increment it in a circular fashion. So arrow dot length, and then you add the element there. It's very easy. Pop condition, that was like a tricky one. The front is equal to front plus 1 mod by arrow dot length, and after you incremented front, you want to check if front became equal to rear. It only means that it was the last element that you deleted. Simply reset the front and rear equal to minus 1. Reset front and rear equal to minus 1 is done. Okay, you continue further. Or like a pick, the pick condition, यहाँ पर वैसे भी हमें next element ढूंढना है. Okay, आपको next element ढूंढना है, कोई बात नहीं. So the next element, I'm simply saying that front plus 1 mod by length. That is nothing but your circular next front वो वाला होगा. So I'm not modifying front, I'm just taking it an index variable, and that index का element मैं check कर रहा हूँ. That's it. And now this became a kind of a circular queue. So do you want to say that अब यहाँ पर memory utilization proper होगा? 100% I want to say that memory utilization proper होगा. Let us just check. Diagram अगर आप लोग visualize कर सकते हो तो visualize कर लो, draw कर सकते हो तो draw कर लो, whichever way. I'm just trying it out. Namrata, peak is nothing but deleting the next element. Peak is nothing but deleting the next element जहां पर हमको front को modify नहीं करना होता. तो हम लोगों ने सीधा क्या किया है, front को circular increment करके जो value आता, front को सर्कुलर इंक्रीमेंट करके जो वैल्यू आता, प्रोबेबली ये वाला वैल्यू आता फ्रंट प्लस 1 मॉड बाय दिस. तो हम लोग उसको फ्रंट को असाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं कि दिस इज माय नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ फ्रंट, एंड इफ दिस इज माय नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ फ्रंट, उस नेक्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट जो भी है दैट एलिमेंट वी आर रिटर्निंग. गॉट इट? इट इज एग्जैक्टली सेम. सिर्फ हम लोग यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहे हैं. ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, प्लीज नोट दैट this line and this line is quite same, but इस लाइन में हम लोग फ्रंट को मॉडिफाई कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पर सिर्फ अगला वाला इंडेक्स ले रहे हैं और उस अगले वाले इंडेक्स में हम लोग सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं. yes, we are only fetching, we are not popping it. That is what the concept of pick was all the time. चलो आप लोग डायग्राम कर रहे हो. 1 10 1 20 1 30 push 40 push 50 push 60. आप लोगों ने डायग्राम बना लिया. 6 का my Q is of 6, 10 20 30 40 50 60. Now can you tell me if I try to push one more, what will happen? 10 20 30 40 50 60, 60 तक push हो गया है. If I try to push one more 70, yes, Q is full. And you go back to the diagram. According to the diagram, I guess this is my current scenario. I hope you agree. अगर आपने अभी डायग्राम बना लिया है तो आई गेस आप लोग यही डायग्राम के ऊपर पहुंचे हो कि फ्रंट अभी भी -1 के ऊपर है, एंड एज यू आर एडिंग द एलिमेंट एवरी टाइम आपका रेयर इंक्रीमेंट हो रहा है एंड यू रीच टू दिस सिनेरियो. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट मी गो अहेड, लेट मी डिलीट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम दिस. नाउ टेल मी, अगर मैं डिलीट करूंगा 3 एलिमेंट डिलीट करूंगा तो कौन से डिलीट होंगे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीट 2. विच वन इज डिलीटेड? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 10. यस, 10 इज आउट. और एक डिलीट 20. yes, 20 is out. एक और डिलीट 30. even 30 is out.
So out of 6, 3 elements are deleted. 3 elements are deleted. मतलब 3 spaces खाली हो गया. Let me go ahead and let me start pushing an element. Now can I push 70? ये चलेगा? Will it work? Yes, it should work. Yes, 70 is added. One more, 80 is added. One more, 90 is added. ये 3 मैंने delete किए थे, 3 मैंने add कर लिया. Should I, if I try to push one more, now will it work? No, this will give me the exception saying that queue is full. And if I'm not mistaken, this is exactly this diagram that you people have reached. Am I correct? 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ पर हम लोग पहुंच गए. And now this is a condition due to which my queue is getting full. So मैं जानबूझ के मैं वही वैल्यूज डाल रहा हूं जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किए है, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट यस थिंग्स आर गोइंग इन सिंक. ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर अलग वैल्यूज वहां पर अलग वैल्यूज, नहीं नहीं. लेट अस गो सिस्टमैटिक वे, लेट अस गो इन डिसिप्लिन्ड वे. ओके, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम. लेट मी गो अहेड, लेट मी गो अहेड. एंड अभी 6 वैल्यूज, एक मिनट, अभी इसके अंदर टोटल 6 वैल्यूज है, 70, 80, 90. इफ आई डिलीट द नेक्स्ट एलिमेंट, व्हाट विल गेट डिलीटेड? इसमें से अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करता हूं तो क्या डिलीट होगा? 40 will be deleted. Okay, let's check. Yes, 40 is out. और एक delete. One more delete. 50 is out. One more delete. 60 is out. One more delete. Please note, rare आपका increment होते 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 end तक पहुंच गया है. Sorry, front increment होते होते end तक पहुंच गया है. Now one more delete. It will go back circular fashion and it will try to delete that. Let's say 70 is out. Okay, next. One more delete. 80 is out. And one more delete. Wait for a minute. अगर हेलो, हैव अ लुक एट दिस. अब आई गेस रेयर आपका यहां पर होगा और ये एलिमेंट्स अभी तक डिलीट हो चुके हैं. ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी गॉन. नाउ व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट, जैसे ही मैं एक और बार रेयर को इंक्रीमेंट करूंगा, और एक बार रेयर को इंक्रीमेंट करूंगा, दिस एलिमेंट, सॉरी माय मिस्टेक, front is over here, front is over here, and all these elements are now deleted. All these elements are already deleted. अगर मैं एक और बार इसको इंक्रीमेंट करूंगा, अगर इंक्रीमेंट करूंगा और ये डिलीट हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? oh but the front and rear, they will become equal. And if they become equal, we have written a piece of code which is saying that reset them to -1, reset them to -1, so that they will go back to the starting position. Let's go back and trying to delete it once again. And yes, 90 is deleted, but 90 is deleted, they are automatically reset to -1. And if I try to delete one more, and now if I try to delete one more, yes, queue is empty, it should show me. I believe the things are going well and you people are understanding it well. Correct? Why don't you copy paste, run it, and check whether it is working well for you. Right? आप लोग उसको चेक करना. तब तक हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. And after 10 minutes break, you have any questions? Let me know. We'll take up. Otherwise, we will talk about priority queue and DQ. Good. So far, you have any questions regarding stack, queue, or linear queue, circular queue? You're welcome. So should I assume that you people are okay with circular queue, linear queue, and all the implementations? It's comfortable? It's good. And now if you are comfortable, now it's time to go one more step ahead. And going one more step ahead, we want to talk about probably what is the DQ implementation. What is DQ? The DQ, आप लोगों ने जावा में क्लास देखा था उस दिन, क्लास का नाम कुछ तो था array DQ. So what is that DQ is? That DQ simply stands for, DQ stands for double ended
queue. A DQ stands for double-ended queue. And why it is called a double-ended queue? Because the values can be added, it can be added or can be deleted from the front end as well as rear end. Values can be added or deleted from the front end as well as rear end. And when you talk about it, like you say double-ended queue. And the most common implementation of double-ended queue is implemented using doubly linked list with head and tail pointer. So why head and tail pointer, you will automatically understand. So if you want to perform the operations, now there are two operations that you can perform. One operation, you can say that push from, let's say that push, let's say at front end, or like a push, let's say back end. Push back, I'm talking about this end, and push front, I'm talking about this end. To push back, can you please tell me, if I want to add a node at the end of the linked list, what will be the time complexity with the current scenario? हमारे पास head pointer भी है, हमारे पास tail pointer भी है. If I'm trying to add one more element, what will be the time complexity? Yes, adding an element at the end, the time complexity will be O of 1. Absolutely correct. What about adding an element at the start? What about adding an element at the start? Oh yes, adding an element at the start, you find that again time complexity will be O1. So यहाँ पर it is addition from both the ends, tail end as well as the head end. It's like there. What about popping the elements? Oh, when it comes to popping the elements, so again there will be two functions. You will be popping from the front end, and you can also pop from the back end, or you say rear end, whatever. So now if you try to delete from the front end, what is the time complexity? Yes, it is still O of 1. Del first का time complexity O of 1. And what is the del last का time complexity? In the doubly linked list, in a doubly linked list, it will be O of 1. अगर आप लोग singly linked list करते हो, it will not really remain O of 1. अगर आप लोग singly linked list के लिए जाओगे, आपको traverse करना पड़ेगा. And that is the reason I said that DQ implementation, the most common technique is that people prefer to go with doubly linked list with head and tail pointer, या फिर doubly circular linked list, so that your time complexity of addition and deletion remains O1. Addition and deletion remains O1, and that is called a double-ended queue. सर ये डबल एंडेड क्यू कहाँ पर यूज होते हैं? These are the application specific queues. So main queue जो होते हैं वो आपका linear queue या circular queue होता है, but this is a special queue, application specific queue. Option is made available. अब आपको कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर यूज करना है, वो आप लोग डिसाइड कर लो. डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन यू कैन चूज दैट कि मुझको डी क्यू यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए. टिपिकली कभी आप लोग अगर इसके अंदर जाते हो, व्हाट आई कैन से दैट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर एलआरयू एल्गोरिथम. सो ऐसे केस में बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कभी कभी स्टार्ट में भी ऐड करना पड़ता है, कभी कभी एंड में भी ऐड करना पड़ता है. सो ऐसे केसेस में डबल एंडेड क्यूज आर एक्चुअली प्रिफर्ड. इवन द मैसेज क्यू जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया था, वहां पर अगर आपका मैसेज हाई प्रायोरिटी का मैसेज है, यू माइट वांट टू ऐड एट द स्टार्ट. अगर लो प्रायोरिटी का मैसेज है, यू माइट वांट टू ऐड इट एट द एंड. तो यहाँ पर मुझको एडिशन दोनों एंड से सपोर्ट चाहिए. एट दैट टाइम पीपल प्रिफर यूजिंग डबल एंडेड क्यू. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल एप्लीकेशंस कि डबल एंडेड क्यू कहाँ पर यूज होते हैं. लेट मी जस्ट यूज इट ओवर हियर. मैं लिखता हूँ. सो एप्लीकेशंस, a best application that I have seen is message queues. Message queue typically in real time operating system. And then in this particular case, आपके जो messages है, the messages add कहाँ पर होंगे? Messages are added in the queue. Messages are added into the queue. So like a message queue, is a queue of messages that is usually created by using a linked list mechanism. Is a queue of a messages that is typically created using a linked list mechanism. So doubly linked list mechanism. The message queue in operating system is made like this. And then how do you add the element? It depends on the priority of messages. If your message is like a normal priority, and if the message
is of like a urgent priority. If I say that this is the head end, and if I say that this is tail end, then you'll find that if the message is kind of a normal message, the normal message is always added at the start. No, sorry, my mistake. If it is a normal message, the normal message is always added at the end. And if it is an urgent message, the urgent message is always added at the beginning. So अब मैं आर्टोस जब पढ़ाता हूँ तो आर्टोस के अंदर हम लोग दो टाइप के मैसेजेस लिखते हैं. एक लिखते हैं क्यू अंडरस्कोर अर्जेंट मैसेज और एक लिखते हैं क्यू अंडरस्कोर नॉर्मल मैसेज. So if it is a normal message, it always goes at the end of the queue, and it is like a normal. If it is a urgent message, it is always prepended, so it is always at the beginning of the queue. I'm just trying to tell you the application. Usually लोग मुझको पूछते रहते हैं सर डी क्यू कहाँ पर यूज होता है. हमने कभी यूज नहीं किया. आपने कभी यूज नहीं किया वो बात अलग है, बट मैंने भी कभी यूज नहीं किया. बट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट आई हैव सीन इनटू द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एग्जांपल मैंने बताया कि वेयर डी क्यू स्पेसिफिकली कैन बी यूज्ड. एंड देन तो इसका इंप्लीमेंटेशन मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ. दैट समथिंग यू कैन डू इट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ के हो चुका है. सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एड फर्स्ट भी आपको आता है, एडलास भी आता है, डेल्फस भी आता है, डेल्लास भी आता है. सो दैट कैन बी टेकन एट एज असाइनमेंट. सिर्फ ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक छोटा सा एक्स्ट्रा बात है. एक्स्ट्रा बात ये है कि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपको यूजिंग हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बनाना है. ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपको हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बनाना है. सो अगेन इट कैन बी टेकन एज अ योर पेपर वर्क करो, खुद से लॉजिक लगाओ. सारे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चार ही लिखने, चार ही फंक्शन लिखने हैं. कौन कौन से? एड फर्स्ट, एड लास्ट, डेल फर्स्ट एंड डेल लास्ट. दीज आर फोर फंक्शंस. आप लोग चाहो तो एमटी का एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिख सकते हो, एंड दैट इज समथिंग यू कैन कॉल इट एज अ डी क्यू, double ended queue. Going ahead, and the last one, we have got some priority queue. What is the priority queue? The priority queue is one where we can say that the elements are added in priority queue. Elements with the highest priority is removed first. So very first and very important thing, you need to understand that priority queue is not a first in first out queue. So this is deviating from its normal behavior. So जब हम लोग यूजुअली क्यू कहते हैं, क्यू को हम लोग हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, प्रायोरिटी क्यू ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू नहीं है. प्रायोरिटी क्यू ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू नहीं है. प्रायोरिटी क्यू आपका कैसा क्यू है? ये कैसा वाला क्यू है? इट इज नॉट अ फर्स्ट इन फर्स्ट, इट इज गोइंग एज पर द प्रायोरिटी. तो सर इंटरनली क्या होता है? इंटरनली elements are stored in sorted manner. I hope you are getting my point. The elements are stored in a sorted manner, and when the elements are stored in a sorted manner, at that time the element with the highest priority can come out first. Element with the highest priority come out first. So how it can be implemented? It can be implemented in a various way. So can be implemented in a variety of ways. Obviously इसकी time complexity भी आप लोग ओवन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है. Can be implemented one of the following ways. Number one way you can follow that using array. और अगर आप इसको यूजिंग एरे कर रहे हो, देन प्लीज यूज इंसर्शन लॉजिक. इंसर्शन लॉजिक जो हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट के वक्त पढ़ा था, आपको याद आया? इंसर्शन लॉजिक, क्योंकि जो जैसे जैसे एवरी टाइम यू आर पुशिंग एलिमेंट, पुट इट एट द राइट पोजीशन, डू नॉट पुट इट एट द एंड. उसकी जगह ढूंढो और उसके हिसाब से उसको पुश करो. बचे हुए सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाओ, बचे हुए सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाओ. दैट इज काइंड ऑफ अ टेक्निक दैट यू कैन यूज इट. सो यूजिंग एरे अगर आप लोग कर रहे हो, use insertion logic. The second possibility is that again you can do it by using linked list also. Using linked list also, to be frank, you need to still follow the logic of like a insertion logic. Every time you are inserting element, you need to find out the appropriate position and then you need to add the element. So जब भी add करोगे, let's say for example elements are, let's say, are something like this, the 5, 9, 6, 2. These are the elements that I want to add it into the queue. तो अगर मैं इसको एज ए लिंक लिस्ट करके बना रहा हूँ, दिस इज व्हाट द एलिमेंट्स टू बी एडेड इनटू द क्यू वन बाय वन, ये मेरी रिक्वायरमेंट है. तो हाउ डू एड द एलिमेंट? ऑब्वियसली यू स्टार्ट योर लिंक लिस्ट विद हेड
ये पहला एलिमेंट ऐड होगा 5, लेट इट बी 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा एलिमेंट ऐड होगा इट विल बी 9, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज टू गो आफ्टर 5। बट व्हेन टाइम कम्स कि मुझको 6 ऐड करना है, ए मोमेंट टाइम कम्स मुझको 6 ऐड करना है, यू नीड टू ऐड 6 इन बिटवीन, इन बिटवीन 5 एंड 9। सो 6 शुड बी एडेड इन बिटवीन 5 एंड 9। अब ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, यू नीड टू ट्रैवर्स द लिस्ट, एंड व्हाइल ट्रैवर्सिंग द लिस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा वेयर यू फाइंड द नंबर ग्रेटर देन दैट, एंड देन यू नीड टू ऐड द एलिमेंट इन बिटवीन। ये काम करने के लिए आप लोग वो 2 पॉइंटर वाला लॉजिक यूज कर सकते हो, टेम्प और ट्रैवल लॉजिक। सो टेम्प और ट्रैवल लॉजिक, एंड देन मोमेंट यू फाइंड दैट यू गेट अ नंबर ग्रेटर देन दैट, आप लोग दोनों के बीच में उस एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू ऐड 2, if you want to add 2, how do I add 2? So 2, I need to simply add it probably at the beginning, and then you will find that the list will be arranged like this, list will be arranged like this। So जब आप लोग ये वाले एलिमेंट्स क्यू में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ये वाले एलिमेंट क्यू में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, on every push you are finding the appropriate position and then you are inserting the element। can you please tell me, अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो, if you are following this technique, then what would be the time complexity of a push? पुश का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? अगर आप लोग ये वाला लॉजिक यूज कर रहे हो तो पुश का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? अब आपको हर बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसका सही जगह ढूंढना पड़ेगा, और बाद में एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली ऑन एन एवरेज इट विल बी ओ ऑफ एन, ऑन एन एवरेज इट विल बी ओ ऑफ एन। बट व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉप इन दिस केस? A pop मतलब क्या करोगे? Every time while you're popping, you have to pop the element which is at the beginning. Oh, that is pretty simple. So this time complexity would be probably O of 1. So that is good. तो सर ये अच्छा है बुरा है? वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है। So एक आपको O1 मिल रहा है, लेकिन एक आपको ON मिल रहा है। There's one more way that can be implemented, priority क्यों implement करने का एक और तरीका। So this is implemented using something called as a heap data structure. Another implementation is using heap data structure. What is heap? अभी मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा, क्योंकि heap समझने के लिए पहले आपको ट्री आना चाहिए। heap is nothing but we say that it is array representation, array representation of binary tree। इट इज array representation of a binary tree। तो जब तक आपको ट्री नहीं आता है तब तक मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं। बट एनी वे यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, pushing time complexity will be O of log n, and even popping time complexity will be O of log n। So can you please tell me, out of this implementation, which implementation is most efficient one? इसमें से कौन सा इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? मैं पूरा इंप्लीमेंट, मैं सिर्फ पुश और सिर्फ पॉप की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम आस्किंग यू कि अब जो मैंने आपको इंप्लीमेंटेशन बताया, एक दो तीन पॉसिबिलिटीज है, पहले और दूसरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम, पहले और दूसरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम, यस यू ऑलवेज फाइंड दैट दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट। वैसे मैं आपको ये बता दूं, इनसाइड इन जावा देयर इज अ रेडीमेड प्रायोरिटी क्यू इज अवेलेबल। डू यू नो दैट? जावा के डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग जाके चेक करते हो, जावा के डॉक्यूमेंटेशन में प्रायोरिटी क्यू, ये प्रायोरिटी क्यू जावा, there's a ready-made documentation available। Yes, let me go to the documentation, take a look at the documentation, and it is trying to tell me something। Can you read this? Hello, it has been written in a documentation। मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू की, मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू की। इट इज अ रेडीमेड क्लास अवेलेबल, एंड इट इज वेरी क्लियरली रिटन देयर। व्हाट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग दैट दिस इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड ओ ऑफ लॉग एन। तो कोई मुझको बताएगा ये इंटरनली क्या यूज कर रहा है? इंटरनली क्या यूज कर रहा है? यस, इट इज इंटरनली यूजिंग द हीप डेटा स्ट्रक्चर। इट इज इंटरनली यूजिंग द हीप डेटा स्ट्रक्चर। दैट इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप लोग अगर आप लोग इसको कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ऑफर एंड पोल एंड लाइक रिमूव, देन these मेथड्स विल हैव दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर वो लोग कंटेंट्स मेथड यूज कर रहे हो, कंटेंट्स मेथड चेक कर रहे हो, सो कंटेंट्स मेथड में जो चेकिंग होता है, दैट चेकिंग इज लीनियर।
ए लीनियर का मतलब क्या? कंटेंट्स मेथड जो चेकिंग होता है, दैट चेकिंग इज लीनियर. लीनियर का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ? Yes, it is O of n time complexity. Don't forget that. It is O of n time complexity. Don't forget that. तो चलो, if you understand that, और by the way ये कोई नया वाला क्लास नहीं है. It is there like a Java 1.5. So काफी पुराना है, काफी पुराना क्लास है. वैसे कल एक गड़बड़ हुआ. कल अगर मैं आपको भी स्टैक क्यू ही पढ़ा रहा था, एंड देन अचानक से कोई तो वो पिछले बैच का एक स्टूडेंट था, उसने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाला, सर ऐसा कोड उसने दिया था, सर ये कोड है और इसका आउटपुट क्या आएगा. एंड दैट कोड वाज लाइक रिगार्डिंग द लाइक प्रायोरिटी क्यू का कोड था. इट वाज लाइक मोस्ट प्रोबब्ली ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जावा एमसीक्यू एग्जाम. तो कुछ तो क्वेश्चन था, तो मैंने उसको रिटर्न में मैसेज दे दिया कि प्लीज गो बैक एंड टेक अ लुक एट द स्लाइड्स. टेक अ लुक एट द स्लाइड्स. स्लाइड के ऊपर मैंने फंक्शन के नाम लिख के दिए हुए हैं. सो आई थॉट दैट ही इज फ्रॉम योर बैच. और फिर सर आज हमारा कोई लेक्चर नहीं था. मेरे को याद आया तो फिर जाके मैंने ढूंढा, अरे ये तो ओल्ड बैच का बच्चा है. मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर मैंने वापस से उसको इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, जस्ट टू से दैट अच्छा दिस इज अवेलेबल एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ लॉग एन. राइट, होता है ऐसे. अब कल गलती से मैंने आपको भी स्टैक और क्यू पढ़ा था, तो मुझको लगा कि आप में से कोई तो क्या कहते हैं उसको, ओवर एक्साइटेड होगा, जाके स्टैक और क्यू के सर ने स्लाइड दे दिया है तो करके देखते हैं करके, एंड देन समवन इज ट्राइंग इट. आई थॉट दैट. बाय द वे, यहाँ पर एक और क्लास जो ऐड करना चाहिए, इट इज प्रायोरिटी क्यू. very 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 important to remember all the time that priority queue is not first in first out queue. Priority queue is not first in first out queue. Please understand that. बाय द वे, उसने जो कोड मुझको भेजा था, मैं सोच रहा हूं मैं आपको करके दिखाऊं. ही वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एमसीक्यू, और फिर वो नीचे बता रहा था कि नीचे 4 ऑप्शन है एंड देन व्हाट विल हैपन, काइंड ऑफ स्टफ. तो चलो हम लोग वही कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर ओन प्रायोरिटी क्यू. वैसे भी हमको हीप नहीं आता है, वैसे भी हमको हीप नहीं आता है, तो जो रेडीमेड है उसी को यूज कर लेते हैं. जब हीप आएगा तब हम लोग, चाहो तो आप लोग हीप से इंप्लीमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो प्रायोरिटी क्यू, मैं यहाँ पर खुद का प्रायोरिटी क्यू नहीं बना रहा हूँ, मैं जावा का प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहा हूँ. इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू. न्यू क्लास, ओके, सनबीम प्रायोरिटी क्यू मेन. ऑल राइट. Next, priority queue, priority. How do I use it? मैं सिर्फ वही चेक कर रहा हूँ. Priority queue. Let us try to add integer. और उसने क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ भेजा था. New priority queue. New priority queue. Okay, good. And then I can try to add the element. यहाँ पर फंक्शन का नाम होता है offer. Offer is to add and poll is to remove. So offer. So let me offer. Let's say let me add. अभी जो मैंने ऐड किया था वही मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ. अभी जो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था, ये क्या वैल्यूज में बता रहा था, मैं भूल गया. वैल्यूज गिवन, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू. यस, 5962. सो द वैल्यू 5, I have added 5. Okay, 962, 962. And the question was that q dot is empty while q is not empty. You are trying to pop one by one q dot poll. यू क्यू डॉट पोल लिखो या क्यू डॉट रिमूव लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली दोनों से आउटपुट वही आने वाला है. द क्वेश्चन वाज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. एमसीक्यू क्वेश्चन वाज दैट, ये कोड दिया था और पूछा गया था व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. कैन यू प्लीज टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस. व्हाइल नॉट एम्प्टी लिखा है, मतलब सारे एलिमेंट डिलीट होने वाले हैं. So output should be 2569. Okay, you are saying so. Let us just check it whether it is 2569. Wow, kitne intelligent बच्चे आप. Okay, so whatever you are saying is absolutely correct. It is getting sort in the same order. It will get deleted. Anyway, so this is nothing but the implementation of a queue that is ready made. और इसकी time complexity जो है ये O of log n है, और इसकी जो time complexity ये भी O of log n है. हम लोग यहाँ पर O of log n time complexity follow कर रहे हैं. Okay, that is good. चलो, any questions you have regarding stacks and queues, you are welcome.
I'm saying any question you have regarding stack and queue, you are welcome. Like good time to ask. No questions? So should we move further? अरे आगे बढ़े क्या? I believe that stack और queue के हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है. मैं सोच रहा हूँ we will talk about some interview questions on stack and queue. I hope you will enjoy that. Right? Some interview questions of stack and queue, we'll talk about it. Someone is asking for Tower of Hanoi. To be frank, Tower of Hanoi is something up just a problem given so that your stack knowledge is clear. Already हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे better problems कर रहे हैं. I don't think that unnecessary we should again go for Tower of Hanoi and waste our time. वैसे भी वापस से stack का knowledge आपको वापस से ट्री में लगने वाला है. In order, pre-order, post-order वापस से आपका होने वाला है. तो एट दैट टाइम यू कैन डू इट. और वैसे टू बी फ्रैंक टॉवर ऑफ एनोई मैंने बचपन में पढ़ा था, उसके बाद में मेरे को भी याद नहीं है. इट इज ऑल अबाउट टू रिकर्सिव कॉल दैट यू आर मेकिंग, दैट्स इट. और वैसे सारे कॉल आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्री में दिखाई देने ही वाले हैं, सो चिंता मत करना. राइट? तो अभी हम लोग आगे जाते हैं एंड विल टॉक अबाउट काइंड ऑफ अ टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस टू बी डिस्कस फॉर दिस. कहां पर गया? हाँ, यस. अब कुछ कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई मे नॉट वेस्ट योर टाइम इन री राइटिंग देम, विल जस्ट डिस्कस. अगेन जिनको इंटरेस्ट है वो लोग प्लीज गो अहेड एंड राइट द, नहीं राइट नहीं, टाइप द कोड एंड चेक. कोड लिखने का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सिर्फ टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ. द फर्स्ट एंड वेरी सिंपल लेवल प्रॉब्लम. ये ऐसे प्रॉब्लम भी आप लोग कोडिंग इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो. एट योर लेवल, एट द फ्रेशर लेवल, दिस प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली सॉल्वेबल. सो माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू रिवर्स array, reverse a string or reverse a linked list. So how you can reverse it using stack? How you can reverse it using stack? So can you please answer quickly? I guess this is a pretty simple one. Let us consider that we have got an array. We have got an array, and array has got some values. Let's say the values are, let's say 1, 2, 3, 4, 5, and I want to reverse it using stack. How do I do it? Reverse it using stack. Can you quickly tell me the logic? स्टैक में से स्टैक यूज करके अगर मुझको इसको रिवर्स करना है, माय क्वेश्चन इज दैट कैन यू प्लीज टेल मी द लॉजिक टू बी रिटन फॉर दिस? Yes, all I need to do is that go ahead, put all the elements into the stack. I put all the elements into the stack one by one, and again pop and again put it one by one. What is the meaning of this? Have a look at this. Please pay attention. It is very simple logic. If not clear, do ask. So पहला element, you just go in order. You just go in order, left to right, left to right. You follow the loop. So एक पहला element निकालो, push it onto the stack. दूसरा element निकालो, push it onto the stack. तीसरा element निकालो, oh रुक, तीसरा element निकालो, push it onto the stack. चौथा element निकालो, push it onto the stack. पांचवा element निकालो, push it onto the stack. Very good. So आपने सब कुछ stack के ऊपर डाल दिया. Step number 1. Step number 2. Again continue further. Pop it from the stack, put it over here. Pop it from the stack, put it over here. Pop it from the stack, put it over here. Pop it from the stack, put it over here. Pop it from the stack, put it over here. That's it. Done. Done. Correct? Sir, logic कुछ है ही नहीं इसके अंदर. मैं भी वही कह रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है. इट इज वेरी सिंपल एंड स्टूपिड काइंड ऑफ कोड. ऑल यू कैन डू इज दैट फॉर I is equal to 0, I is less than length आप लोग लिखना I plus plus. What I need to do? I need to push the elements onto the stack one by one. ARR of I. Go ahead, you push all the elements onto the stack one by one, and then again you continue back. Again you continue back. Again you say for I is equal to 0. For I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. What I need to do? I need to just assign a value to the I, simply saying s dot pop. Yeah, I hope it is clear. So hardly you are writing two loops, hardly you are writing two loops, and you are able to do your job. Is this clear? Can you quickly tell me the time complexity for this? Can you quickly tell me the time complexity for this?
Time complexity of this is probably O of n. Time complexity of this is O of n. Probably the total time complexity, you can say that it is 2n, but since 2 is a constant, since 2 is a constant, that can be, skipped, and again you say that the time complexity is basically O of n. I hope you understand that. It's a pretty simple way we can reverse the array. अब जैसे आप लोग array reverse कर सकते हो, वैसे आप लोग string reverse कर सकते हो, वैसे आप लोग linked list reverse कर सकते हो. तो लॉजिक में मुझको लगता नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है. इट्स प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक. If this is clear, now let us go on like a bit challenging one. Bit challenging problem. It is in front of you. Create two stacks in a single array in an efficient manner. Create two stacks in a single array. Now this may not be a coding round question. This will be probably the interview question. कि जहां पर आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है कि एक ही एरे है और एक एरे के अंदर मुझको दो स्टैक्स बनाने हैं. एंड आई एम सेइंग दैट these two stacks should be created in like more or less efficient manner. So इसको efficiently मतलब मेमोरी efficiency, टाइम efficiency, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ. तो एक ही एरे में दो स्टैक किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकते हैं इन एफिशिएंट वे. कैन यू थिंक ऑफ इट? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स. बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं. सो ऑब्वियसली यू कैन हैव लेट्स से टू टॉप, दैट इज ऑल्सो फाइन. वी कैन टेक टू टॉप, बट वेयर डू यू टेक टू डिफरेंट टॉप्स? In the mid. If you are taking two tops in mid, you are saying that let's say that one top is from here and another top is from here. What you are doing? अगर आपने इसको मिड में ले लिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ये हो जाएगा, यू गेट द हाफ ऑफ द स्टैक फॉर दिस एंड हाफ ऑफ द स्टैक फॉर दिस. सो विल इट वर्क? यस इट विल वर्क, बट इन दैट केस अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपको एक स्टैक में आपको 8 एलिमेंट डालने हैं और दूसरे में 2 एलिमेंट डालने हैं, then this may not be a very suitable, may not be a very efficient. The other way around, what we usually implement, we take one stack over here, one top over here, one top over here, and then for the first stack we can go in like a positive side. For the second stack we can go in like a negative side. The technique that is used over here like this. तो जब इसका पुश करना है, ये पहले स्टैक का पुश करना है तो उसका लॉजिक अलग लगाना पड़ता है. जब दूसरे स्टैक का पुश करना है तो उसका लॉजिक अलग लगाना पड़ता है. पहले स्टैक का जब इनिशियलाइजेशन करना है तो उसका लॉजिक अलग लगाना पड़ता है, इनिट वन. और दूसरे का जब इनिशियलाइजेशन करना है तो उसका लॉजिक अलग लगाना पड़ता है. सो कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट वुड बी योर लॉजिक? फटाफट. इनिशियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट, ए गो अहेड. इनिशियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट, टेल मी. Top is equal to, yes, I can say that for this case the top is equal to -1. Yes, top is equal to -1, I understand. What about second? Initialization of 2. Initialization of 2, yes, the top 2 is equal to the arr dot length. -1 nahi, arr dot length. arr dot length. So I'm keeping it like a last element. लास्ट एलिमेंट के आगे, सो 12. अभी 12 एलिमेंट्स है तो मैं 12 के ऊपर लेके जा रहा हूं. ओके, दैट इज गुड. हाउ डू यू पुश इन अ फर्स्ट? ये पहले में पुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इंक्रीमेंट एंड देन यू नीड टू पुश. अगर आपको पुश करना है तो एक इंक्रीमेंट करना है, देन यू नीड टू पुश. एक इंक्रीमेंट करना है, देन यू नीड टू पुश. आई होप दैट इज गोइंग गुड. So what is the logic over here? Logic simple. Top plus plus, sorry, I'll write top 1. Top 1 plus plus, and then ARR of top 1 is equal to value. ARR of top 1 is equal to value. But what about second वाले stack में? अगर आपको push करना है, second वाले stack में push करना है, then I guess आपको top minus minus करना पड़ेगा, and then you can add the element. Okay, you continue further. आपको इसको minus minus करना पड़ेगा, then you can add the element. आपको इसको minus minus करना पड़ेगा, and then you can add the element. I hope this is pretty clear. So logic goes something like this: top 2 minus minus, and then ARR of top 2 is equal to value. चलो ये भी समझ में आ गया.
व्हाट अबाउट पॉप लॉजिक? पहले वाले का पॉप का लॉजिक कैसे होगा? पहले वाले का पॉप का लॉजिक कैसे होगा? और जो पॉप लॉजिक, well, pop logic is very simple. All I need to do is that minus minus for this. Oh, I understand that. Minus minus for this. So it can simply say top 1 minus minus. Top 1 minus minus. And on the parallel line, what will be the logic for this? Pop 2. Can you please tell me? Top 2 minus minus. Sorry, top 2 minus minus नहीं, top 2 plus plus. Because ये वापिस से इसके तरफ जाएगा. I hope it is clear. अगर आप लोग इसको डिलीट करते हो, if this element is clear deleted, if this element is deleted, this should go on to the next, isn't it? Yes, it should go on to the next. So that is also fine. By the way, the biggest trouble, what is the condition for full? Is full condition. What is condition for is full? So let us just start adding the element. So you can add an element into this, continue further. You can add the element to this, continue further. You can top plus plus, you can add the element to this. अब वैसे आपको वहां से भी ऐड करना है तो आप लोग कर ही सकते हो, नो वन इज स्टॉपिंग यू. ये करने का एडवांटेज है कि आप लोगों को इक्वल इक्वल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग एज मेनी एज यू वांट. एंड नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इन विच केस यू कैन से दैट इट इज फुल? डायग्राम आपको दिख रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है नम्रता. प्लीज टेक अ लुक एट द डायग्राम. Take a look at the diagram, and yes, your diagram is saying that this is simply the top 1 plus 1 is equal to top 2, या फिर top 2 minus top 1 is equal to 1, वो भी चल जाएगा. या फिर top 1 is equal to top 2 minus 1. ये आप कैसे भी फॉर्मूला बिठाओ, वो आपकी मर्जी है. But by the way, you haven't told me what will be the full condition for this. What will be the full condition for this? Yeah, I guess जब पहला वाला फुल हो रहा है तो दूसरा वाला भी फुल हो रहा है ना? हाँ, yes, I'm able to see that even this is also full. So I'm saying that it is exactly same condition will be there for full for both of them. Okay, that is good. Tell me the last thing. Last thing, what about your empty condition? What is your is empty check? What is your is empty check? Is empty check for the first one? Is empty check for the first one? Yes, you simply say that top 1 is equal to minus 1. जो आपका initial condition था वही आपका empty condition रहेगा. And what about is empty condition for the second one? Second one का empty condition again same, top 2 is equal to ARR dot length. I hope this is very clear. जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा हाउ टू इंप्लीमेंट द स्टैक, टू स्टैक्स इन अ सिंगल एरे, इट इज एक्सपेक्टेड ये है, लिसन केयरफुली, एक्सपेक्टेड ये है आपको ये पूरा उसको बताना है. आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि दो टॉप ले लो, दो टॉप ले लो, उसको भी समझ में आता है कि अगर दो स्टैक बनाने तो दो टॉप चाहिए. सो यू आर एक्सपेक्टेड कि आपका इतना आंसर रेडी होना चाहिए. सो यू कैन एक्सप्लेन, अच्छा हम लोग एक टॉप यहाँ पर ले सकते हैं, एक टॉप इधर ले सकते हो, इसको यहाँ से इंक्रीमेंट करके पुश कर सकते हो, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके पुश कर सकते हो. सो डेफिनेटली, एंड देन प्रोबब्ली एट द एंड ही विल डेफिनेटली आस्क यू, एट द एंड डेफिनेटली विल आस्क यू टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर फुल और प्रोबब्ली व्हाट इज द कंडीशन फॉर एम्प्टी. तो आपको उस लेवल तक का प्रिपरेशन आपका होना एक्सप्लेन है, एक्सपेक्टेड है. आई डोंट वरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ. सी, अब एक्सप्लेन करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है. माधुरी एंड नम्रता, प्लीज पे अटेंशन. Don't you think that this is a top 1 and this is top 2? अगर आप लोग इसको इंक्रीमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पर इंक्रीमेंट करते 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 यू विल रीच टू अ पॉइंट, एंड इंक्रीमेंट करते करते यू विल रीच टू अ पॉइंट. यू डू नॉट वांट टू ओवरराइड देम, you do not want to overrate them. So where your top 1 is, a top 1 at this moment, I am able to see that a top 1 is at the index 8, top 2 is at the index 9. So जब मेरे top 1 और top 2 साइड बाय साइड आ रहे हैं, I can say that obviously my stack is full. अब इसको कैसे लिखना है वो आपकी मर्जी है. You may write it something like this: top 1 plus 1 is equal to top 2. 8 plus 1 is equal to 9.
या फिर यू मे राइट इट टॉप 1 is equal to top 2 minus 1, that is also same. Or the third one, you may say top 2 minus top 1 is equal to 1, that is also same. So whichever way you go, all three are one and the same, right? So जहां पर what is important, ये दोनों साइड बाय साइड जब आते हैं तब मैं कह रहा हूं कि ये फुल हो रहा है, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ कोड टाइप नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं कोड आपको लिख के दे रहा हूं। मैं आपको कोड लिख के दे रहा हूं, सिर्फ जिसको इंटरेस्ट है वो लोग जावा में जाके टाइप करके देखो। दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग आई एम लिविंग इट फॉर यू। आई एम नॉट टेलिंग यू लॉजिक, आई एम टेलिंग यू एक्चुअली कोड। हाँ, नाउ दैट इज अ गुड क्वेश्चन। वापिस से ऐसे छुप छुप के क्वेश्चन पूछते लोग। प्रकाश का कुछ क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट मोर देन 2 स्टैक इन अ सिंगल एरे? आंसर इज यस। अगर आप लोग मोर देन 2 स्टैक अगर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अब आपको इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मुझको 3 स्टैक करने हैं, तो मुझको अभी उसको कुछ डिवीजन करके देना पड़ेगा कि क्या कहते हैं इसको, लेट्स से 15 का एरे है, तो पहले 5 इसको, दूसरे 5 इसको, तीसरे 5 इसको, और फिर हर एक को हम लोग इक्वल इक्वल साइज देना पड़ेगा। वहां पर एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई होप प्रशांत यू गॉट माय पॉइंट। वहां पर आप लोगों का फुल यूटिलाइजेशन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग स्टैक बना तो सकते हो, बट एफिशिएंट होगा। जैसे एफिशिएंसी आपको यहां पर मिल रही है कि हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, दैट यूटिलाइजेशन यू मे नॉट एक्सपेक्ट। लीव इट, लेट अस गो अहेड, talk about one more question. One more question. What is one more question? We want to talk about the stack. रुको जरा, this question available. If top one is at 11 and top two as ARR dot length, then stack two, the condition is full or empty. Top one is at 11. रुको जरा, I'm following the question. Top one is at 11. So you're talking about this. Not a problem. Top two is at length. Okay, that is good. And now what is your question? The condition is full or empty. For the top one, it is full condition, and for top two, it is empty as well as full both. So I hope you got the point. For the top one, it is a full, top one it is full, and top two, since ये यहाँ पर है तो ऐसे तो ये empty भी है, और अभी आगे grow होने के लिए इसको जगह ही नहीं है, तो वो full भी है. So in that particular case, the second stack will be considered as empty as well as full both, right? No problem. That is good. Good observation. So let us move further and talk about how we can think of like stack using queue. Again, a typical interview question, just लोगों को परेशान करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, सर ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन, सर वो कंपनी में जाके ऐसे कोडिंग करना पड़ता है क्या? आई रिपीट, कंपनी में जाके ऐसा कोडिंग नहीं करना पड़ता है। तो सर ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? आपकी थिंकिंग एबिलिटीज टेस्ट की जा रही है। एक तो थिंकिंग एबिलिटी और आपकी कोडिंग एबिलिटी, जो आप लोग सोच रहे हो, क्या आप लोग उसको कोड में कन्वर्ट कर पा रहे हो? सो पहली चीज तो क्या आप सोच पा रहे हो, ये पहला क्वेश्चन। और अगर आप लोग सोच पा रहे हो, क्या आप इसको कोड में कन्वर्ट कर पा रहे हो? दैट इज सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, कैन आई क्रिएट अ स्टैक यूजिंग क्यू? पहली चीज तो, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, पहले ये बताओ। हेलो, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? Yes, it is possible. However, you understand that it is stack. एक में always याद रखना, जब हम लोग stack और queue की बात कर रहे हैं, stack और queue की बात कर रहे हैं, we are saying that we want to make it last in first out structure. But last in first out structure, we want to make it using first in first out structure. So हमारे पास queue है, हमारे पास stack है ही नहीं। जयदीप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यू से पॉप करो और स्टैक में पुश करो। मेरे पास स्टैक है ही नहीं, मुझको स्टैक बनाना है। प्रॉब्लम समझो, मुझको स्टैक बनाना है, लेकिन मेरे पास क्यू अवेलेबल है, तो मैं कैसे करूं? ये मेरा क्वेश्चन है। सबको अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूं। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं कि मेरे पास स्टैक नहीं है, मेरे पास स्टैक नहीं है, मुझको स्टैक बनाना है, लेकिन मेरे पास क्यू रेडीमेड अवेलेबल है।
हाँ, अजिंक्य सिंह दैट क्यू का लास्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं मॉडिफाई कर सकते क्यू का लास्ट, क्योंकि एक मिनट, क्यू का बेसिकली रूल क्या है, जो लास्ट में ऐड करो और फ्रंट से डिलीट करो। अब ये मत कहना हम लोग क्यू में जाके लास्ट से डिलीट करेंगे, मैंने डी क्यू नहीं बोला है, मैंने नॉर्मल क्यू बोला है। डी क्यू में से ही आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि डी क्यू में लास्ट में ऐड भी कर सकते हैं, लास्ट में डिलीट भी कर सकते हैं। सो यूजिंग डी क्यू इज वेरी सिंपल, using DQ is very simple. Yes, Namrata, that is correct. Namrata, Himanshu, and like two more people, you can create a stack using two queues. एक क्यू से स्टैक नहीं बन सकता, एक क्यू से स्टैक नहीं बन सकता। हम लोग चाहो तो दो अलग अलग क्यूज बना सकते हैं, और दो अलग अलग क्यूज बना के उससे हम लोग काम कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, वही तो मैं लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन पे अटेंशन, आज मैं कोई नया टॉपिक चालू करने के मूड में नहीं हूं, एक दो छोटे मोटे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उतने लेंगे और बाद में हम लोग वाइंड अप करेंगे, राइट। सो प्लीज पे अटेंशन। बाद में वापस एक बार सी टू इट दैट, जैसे जैसे अपना कोर्स आगे जाएगा तो बाद में ये फ्लो में, सो इवन दो यू से दैट सर हम लोग ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस एट द एंड पढ़ सकते हैं क्या इंटरव्यू के वक्त, टू बी फ्रैंक इट विल बी टू हेवी एट दैट टाइम if you start learning at that time, क्योंकि there can be hundreds of questions, and सबसे बड़ी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि तब आप लोग टेक्नोलॉजी के टच में नहीं रहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग डेटाबेस इंटरव्यू क्वेश्चंस राइट नाउ द ट्रबल दैट विल बी देयर, अभी सर वो डेटाबेस ही याद नहीं आ रहा है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन वो यूज करके फायदा क्या है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो वापस से पहले उसको डेटाबेस को पहले याद करो, फिर जाके उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ो, इट विल बी वेरी टफ एंड यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट। आप सुन लोगे, अच्छा सर बता रहे तो हम लोग सुन रहे हैं, सुनने में क्या जाता है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट दैट अगर मॉड्यूल चल रहा है तो उसके साथ साथ में अगर करोगे तो समझने की चांसेस ज्यादा है, समझने के चांसेस ज्यादा है। एंड में इट कैन बी डिस्कस, और एंड में डिस्कस करने की जरूरत क्या है, यू कैन ऑलवेज गो बैक, यू कैन ओपन अ वीडियो वंस अगेन एंड यू कैन वॉच द वीडियो वंस अगेन, प्रोबब्ली यू विल बी एबल टू रिकॉल इट बेटर, क्योंकि आपने एक बार कम से कम अभी सुना तो है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। अदरवाइज इफ यू सेड दैट, वैसे आइडियली जब डेटा स्ट्रक्चर का मॉड्यूल चलता है तब मुझको आपके साथ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है अलग से, दैट इज नॉट रियली प्लान्ड, बट स्टिल आई एम कवरिंग दैट, सो दैट मुझको पता है डेटा स्ट्रक्चर में ज्यादा हेवी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर कोडिंग है, कोडिंग है, थॉट प्रोसेस है। सो ऑलरेडी आप लोग अगर उस थॉट प्रोसेस में अलाइंड हो तो जल्दी समझ में आने के चांसेस ज्यादा है। एनीवे लेट अस जस्ट गो अहेड एंड टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट ये कौन है, ये एक क्यू है, ये क्यू है। यूजुअली मैं क्यूज हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आए। ये क्यू है, ये क्यू है, और मैं कह रहा हूँ ये मेरे क्यू का, अरे रुको, ये मेरे क्यू का फ्रंट एंड है और ये मेरे क्यू का रेयर एंड है। और वैसे एक क्यू नहीं है, वैसे मेरे पास दो क्यूज है, और मुझको इसको यूज करके क्या करना है। हाँ, डबल एंडेड क्यू से तो आराम से पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप लोग डीक्यू का, ये क्वेश्चन डीक्यू का नहीं है, अगर डीक्यू होता तो आपको और कुछ करना ही नहीं पड़ता। आई गेस आई डिस्कस्ड कि ये क्वेश्चन डीक्यू का नहीं है, डीक्यू के क्वेश्चन के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट दैट। सो डीक्यू इज लाइक वेरी इजी, आप लोग कोई भी एक एंड से डिलीट या ऐड और डिलीट कर लो, वो स्टैक बन ही जाएगा, दैट इज प्रिटी इजी। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल क्यूज, लाइक सर्कुलर क्यू, ये यूज करके मुझको करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलो गो अहेड एंड लेट अस ट्राई टू डू इट। तो मुझको एलिमेंट ऐड करने हैं, ये क्या ऐड करने हैं, 10, 20, 30, 40। कॉमन सेंस है, जब डिलीट होंगे तो क्या डिलीट होना चाहिए, 10, 20, 30, 40, इस ऑर्डर में मुझको एलिमेंट ऐड करने हैं। डिलीट करेंगे तो कैसे डिलीट होने चाहिए। जब डिलीट करेंगे तो डिलीट कैसे होने चाहिए, 10, 20, 30, 40 अगर मैं इस ऑर्डर में ऐड कर रहा हूं तो डिलीट कौन से ऑर्डर में होना चाहिए। प्रसाद, हम लोग स्टैक बना रहे हैं, तो स्टैक बना रहे हैं तो डिलीशन 40, 30, 20, 10 ऐसा होना चाहिए। दैट इज व्हाट ऑल आई एम लुकिंग फॉर, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, हैव अ लुक एट दिस। तो मैं लॉजिक यूज कर रहा हूं, सीड केयरफुली, आई एम सेइंग दैट लेट मी पुट 10 ओवर देयर, सीड केयरफुली, लेट मी पुट 10 ओवर देयर इनटू अ क्यू। अब अगर मुझको 20 ऐड करना है, अगर मुझको 20 ऐड करना है, 20 ऐड करना है, अगर मैं क्यू के एंड में ऐड करता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
अगर मैं इसको क्यू के एंड में ऐड करता हूँ तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि डिलीशन में 10 पहले डिलीट होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जब मुझको 20 ऐड करना है, सी माय लॉजिक, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट क्यू के अंदर, ये जो मेरा मेन क्यू है, इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट है, इसको यहां से निकालो और इसको दूसरे वाले क्यू में डालो, इसको दूसरे वाले क्यू में डालो, एंड वंस यू पुट इट इन द सेकंड क्यू, अब ये जो 20 है इसको यहां पर ऐड करो, इसको यहां पर ऐड करो, और उसके बाद में इसको यहां से निकालो और वापस से यहां पर ऐड कर दो। वेट, आई एम गोइंग अहेड विद द 30 ऐड करना है, तो आई एम सेइंग दैट डू नॉट ऐड, बिफोर यू ऐड 30 you remove 20, you remove 10, you remove 10, then you add 30 into this, you add 30 into this, and then again जो आप लोगों ने यहां से रिमूव किए, again add them into this, again add them into this. डन। रेयर एंड से एडिंग होता है, फ्रंट एंड से डिलीशन होता है। इफ यू ट्राई टू ऐड वन मोर एलिमेंट टू दिस, डू नॉट डिलीट, डू नॉट ऐड डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ दैट फर्स्ट, हाँ फर्स्ट डिलीट फ्रॉम दिस, ए फ्रंट एंड से डिलीट हो रहा है, इसके रेयर एंड से मैंने ऐड कर दिया, इसके फ्रंट से मैंने डिलीट कर दिया, इसके रेयर एंड से मैंने ऐड कर दिया, इसके फ्रंट से मैंने डिलीट कर दिया, इसके रेयर एंड से मैंने ऐड कर दिया। अब मैं कह रहा हूं गो अहेड, इसको 40 यहां पर ऐड कर दो, और उसके बाद में वापस एक बार यहां से निकालो, एडिट ओवर एयर, डिलीट फ्रॉम फ्रंट, सॉरी, डिलीट फ्रॉम फ्रंट, ऐड इनटू द रेयर, डिलीट फ्रॉम फ्रंट, ऐड इनटू द रेयर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जब डिलीशन करने की बारी आएगी अभी पॉपिंग की बारी आएगी, पॉप करते वक्त कुछ मत करो, सीधा चुपचाप से पॉप कर लो। नाउ टेल मी, अगर मैं यहां पर पॉप करता हूं तो क्या पॉप होगा? इफ आई एम फॉलोइंग पॉप ऑपरेशन, क्या पॉप होगा? A pop operation is very simple. It is simply 40 will be popped, and followed by that 30 will be popped, followed by that 20 will be popped, and followed by that 10 will be popped. Yes, I'm getting last in first out. So what I'm saying, as far as pop operation is concerned, the pop operation goes like a regular pop. So जब pop operation will go like a regular pop. लेकिन जो आपका push operation है, ये जो आपका पुश ऑपरेशन है, ये पुश ऑपरेशन ये थोड़ा सा परेशानी वाला ऑपरेशन है। पुश ऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यू टेक अ टेम्पररी क्यू, इन पुश ऑपरेशन यू टेक अ टेम्पररी क्यू, you take a temporary queue, and I'm saying that pop while while my main queue is not empty, while my main queue is not empty, what do? You just add the element tq dot tq dot push, atq dot push and q dot pop. So q में से पॉप करो, एक q में से पॉप करो और टेम्पररी q में ऐड करो, q में से पॉप करो और टेम्पररी q में ऐड करो। एक टेम्पररी q मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो इसको मैं कह रहा हूँ टेम्पररी q, और ये है मेरा मेन q, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से दैट इफ इट इज स्टिल नॉट क्लियर, मैं फिर से एक बार, एक और एलिमेंट ऐड करना है, एक और एलिमेंट ऐड करना है। मैं कह रहा हूँ इस क्यू में से निकालो, यहाँ पर ऐड करो, इस क्यू में से निकालो और यहाँ पर ऐड करो, इस क्यू में से निकालो और यहाँ पर ऐड करो, इस क्यू में से निकालो और यहाँ पर ऐड करो। What all we have done, we have popped from one and then we have added into this. But by the way, that is not completed. That is not completed. Now you continue further. The value to be push, इसको main queue में push कर दो। Value to be push 50. चलो 50 को यहाँ पर लेके जाओ और 50 को यहाँ पर ऐड कर दो। और 50 को ऐड करने के बाद में, 50 को ऐड करने के बाद में वापस से क्या करो? वापस से इस टेम्पररी क्यू से वापस से निकालो और वापस से यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट फिर से एक बार ऐड कर लो। Now that is what all logic that we are trying to write. So the logic will be something like this: while temporary queue is not empty, while temporary queue is not empty, क्या करना है? अब वापिस से q डॉट पुश मेन क्यू में ऐड करना है। कहाँ से? टेम्पररी क्यू से रिमूव करके, ए टेम्पररी क्यू से रिमूव करके। दैट इज व्हाट ऑल यू नीड टू डू, एंड दिस इज नथिंग बट योर लॉजिक फॉर द पुश। एंड लॉजिक ऑफ पॉप रिमेन सेम, दैट इज ओनली q डॉट पॉप, जो आपका मेन क्यू है उससे पॉप करना है। ऑब्वियसली विद दिस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगा, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
probably O of 1 रह जाएगा. तो सर इज इट एफिशिएंट? आई डू नॉट से दैट इट इज एफिशिएंट. सर ये कंपनी में कोड में करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते. ऐसा गंदा कोड कौन करता है? कोई नहीं करता. तो फिर सर क्यों पढ़ा रहे हो? इंटरव्यू क्वेश्चन. एक बात हमेशा याद रखना, स्पेशली जब चीजें एग्जाम में आती है और इंटरव्यू में आती है, अभी तक मेरा बहुत बार ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो यूजुअली काम में नहीं लगता वो यूजुअली इंटरव्यू में और एग्जाम में पूछा जाता है. दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. क्योंकि जो यूजुअली काम में लगता है तो लोग वैसे भी उसको रट लेते हैं. जो यूजुअली काम में लगता है तो लोग वैसे भी उसको रट लेते हैं. सो यू रियली वांट टू सी दैट वेदर दिस पर्सन हैज गॉट थॉट प्रोसेस और एबिलिटी टू थिंक. तो यूजुअली ऐसी सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है. ऐसी सारी चीजें वो इंटरव्यू में पूछी जाती है, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में. राइट. सो इट विल बी देयर. तो नो प्रॉब्लम. आई लीव इट वन होमवर्क फॉर यू पीपल. अभी अभी हम लोगों ने क्या बनाया? अभी हम लोगों ने क्या बनाया? क्रिएट स्टैक यूजिंग क्यू. सो व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ इट? आई लीव इट फॉर योर थॉट प्रोसेस. अपना दिमाग लगा कि इज इट पॉसिबल, कैन वी क्रिएट अ क्यू यूजिंग स्टैक? हिंट में दे रहा हूं, यू हैव टू स्टिल यूज टू स्टैक्स. हिंट मैंने दे दिया. अब मैं आपको रेडीमेड सॉल्यूशन बता दूंगा तो यू विल फाइंड दैट ये सॉल्यूशन आप मेरे से ले लो और बाद में खुद का दिमाग चलाओ. कोड लिखने की जरूरत नहीं है. जितना पेपर वर्क मैंने किया है उतना पेपर वर्क आप लोग ट्राई कर लो. दैट इज स्टिल फाइन. चलो, एक क्वेश्चन है. कौन है भाई क्वेश्चन पूछने वाला? हाँ कुलदीप, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी रीड योर क्वेश्चन. सॉरी टू आस्क यू सर. हाँ ठीक है, सॉरी होने की कोई जरूरत नहीं, डोंट वरी, फील फ्री टू आस्क. इफ वी क्रिएट एड फर्स्ट फंक्शन देन element will automatically pop in last in first out manner, then there will be no requirement of another queue. Yes, that is correct. Kuldeep, whatever you are saying is correct. कि अगर आपने वहां पर एड फर्स्ट का फंक्शन लिख दिया, लेकिन इन दैट केस कुलदीप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, देन इट विल नो मोर रिमेन एज अ क्यू. आई होप यू एग्री. क्यू क्यू कब होता है? जब आप लोग एडिशन एक एंड से कर रहे हो, डिलीशन दूसरे एंड से कर रहे हो. अगर आप लोग उसके अंदर एड फर्स्ट कर रहे हो तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉट यूजिंग क्यू. यू आर नॉट यूजिंग क्यू. यू आर कन्वर्टिंग योर कोड टू बिकम अ स्टैक. Yes, exactly. You are converting a queue to become a stack. So that is always, you can always do the modification of a code. मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग यहाँ पर efficient stack implementation या efficient queue implementation, हम लोग ऐसा कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं. It is an interview question. Can you make a stack using queues? That is the interview question. तो यहाँ पर ये सोचने की बात चल रही है, क्या आपका थॉट प्रोसेस ये चल रहा है क्या? What is expected? The interviewer is expecting that क्या आप लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर ला सकते हो क्या? कैन यू थिंक इन दिस बिट ट्रिकी मैनर? आप ये सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो? ये इसका टेस्टिंग चल रहा है. आप एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो. दैट विल बी एफिशिएंट, नो डाउट ऑन दैट, बट दैट इज नॉट समथिंग आंसर दैट इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर. नम्रता का कुछ क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कोड करके देखने पड़ेंगे या फिर लॉजिक काफी है? टू बी फ्रैंक, जब इंटरव्यू में आता है तो यूजुअली लॉजिक काफी होता है. जब इंटरव्यू में आता है तो यूजुअली लॉजिक काफी हो जाता है. बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, इफ यू आर लर्नर, इफ यू आर लर्निंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जब पढ़ रहे हो तो इसको करके देखो. जब बाद में वापस से जब जब आपका कैंपस का टाइम आएगा, कैंपस के टाइम में वैसे आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग फिर से कोड करके देखो. अगर अभी आपने कोड करके देखा है, अगर अभी आपने कोड करके देखा है तो आपको शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. जब वापस से कैंपस के वक्त एक दिन पहले अगर आपने कोड भी देख लिया या फिर वापस से सिर्फ पेपर वर्क भी कर लिया, सिंस यू हैव रिटन कोड वंस, यू आर एक्चुअली मोर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम. तो एज फार एज इंटरव्यूज आर कंसर्न, इंटरव्यूअर विल नॉट आस्क यू टू कोड, राइट, ओनली लॉजिक. बट वो लॉजिक वहां पर रन टाइम में बिल्ड करने के लिए, अगर आपने कभी जिंदगी में एक आध बार कोड कर लिया होगा, वो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है. कॉन्फिडेंस कम्स विथ योर एफर्ट्स. यू प्लीज अंडरस्टैंड. आई होप यू एग्री विद दिस. चलो, आई गेस इतना काफी है, बहुत हो गया. एंड दिस इज समथिंग आई लेफ्ट यू फॉर यू होमवर्क. हिंट मैंने दे दिया है, यूज टू स्टैक्स एंड यू कैन ऑलवेज डू इट. डू द पेपर वर्क ओनली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो हैड वी डन दैट? यस, वी आर डन विद टुडे. व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो? टू बी फ्रैंक, आइडियली मुझको कल ट्री चालू करना था, लेकिन रुको, प्रॉब्लम ये है, स्टार्टिंग ट्री
एंड कंज्यूमिंग अ होल 4 hours लेक्चर ऑफ ट्री, मैंने अभी तक देखा है यूजुअली लोगों को बाउंसर जाता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक ट्री जिसको नहीं आता है, आप उसको अगर पूरा ट्री पढ़ा दोगे तो वैसे ही फ्लैट हो जाता है। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। आपको याद होगा मैंने जब लिंक लिस्ट चालू किया था, तो मैंने लिंक लिस्ट आधे लेक्चर के आगे लिंक लिस्ट चालू किया था। सो समथिंग सिमिलर फॉर्मूला आई वांट टू अप्लाई टुमारो। तो टुमारो व्हाट आई एम प्लानिंग इज दैट वी विल बिगिन अवर लेक्चर विद द हैशिंग। हैशिंग हैश टेबल अपना बाकी है। यूजुअली हैश टेबल टेक अराउंड 2 hours, so we will spend 2 hours learning hashing. We will learn hash table in a first half. तो अपना वो सर्चिंग मैकेनिज्म जो एक बच गया है, that we will complete it, and after we complete that we will begin with the trees. The rest half lecture we will learn tree, so that after that you get little time, you do the paperwork, and then we can talk about advanced operation on a tree on like a next day. This is something that I have planned. So see to it that कल के lecture के first half में we will talk about hash table. Second half we will talk about the trees. हैश टेबल के लिए जो आपको संदीप सर ने ऑलरेडी हैश मैप पढ़ाया हुआ है, जहां तक मुझको याद है संदीप सर ने ऑलरेडी आपको हैश मैप में इंटरनल्स और ये भी बता दिए होंगे। फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मॉड्यूल मैं फिर से बताऊंगा, आप चिंता मत करना। बट अगर आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ ली है, इफ यू कुड रिव्यू, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेट फॉर यू। कल हम लोग हैश टेबल पढ़ेंगे और बाद में हम लोग ट्री चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच for now. See you again.